we're almost there. Just I live one at but that's another loading just on. Okay. So आज जी लाइभ बन्दिन जिसोले जिसो चाहिँ तना बच्चा टेस्ट गर्न सोफै ओके जी चाहिँ फेसबुक लाइभ बन्द ओके आज जी लाइभ बन्दिन जिसोले सो लिंक छ चाहिँ जिसा चाहिँ नेपाल मण्डल टिभी या त न बिमा आउँदो नेपाल मण्डल टिभी पाखे चाहिँ जी सचित चाहिँ नेपाल जी त चाहिँ लाइभ सोया दिया जी नकिन सोया ओके आ चाहिँ ठाउँ हलिनेवा दबुया जी द क्याउ लस्ताय मिगा निसे सुजु जी चाहिँ हलिङ त मुज्या यु निक्को गुदी अहिले नापाङ्गु बो मिगा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुसालाको चाहिँ कोचाला ज्याजो जुल जिउ चिक्पिङ सक्सी ग्वाली दया चिक्पिङ सक्सी चाहिँ सक्सिन चाहिँ बोतिका दिला या चाहिँ बालकै चाहिँ जिउ कोचाला आ थौ यु निकोगुदी निगुदी जिलिसे चाहिँ नेपाल आतका चाहिँ 50 more than 53 years 54 चाहिँ दुजा त पहा त थन चाहिँ बोरिकाइ दियो जुम मिटिङ है थाहा छ फेसबुक हैन योको चाहिँ सोक्नु बाजी इमेज पिन्छ चाहिँ मिन्दा चाहिँ दिसा चाहिँ खन्दाया चोंदु अले ठाउँ चाहिँ नेपाल झिलिसे मल्ल के सुन्दर जुन झिलिसे चाहिँ थन दि थन ज्याजोले धासा महेश मान्जु न नेपाल जाइदिएको वेक पिन्छ नेवा खेले चाहिँ बाबला ज्यायाना चाहिँ यो कदर्ने चाहिँ जित चाहिँ ल क्या दियो जिसक चाहिँ सियासियो अथे थन चाहिँ नरेश ताम्राका जु नेवा दे दबु पाखे वेकना जिलिसे दि सो ज्याजो सुरजु ढुङ्गा दको सेसन दुने जुयु चाहिँ प्रस्तुति त वो दको सिरेको ढुङ्गा चाहिँ डिस्कसन सेसन नदै उब्लेन सिकिन्छ चाहिँ बालक बोटिका चाहिँ एक्टिभली भन्न चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ राजभाइ जकमिजी जी चाहिँ नेपालमा जाइदिएको अथे आ चाहिँ थो सेसन्स दक्ष नापाङ्गु सेसन सूर्य या त थो सेसन्स सोया न तो ज्याजो चाहिँ सुरु जुल चाहिँ घोषणा यानी ती जी 1 मिनट यु नसुत्यादि त जी नयाँ भाजु सिजन श्रेष्ठ जुया त इनापिया 1 मिनट एको सुभादु संयुक्त जो चाहिँ नतिन टाइड्यु ठा मेगा यो कार्यक्रम तस्का छदा ढाके कोचल एको भामलाओ कार्यपटन प्रस्तुति जुल तस्का बांला त टुसी त कोभिड जिएचौ इलेन भन्सोली छ ठुली याखौ छि अलि नेमके चोपे नेवा राजकीय त के पि छथाय मन छ आयो जाजो यादो छु त तडौ पाग्यो खका वन यो मरि पनि लस्ताय अलि नेवा दबु बिरोसना छिर क्यौ थौ जाजोले आछि तस्का हने बपि यो कोए से नाकै दिल नेपाल नरेश वीर साके जु राजभाइ जाफु मागुटी नेपाल राजभाइ जकमिजु अथाय श्री नेवान ढ्यालोवा मलके सुन्दर जु अथाय डाक्टर महेश मन्जु पि यो एथन जे तकसियो नाला मख फटो मख तर यो जैन जे चुन दिउदु अथाय हने बम डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ जु नापैमपति चाहिँ नाय डब्ल्युएनओ नाय अथाय साहित्यकार जुपी शान्तवीर साके जुपी योको बेल्जियम ने से थिथि देला योको चाहिँ हने बपि के जैन जे चुन दिउदु योको सुहाय नप लस्कुस्दु ठौन झिन्यु कार्यपटट प्रस्तुति जित्युङदु ठौ कलिनरी सम्बन्धी अथाय चाहिँ जितौँ आछि नेवा एक्टिभिजम सम्बन्धी जुल तो यो कार्यपटट ठौ पाइने पिङ सेसन जि फुङ के चोना सोइदि स तस्का जो लगे महत्वपूर्ण ज्याजो न ख नलेज गेन याव लागि न ठुके यो को चीज त छ ठुके सेगे सुगे फु जुने
지금 나브 빙 아우 더 자조지 सकल सित छाक्ल एक मुस्ता छिपिन्द अभिभागन जोजो लपा अले लस्कुस ठौ मटिना पारियो लस्ताइना पेन्टुना अले तने जित्योङ उठ नुड 2021 यो लस्ताइना सकल सित लस्कुस अले पेन्टुना बिउसे ठौ कार्यक्रम सञ्चालन याद जे संयुक्त पाजिद अनुमति बियछना प्लिज गो अहेड सुबह Okay, यो कसो भए नयाँ भए सुनिल सकियो तो हलिन दबुया चाहिँ हलिन के त मुजिया नि दिन ठाउँ ठाउँ चाहिँ भित्र थमा जुमे चाहिँ छ्याउमा थिया 60 चाहिँ भि चाहिँ कोटिकाइपी दिन्छ फेसबुक भिडियो लाइभ माध्यममा चाहिँ वर्ल्ड लेभल अर्गनाइजेसन यो फेसबुक पेजमा हो कि ट्रोल नेपाल मण्डल सेभ नेपाल भ्याली अथवा चाहिँ सुभाष प्रगतिजी यिनीहरू थियो नेपाल भाषा लर्निङ क्लब मेन यको फेसबुक पेज विषय चाहिँ जिता चाहिँ सोधिदियो almost around 80,000-90,000 people from Nepal and all over the world are connected to us through all these different pages. And as I said earlier, more than 7 lakh subscribers from Nepal TV. आज चाहिँ जे विषय नरेश साकेत जी चाहिँ जी अत्यन्त दिखाएका अब यता चाहिँ लाइभको पब्लिकेसन पठाइ चाहिँ गएको जिउ तमुजाय बारे चाहिँ म कि वर्ल्ड अर्गनाइजेसन चिठी जागरे बारे हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ कभरेज जान दिउ चाहिँ दिन्छ सक्सित चाहिँ कसको थाहा चाहिँ मथिना पारिया यो सुभा वो नापाङ्गु सेसन या नापाङ्गु सेसन हेरिटेज बारे ख सम्पदा सेसन या त चियर यान दी त जी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी या प्राध्यापक हनिबामा प्राध्यापक बाजु प्रोफेसर डेभिड एन गेलनर जु या त नापिया Saksita Jodalpa Lasukus Nigugudin ya program त्यसको interesting दुगो प्रस्तुति खण्डु पिंगु वो प्रस्तुति या से जो मुटु म्यूट याना दिसे अले सु न्यासा दासा तो chat box है न्यासा चुआ दिसा अले न्यामा 15 मिनट दई 2 मिनट लियां double je chidong chu suchombi ale dakle na pa no ma lisha dongol chama antarashtriya kanun bongatoma ale to heritage sampada sanskritik sampada ya khele ya sakriya juma lisha ju the floor is yours. Thank you everyone. I'm just having this technical glitch a bit. Okay. So I cannot share the screen, Samitaji. Sita चाहिँ तन बिनी ओके सबै हान्न ट्राई हुन्छ Screen खनेन्डु जुगु Jodolapa, everyone. My name is Lisha. I am an advocate by profession and heritage enthusiast by heart. Today, I'm going to give a short presentation on global recognition of heritage sites and lack of maintaining arena. I will be focusing my presentation on World Heritage Convention and also in Kathmandu Valley. There are lots of international mechanisms, international conventions when we talk about heritage protection and giving global recognition to the heritage sites, but I will be limiting my presentation to the World Heritage Convention.
So when we talk about heritage protection, there seems to have two approaches. One being nationalistic viewpoint, whereby the legislation, guidelines, standards, and local methods that are prescribed by the state come into function in protection of cultural heritage. The state prescribes certain national agencies such as Department of Archaeology, Ministry of Culture. So all these national mechanisms have the responsibility to protect the heritage site. But there is also an international viewpoint which states that the heritage sites are so unique, the heritage sites are so unique that they go beyond the national boundaries, they transcend the national boundaries, and hence become the common concern of humankind, hence become the responsibility of every mankind. If we look at other conventions of similar nature, such as the 1982 United Conventions on Law of Sea, if we talk about the Treaty on Outer Space, so all these kind of conventions also talk about, like in outer space treaty law, it says that the resources that are in outer space are the common concern of humankind. And in United Nations Convention on Law of Sea, it talks about how the resources in the seabed belongs to everybody in the world. As I said earlier, I'll be talking only about the World 1972 Convention concerning protection of world cultural and natural heritage, and on that also I'll be focusing on tangible cultural heritage. There is 2003 Convention of International intangible cultural heritage, but I will not be talking about that because as we already know, Nepal has been unable to enlist any of its so far, Nepal has been unable to enlist any of its intangible cultural heritage in the list of World Heritage of intangible cultural heritage. So talking about how the World Heritage Convention gives global recognition to the heritage sites, there is a list called the World Heritage List, which sets out 10 criteria for any heritage site to meet so that that heritage site will be listed in World Heritage. I will not be talking about all 10 criteria, but overall, it talks about outstanding universal value. Outstanding universal value means cultural and or natural significance, which is so exceptional, which is so unique that it transcends national boundaries, as I talked earlier. And also it becomes common importance for not only this generation, but also for the generations of the future as well. Overall, it talks about three comprehensive aspects that the heritage sites should have, like uniqueness in the sense that it reflects the qualities or the features of that very country. It has certain level of intangible aspects attached to it. For example, like it has some sort of history in that has come into existence, and it is intact in form, that it has not changed its form from past to the present. So in context of Nepal gained global recognition of its heritage sites when it became the member of UNESCO in 1953. And in 1978, it signed the World Heritage Convention. And by 1979, the 7 cultural sites of Nepal were listed as a World Heritage Site. The seven being collectively called as Kathmandu Valley, the 3 the squares of Patan, Kathmandu and Bhaktapur respectively, and Changunaran, Bauddha, Pashupati, Swayambhu. So these all 7 cultural sites, 7 heritage sites were collectively called as World Heritage Site and listed as Kathmandu Valley. Since then, when Nepal got the global recognition, as a World Heritage, it also started to get some sort of technical and financial assistance. Actually, in 1970s, when Hanuman Darbar Square was restored to some level, it was one of the first assistance that we got. And also UNESCO has replied positively to 41 of our technical the assistance requests. So in my opinion, the global recognition gives this opportunity for any country like us to, seek for technical and financial assistance when it gains that recognition. As I said, there is some sort of positive aspects when a heritage site gains global recognition. Mainly,
it is helpful for the economy of country, because until when Nepal was until when the heritage site of Nepal was enlisted, Nepal was sort of mystical to the outside world. And when it was listed in the heritage site, it became exposed to the people of the outer world, and people started to flock in. There were lots of tourists, so the tourism, the revenue from the tourism was very, it kind of boomed. It increased. But with the exposure, the negative aspects also came into existence. For example, the traditional houses within Kathmandu Valley started to, we started to lose the traditional houses, because in the name of modernization, people started to replace these houses with Western modern concrete buildings. And and since 1993, the World Heritage Committee started to notice this, and it started to warn us that if we do not take action, if we do not stop this modernization, then we might be in danger list. And in 1997, the ICOMOS, International Council of Monuments and Sites, the ICOMOS report in 1997 said that the main temples are secure and needs less maintenance, but the traditional settings have rapidly changed, and if we do not take action, we might lose the outstanding universal value that the World Heritage Convention talks about. Eventually, in 2003, we were listed in danger list, and then Nepal started to take it very seriously. It brought integrated management plan with the help of UNESCO Netherlands. The building laws were amended, the buffer zone were demarcated, and the surrounding areas were improved. Also, Ancient Monuments Conservation Manual 2006 came into existence. So Nepal did this kind of efforts at that time. And by 2007, we were able to remove ourselves from the danger list. But very unfortunately, in 2015, again, we had this massive earthquake which severely affected all 7 monumental zones. And at that point, the demolition of traditional houses started to be in a rapid pace, because the traditional houses, which were already weaker, demolished, and people started to rebuild them into very big concrete buildings. And I feel that the government did not intervene at that time. Had the government intervened and said that, okay, if you are rebuilding the house, then at least you can do it in a traditional way. We will give some sort of subsidies, some sort of incentives if you do that. But the government didn't do so. And since 2016, the World Heritage Committee again started to warn us that we have to stop this. If we do not rebuild the heritage sites as soon as possible, we might be in danger list again. And in 2017, the ICOMOS again studied the heritage site and prepared a report called Reactive Monitoring Mission Report. And in the report, it said that the work has not been done in a proper way, or even if some works have been done, the required standards of rebuilding has not been fulfilled. However, in 2017, Nepal also prepared State of Conservation Report, which stated otherwise, which stated that we are doing the work, we are taking the steps. And since then, Nepal has always been lobbying in every World Heritage Committee meeting, saying that we are working and please do not put us in danger list. So it's a cycle every year. In one of the articles, I have also argued, in that I'll go to the conclusion, that I have argued that Nepal should, the Kathmandu Valley especially, Kathmandu Valley should be placed in the World Heritage in danger list, because we tend to think that being in danger list is a matter of shame, whereas it is not. If we are in danger list, it will prioritize our resources, it will garner the international attention. Also, it will make Nepal government a bit more responsible, and like how we overcame in 2003 till 2007, we can still repeat our positive efforts.
So I personally feel that we should be listed in danger list. This might be a bit controversial to some extent, but I personally feel so. And also I feel that for the protection of cultural heritage sites, locals should be on board, locals should be taken in every decisions that matter to them. And the buildings and the rebuilding should be done in such a way that it is quake resistant. Not just put a historic facade in with having a modern core inside. So that should not be done. We should opt for the methods that we have. We should have a detailed research. Also, the Public Procurement Act does not much allow when rebuilding, like there's this tendering process, which does not allow the real heritage, those people who have this knowledge about heritage to be in this process. It's always, there is some kind of politicization, I would dare to say. And also Nepal should take the recommendations of national and international advisory bodies very seriously, because as we know that Nepal doesn't take, like in terms of heritage protection, ICOMOS explicitly said that we should be placed in danger list, but Nepal stated otherwise. So I feel like Nepal should take those recommendations into consideration as well. With this, I would like to conclude my short presentation. I hope I was able to, make you aware about few things in a legal perspective. I would love to hear from you and get the questions. Thank you so much. Zozolapa everyone once again. Thank you very much, Lisa Ju, for keeping to time. Election Tunguli, Subadu. Chiyu Nepal भाषा गुली भाँडा जी एकदमै अचम्म छ Newah Prostituti Ema, Miss Supriya Mananda. We're gonna tama activist nonka. Well, I'm very much hoping she's going to explain to us exactly what is at stake in this question of the Solar Nepal Sambat. Supriya Ju, Chitandila. Yes, I am right here. Okay. So go ahead, the floor is yours. Thank you very much. So I'm going to share my presentation slides. Yep. All right, I can see it on screen. Thank you. Hello everyone, and thank you for attending the session today, which is Pola 13 of the Solar Nepal Sambat Year 1141. I'll summarize some of the discussion around the Solar Nepal Sambat concept and the campaign and address some of the queries. So pushing for official and popular endorsement of the Nepal Sambat has been central to Newah activism. We've been celebrating Newah rallies for 40 years, at least at this point. It's also been 15 years since Nepal Sambat was declared a national Sambat. However, the reality of Nepal Sambat is that it simply has not come into popular use. So how many of us know our birth dates in the Nepal Sambat calendar? Or how many of us know the names of the months in the Nepal Sambat calendar to begin with? Most older Newah reference the Bikram Sambat calendar, while youths tend to reference the Gregorian AD calendar, right? So people may ask, Sirinaka, which Gate of date is that in? Or Yomari Puni is on December 30th of this year. They may say something like that. So the irony is that people are referencing other calendars even when the festivals are based on Nepal Sambat. Due to irregularities in how tithis and months are arranged, it's not feasible to use such a lunar calendar in modern life. There are actual hurdles to practicality that need to be resolved before the calendar can be brought into use. So let me have some context setting over here. What exactly is a calendar? Most calendar systems are very old, and so we end up believing that
calendars are set in stone or there's some arcane knowledge behind them. But these notions of months are moving into a new year. These are just symbolic markers in the passage of time. We do not move into some kind of magical new space with each flip of the calendar. It's simply a framework for us to keep track of time. Cultures around the world have revised their calendar systems as per their needs, and here are a few examples. These are mainly lunar calendar systems that transitioned into or took up solar calendar systems. For example, the Hijri or Islamic calendar is a lunar calendar, but a solar version was introduced in the year 1354 of its era. Similarly, the Bangla calendar introduced a solar version in 1394 of its era, the Saka Sambat in 1879 of its era, and of course, Nepal officially used the lunar Sambat back in the day until it was replaced by the Bikram Sambat in 1958 of the Bikram Sambat era. So the solar Nepal Sambat, as the name suggests, is the solar version of the Nepal Sambat. It has 365 solar days or nilya distributed among 12 months. And there's also the provision of leap years to keep the calendar aligned. So with these features, the solar Nepal Sambat can be readily used in government, business, and daily life. It's meant to exist parallel, side by side, with the lunar Nepal Sambat, where the lunar is for cultural activities, while the solar is for everyday secular use. Now, the solar Nepal Sambat concept stems from a long history of discourse around how to standardize the Nepal Sambat. I'm not going to go into detail across all of these points in the interest of time. But for example, the Newah Samaro Samiti had come up with a concept to resolve some of the issues around recurring or missing tithis using a numeral system. 10 years ago, Shamsundar Rajvanshi had published an article where he stated that Nepal Sambat used to have an earlier version which served the lunar as well as solar dates. And this solar calendar used to have 365 days. So there was some version of a solar Nepal Sambat in historic times as well, possibly. Other individuals such as Pramod Shrestha and Labalal Pradhan have also been advocating and working towards some version of a solar concept of Nepal Sambat as well. And 5 years ago, scholar Bal Gopal Shrestha had suggested that it may be possible to implement Nepal Sambat through a solar calendar. So now I'm going to move on to some of the queries received around the campaign. As stated earlier, the concept of the solar Nepal Sambat did not suddenly appear in a vacuum, but it's the culmination of long-running discourse. So in the same way, the campaign for the solar Nepal Sambat was not an overnight process either. The development of the campaign took place in Nepal Sambat 1140, which is earlier in 2020 AD this year, over a span of around 6 months. We began by reaching out individually to people with a known record of formally publishing their work on this topic, and with their consent, initiated discussion via online correspondence. We also reached out to major Newah organizations, including the Dedabu and Sankhodar Sakwa Pakistan. We've been sharing information about all of this and updates through our Facebook page, as well as the Nepal Sambat Chalabula Puja group. These posts were then also shared via social media pages that had followers in the tens of thousands, which goes to say that the updates for the development of the campaign took place under the public eye. The widely established AD reference to the founding date of the Nepal Sambat is October 20, 879 AD, first identified by Franz Kielhorn in 1888 AD. Our eminent scholars such as Kasinath Tamo, Bal Gopal Shrestha, and the late K.P. Malla have all cited this date as the founding date in their works. And this has been accepted within our community's body of knowledge for 132 years. After the initiation of our Solar Nepal Sambat campaign, various individuals have claimed to recalculate the founding date to be October 23rd or 24th, and that October 20 is incorrect. So what is crucial to understand here is that the AD calendar itself has transitioned
from the Julian calendar to the Gregorian, and it did so in 1582 AD. And since the Nepal Samvat was established before that date, we can safely assume that Kilhorn referenced the Julian AD calendar. Through digital converters, we can check that the Gregorian October 24, 879 maps to Julian October 20, which means the Gregorian October 24, 879 and Julian October 20, 879 are basically the same day. They're the same day. So this actually supports the earlier popularly cited October 20 as being correct. For those saying that October 23rd is the right date, so Julian October 23rd is the Gregorian October 23rd, rather, is the Julian October 19th, right? 1 day ahead. It's possible that the lunar phase changes to Paru in the second half of the day. But even so, the new year would be marked the day that the Tithi coincides with the rising sun. So as an example to understand this year there was some confusion around when to celebrate Maupuza, right? We may remember that. Do we celebrate on November 15 or 16? And there was some discussion because the same Tithi overlaps 2 days. But there was no confusion in anyone's mind which day was supposed to be Nudang. It was November 16 because the sunrise coincides with Tithi on that particular day. So the same concept applies here. Now, we've taken October 20, 2020 AD as the initiation point of the Solar Nepal Samvat simply as a commemoration of October 20 as the founding date accepted in Newah scholarship. That's what has been written so far. People have suggested we revise this date in alignment with the Gregorian. But then the question arises, if so, does it mean that the scholarship of Kashinatamo, Balgobal Shrestha, and KP Malla also be revised? Now, a note on respecting the position of the sun. People tend to assume that the movement of the earth is like something like the hands of the clock moving across the face. At 1 a.m. today, the hands will be in a certain arrangement, and at 1 p.m., 12 hours later, they'll be in the exact same position, right? Again, and it's recurring. But then, so on December 31st this year, whatever position the earth and the sun have, on December 31st next year, will they have the same position again? Not exactly. There is a slippage because the tropical year is slightly longer than the calendar year. So this animated image will help us understand that concept. At the end of 365 days of 1 year, the Earth doesn't arrive back at its previous position, but just slightly short of it. This happens again next year, and the starting point, let's say, moves further, it slips. It keeps moving further each year like this, unless the calendar system has some provision of leap years or something like that every few years to counteract this slippage. Which goes to say that for a certain position of the Earth and the Sun on any given date, there is no guarantee that the same position will be repeated on the anniversary of that date. The date alone doesn't really tell us enough, and the calculations will have to be much more complex than that. So this is in relation to the whole October 24 question. Connected to this is the suggestion that we should anchor the Solar Nepal Samvat to solstices or equinoxes, right? So why don't you start the new year on a solstice? Being a solar calendar, the solstices and equinoxes will naturally fall on certain recurring patterns of dates. It's just that they don't coincide with particular calendar landmarks. Now, there's no rationale really for us to build entirely new cultural practices based on these configurations because we already have a cultural calendar in the form of the Lunar Nepal Samvat. Now, people have also asked, how can we say that the Nepal Samvat is impractical if it's existed for 1,141 years? Like, how can you even say that? What's the definition of practical that we're using here, especially in the context where common people are not able to use it? Just because something has persisted for a long time does not mean that it's practical. Now, putting aside the context that I explained at the beginning of this presentation, even our scholars agree that it's not practical. So on the left is an excerpt from Kashinatamo's blog, where by implication, the Nepal Samvat is not practical for government use, is what he's stating. Similarly, the late KP Malla also stated that the Nepal Samvat was
inconsistent, and unpredictable. People have also asked, why do we have to make it practical, right? If it's managed to survive for so long, what's the need at all? But to say so is to fall into the trap of tokenism. Now, just imagine a musical instrument that's kept inside a glass box. You can definitely appreciate the size of it, the shape, the color, and all those things. But really, it becomes nothing more than a symbolic showpiece. As it is, the Nepal Sambat exists inside a box most of the year, and then one day on Newah, during the rallies, it's taken out. For the vast majority of us, we are in a situation where we take pride in saying, no, oh, we have our own calendar. Yes, we have our own calendar, but we remember it only once a year. I mentioned before that other attempts have also been made to standardize the Nepal Sambat. So why don't we just use those? Right? What's the whole deal with solar Nepal Sambat? Just use those ideas. So the problem here is the Newah Samaro Samiti's concept, as well as Devdas Mandar and Samir Karmachari's proposal for Nepal Sambat dates, are ways to resolve the issue of duplicate and missing tithis. Yes, they can fix that to some extent, but they are still based on the lunar system, and they don't solve the problem of the number of months per year or the issue of anala months. Pawandas Mandar came up with a coding-decoding algorithm to represent tithis in technology. But the thing is, this is just a format to record it. For example, like date, month, year, or month, date, year, some kind of configuration of those things. And it does not resolve any of the issues that the Nepal Sambat presents. So time and again, these various proposals have made bold claims, very bold claims, that their methods are perfectly feasible for government use. But the thing is, this is simply not true. They don't really address the issues in the same way that the concept of the Solar Nepal Sambat does. Supriya, just 2 minutes. So I'll now discuss some of the themes that become visible when we consider some of these responses and contextualize them against wider activism. First off, there has been a reactionary perception of the Solar Nepal Sambat as disruptive to the idea of heritage, and that it just materialized out of nowhere on a whim. However, these perceptions disregard the fact that the Solar Nepal Sambat will exist as a practical calendar side by side with the lunar Nepal Sambat. And they also disregard the fact that there does exist a long-running history of analytical discourse around how to standardize the Nepal Sambat. And steps like this do not disrupt tradition, but rather revitalize it. Our institutions should be taking a leading role in this issue, yet we've mostly seen apathy from them. Not addressing the concerns around the practicality of Nepal Sambat only permeates the tokenism that our community is plagued by. Without steps taken to make Nepal Sambat practical for common people, Nepal Sambat activism remains limited to the symbolic and performative. Some of the commentary dismissing the campaign as something young people cooked up also illuminates views towards the youth, where young people are seen as a volunteer force to be mobilized when necessary, instead of youth as a demographic with agency and their own critical perspectives on society. The discussion also reveals a kind of conscious and unconscious gatekeeping. When people see complex astrological diagrams, they become impressed, regardless of whether they understand or not. We then become dependent on a priestly gatekeeping class. Can you pick up any past calendar of Nepal Sambat and then verify it yourself? You'll have to rely on a jyotish to do that. But then even then, you need to make sure that you've gone to the right jyotish, because there may be differing views. Whereas the Solar Nepal Sambat is a relatively simple idea, and anyone can cross-check based on a few simple formulas. So in many ways, this kind of public discourse that we've seen has been a microcosm of larger issues within the Newah movement. So moving forward, as always, we are open to feedback from the community. We would definitely like to see even more public engagement on this topic. A more detailed discussion into the rationale and the description of the Solar Nepal Sambat have been addressed on our website, as well as our past presentation on the Pasa Puja Guti webinar, which is available online.
So in the interest of time, I will conclude here and encourage the public to visit nepalsamad.org for further information. Thank you and goodbye. Thank you, Subraju, for that exemplary exposition. And we now, without further ado, we move to our next speaker, Pushkar Matamaju Tandila. Jidu Gelner, sir. Okay, thank you. So Pushkar ji, tama pulama patrika dama napanisa anubhav yakuduma. Okay, the floor is now yours, Pushkar ji. Thank you. Do screen share ya. Dokin apa to Satraya Naya Baju Bidwan David Taylor Ju Ali Tomoja Butke Chandipi Zoom Pakhe Facebook Pakhe Switch on DP Sakal City Ju Jolpa Ju screen fundu Fundola. Okay. Jithong Chichon Kuta so Yatinoki to Chigu Tabaya Name Jasungu Otikerman Ka was saying you Newah Chanu so Atiakoton Yanui Chondu. Where Bishele Jithong Chumbazakon Kulito Kuto Yatinodu. Actually to Jinyao Minute Duni to contact one Substar Laimuku, Mumu Conta. Thana Nebu, a little Twitter, so Sala, the BC was to Katan, Yaning Q, Yatino Ka. Tonya Nebuak, Chishan saying, Mumu Kanzakos, Nebuzi, Tabai, Gukutan Suni, Uson Sanagachoni, Tabai Name, or Dane Gukutan Jasondu. Ale to Tabayu Nagari, these who you the garden Kolaki Moku, the Vishelena Sunkola, Ale Jison Chugi, Jita, Sonigale, Ale Sonigale Pino, Titi Sase, Zanjati Bassage, Taito Nanta, 11 Sungudu, you need to call Cha Jasondu. Ali Bishena Nivana Tani Zondu, Vishelena Sunkola, Ale Tochu na Punustap na Pakim Pai, Alime Gukranguti Property Kondai Chondu, Gukrangu Kondai Chondu, Vishelena Kona, Ale Dedune Chigu Pulangunata Punustapani Avninti, Kuta Zudu Kimodu, Zudu Sakati Zondu, Bishele Kona, Ale to Nansan Jiu Tabai Plana, Molikna, Tapunustapna Maude, Vishelena Chikana, Ale. Tukuninti Jima Paul Susukari, Michelin, Sumazation Conte. Looking at Pala to Tabai de Chulega, Tabai decision to Pinimigari, to Bogolic, Etiasic, Samagic, Sanskritic, Dharmic leaders said, this is Chetrate Mashiki Ninti, so national day where Tabai Naka. Bishisana to Tabai and saying on Tunzopi Monte Ubuti. 大因线有不鸟线中的中比蒙对不的那因为把上对都就是आदिवासी समुदाय उबती पहिचान यो छौ आधार न खव आधार न जुनी छुथा युबती ना नेनिमोए मौलिक ना दुख छ अनुभवपि मन्त सुमन्त सुनि गाडी खचिसँग अथे अन्दाजिया भई अथे थो छौ ताको परम्परा दुगु स्थानीय आदिवासी समुदाय नप ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक सपुदु सृजनात्मक सृजना जुगुले थाबाय मौलिक ना दैगु चाहिँ छौ अमूर्त सम्पदा न ख जिसौ थाबाई नाइ त सो नाजको मुक्ति विजो अमूर्त सम्पदा कथन जिसौ समान यामा अथे स्थानीय थाबाई ना स्थानीय जनसमुदाय मौलिक भाषा तै तगु जुगुले वो आदिवासी जनजाति संरक्षण सन्दर्भमा स्थानीय ना टोफीकी मजुगु पक्ष ख छौ कथन भाषिक संरक्षण निम्ति अलिवक पनि पहिचानी संरक्षण सन्दर्भमा छौ टोफीकी मजुगु ख तर गेरा सा तो चाहिँ साइडलाइन कर्नर जचौंदु अले गु कथन तो थाबाई मौलिक ना विस्थापन जौन चौंदु वो छौ आन्तरिक औपनिवेशीकरण न ख
नेपाल चौकोठाउँदा खसको उपनिवेश उपनिवेश लाउ मर्ने औपनिवेशीकरण सिकारजु मर्ने तर आन्तरिक औपनिवेशीकरण छौ संकेत चुखर गारास अनुपति मौलिक थाहा भए यो नाथ हिराउना चोंगु दुकी मरु आठो थाहा भए यो नायो संरचना गेजिरे गाराले तो छौ दैनी नचरे थे स्थानीय भूगोल इतिहास समाज संस्कृति व धर्म थिथि पछियाली जाँसा थाहा भए ना छुइगु चलन ज्याउ चोंगु चौकुरा आधारभूत कुरान ध्याउ खसा थाहा भए ना संज्ञावाचक ना ख तर ठुके सृजना चाहिँ गुकुठाउँ जिरासा विशेषण वो नायुपति समाज पाखे ज्याचोंगुदै अथे ठो थाहा भए नाम सम्बन्धित थाहा भए विविध पक्ष प्रतिनिधित्व याना उकु विशेषता जब याचोंगुदै अनि उकु धार्मिक पक्ष धार्मिक महत्व सुख अनि भौगोलिक विशेषता सुख उकु सांस्कृतिक पक्ष त सुख अरगाडी उक्ति चाहिँ अनि मौलिक ना पाखे जिसन सिकका भई अले ठो स्थानीय थाहा भए ना चाहिँ राजनीतिक सामाजिक प्रशासनिक को भाषिक कारण हैन स्वाभाविक अस्वाभाविक कथा हिलावन चोंगु दु अर्थात प्रतिस्थापित जगवन चोंगु दु ठो चकुचा चर्चा चाहिँ ठुइपटी अध्ययन विषयले या जिसन पुराउपटी खसा ठो टोपोनिमी लगाउपटी खंगो चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरी 1876 पाखे दुठ्याउ खण्डु अयो उल्लेख जचौंदु अले ठो टोपोनिमी अर्थात थाहा पाइयो नाय त चाहिँ भूगोल पुरातत्व भाषा अध्ययन छौ महत्त्वपूर्ण विधाको छ नाले यान्चो हुनुका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र खण्डु थो तर नेपालले चाहिँ उली खण्ड इचौमहरु ठो थाहा पाइयो नाय ते नाय विषयले अध्ययन याउ निम्ति स्पेशलाइज छौ ग्रुप इंग्लिश प्रेस नेम सोसाइटी का 1923 ले गठन रु खण्डु अले छौ उदाहरणका खसा लाटभिया देशे सन् 2006 साले जियोग्राफिकल नेम्स डेटाबेस धागु छौ परियोजना पाखे चाहिँ भौगोलिक नाते मानकीकरण या गुना पनि थाहा पाए ना ऐतिहासिकता मालिउ जन जु खनिदु अले राष्ट्रसंघ न ट्विटर थ्यु मटोइट आत्मसात याना 1960 पाखे सामाजिक व आर्थिक विभाग अन्तर्गत छौ समिति निस्वन तर उके चाहिँ विशेष यो कुल ज्याचा चाहिँ जु खनमडु छौ औपचारिक निर्वाह या उठाउँदाको जुलो हो ज्या डेडुने चाहिँ गुकुठाउँ ज्याउ चौनुले गराबले डेडुने थाहा भए नामे स्पेशलाइज अध्ययन खासै जुल थाहा मछि तर अध्ययन अनुसन्धान क्रमे गुण थायुक्ति विषयले गुण समुदाय युक्ति विषयले अध्ययन याबले चाहिँ अनुयुक्ति सम्बन्धित थाहा भए विश्लेषण याउन अभ्यास जु खण्डु थिथि रिसर्च आर्टिकल त सोल लगाएर छ वो गु थायु रिसर्च याउ ख वो थायुक्ति ना यु बारे न यु पृष्ठभूमि युक्ति विशेषता अयुक्ति बारे उल्लेख याउन छौ चलन खण्डु गरकी डेभिड जुक्ति योको आर्टिकल न थिथि थायुक्ति बारे वर्णन जिस बोनी ख अले जे अनुभव बाजु कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ जु 2044 साले विक्रम सम्वत 2044 साले छौ सफु पिटना दिल स्थान नाम कोष वो म्यान छु चर्चा जु ख विषयले स्थान नाम कोषै छौ अयोपति ग्रन्थ ख आटको प्याउ गुकी छौ थाय बायुक्ति नायुक्ति छौ एकदमै विस्तृत संकलन उके यान्तौदु अले ठय नापाउ ख अले आटको न अयोपति ग्रन्थ प्याउ चौमरु नेन्दु कोठा म्या सरसा जु कोठा येले न येलो युपी स्थान नाम कोष पिक्याउ पुटल ज्या सौंदु गाडे दिख छि डाक्टर प्रोफेसर मरेटा पाखे नेन्द त लस्ताय ख अले छौ नु ट्रेन चाहिँ छोल लगा नेपाल भाषा बना चोपी पासपिन छ ठयुक्ति शोध पत्र देखे त देखेबले चाहिँ स्थान नाम युक्ति विषयले अध्ययन याक्ति ट्रेन चाहिँ खण्डै होइ चौदु आगतकी भरत अर्जुन जु किपुयन थाहा भए ना बारे शोध पत्र सोइदिउदु अथे कविन श्रेष्ठ जु थिमी युक्ति थाहा भए ना बारे शोध पत्र सोइदिउदु तर थासी जु छन् त बिना थाहा भए नाइ त कया केन्द्रित व व्यवस्थित औपचारिक अध्ययन भाषा अथवा अभावे खण्डनी थो थाहा भए युक्ति
ना जको ना युक्ति ना जको खकी जीव अधिकार न खते विषयले छुङो जसवे थाबायु ना विशेषण आदिवासी जनजाति तनाप सम्बन्धित जुले ठो आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी ठो ILO 169 ने छौ धारा चाहिँ ठो विषयले सम्बन्धित खण्डु ठ्याक्कै ठो ILO 169 ने चाहिँ नायु बारे स्पष्ट उल्लेख मौजूद छ तबिनामो गु धारा 2 ख ओके मेंशन एंड आउट रासा मनुंथेको सांस्कृतिक पहिचान प्रथा व परंपरा व संस्था या सम्मान जुइको छ एमिगु सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण अनुमति निम्ति सरकार सम्बन्धित मनुंथेको सहभागिता सहित जयामा गरेर हो आठो थाबाय नाना छौ सांस्कृतिक अधिकार एमिगुटी परंपरा जुगुली के छिने छौ अथे आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र 2007 या धारा 13 चाहिँ स्पेसिफिकली थाबायु नायु बारे मेन्सन एन्ड आउटका ओके त आउटु थगु इतिहास पाए मौखिक परम्परा दर्शन लेख्य प्रणाली व साहित्य पुनः सशक्तिकरण यागु विकास यागु व भावी पुस्ताइत हस्तान्तरण यागु नाप्नाप समुदाय पाए समुदाय वो व्यक्ति थगुए ना निर्धारण यागु व पुनर्स्थापित यागु आदिवासी जनता तेगु अधिकार ख ठुको ठाउँ ठो बडापत्र चाहिँ छुरे घोषणा पत्र चाहिँ छुरे टाउडा छ समुदाय थगुए ना निर्धारण यागु व पुनर्स्थापित यागु आदिवासी जनता तेगु अधिकार ख गाएको ठाउँ सो औपचारिक को ठाउँ है ठो थापाए ना सम्बन्धी अधिकार जनजाति तेके दूर गाडी उक्ति ख डकुमेन्टेड जुडु अथे वो घोषणा पत्र ये धारा 1906 मेउ खञ्चैटौलु आदिवासी जनता तेर प्रभावित एगु कानुनी व प्रशासनिक पहल कार्यान्वयन यान्य राज्य इमिगु स्वतन्त्र पूर्व व सूचित सहमति कार्य नीति इमिगु थगुहे प्रतिनिधिमूलक संस्था माध्यम इपिना सलह व सद्भाव सहित सहकारी यामा ठुकेन झैटल लगाएर छ यदि छुज्या सरकारी छुज्या चाहिँ समुदाय अथवा जनजाति छु प्रभाव लायु खसा इमिगु चाहिँ छौ प्रायर कन्सेन्ट कामा फ्री एन्ड प्रायर कन्सेन्ट कामा गाडी दिखाउ के उल्लेख गर्छौं आठो थाहा पाए ना बुको ठाउँ हसुवादंग परिवर्तन या लहर उइचौं उइट चाहिँ ठो धारा 19 प थे खण्डुका ठो धारा 19 ते योजना वो जाइते छिस प्रतिरोध या फै खण्डु अर्च्या ठोजी मेन्सन एनौ ख आठो थाहा पाए ना गेना हिलाउन सुन छा हिलाउन सुन्ने गासुबले ठुकुपटी चाहिँ पिङुन्याउ कारण त पिङुन्याउ हुने त खण्डु जके नापाला राजनीतिक ह ठो शासकीय परिवर्तन जुल्किन थाहा पाए ना हिलाउने गतिके आधा कि जुल यलै जुल खोपाइ जुल थिथि शासकीय टाइममा चाहिँ अनिउना त चेन्ज जुन चोंडु ये लगा ऐसा ये गु कान्टिबोर्ड जो न अनलिपा काठमाडौँ जो न अथे ये लगी त ललितपुर याङ्गल पाटन याङ्गल कोप्रिङ खोप जुल खोपं भक्तपुर जुल भक्तपुर भाटगाउँ जुल मलाई छोटोको चाहिँ शासकीय परिवर्तन कथाउँ जुबुटी ना हिलाख अलि अथे उपनिवेश यो क्रमेण ना त हिलाउने नेपालले अयोपटी एक्जाम्पल चाहिँ खैमन त गतेकी भारतलाई इन्डिया जुल जब ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित जुल भारत इंडिया जो न अथे भौगोलिक पुनर्संरचना एब्रे न ठो नाथ यु खण्डु आगदेखि ठो छिउटी 7 प्रान्त यु गठन निर्धारण जुल ओइले नेउ प्रान्त वे ना चेन्ज हो न प्रान्त नाप डुलमा खु तर अनुपति प्रचलित ना तेट नै इमसम जो सरकार मान्यतामा विषय वो ना चेन्ज आउ खण्डु गसकी आदा कि नेपाल बन्डल युपटी डोमिनेन्स रुपटी थाइ त नेपाल बन्डल मलाई सेम बागमती प्रदेश सही बिला महा उगो ठाउँ भौगोलिक पुनर्संरचना एब्रे न नाट चेन्ज खण्डु अथे सामाजिक मेउटी कारण ख आप्रवासी त अपो जुब्ले इम्यु डोमिनेन्स लाइभले चाहिँ वो थायु ना चेन्ज हो नि अथे नु बस्ती निर्माण एब्रे नुए ना तेउ चलन्दु अथे धार्मिक विस्तारवाद न मेउ कारण ख धार्मिक विस्तारवाद युक्ति कारण हैन थिथि द्यटे उक्ति ना संस्कृति जिउ अथवा उइट चाहिँ उयुना पुलाउँ चले जुना टोटा
मेउ नामाकरण हो गठिकी या त्यो तो नेट बुलोजीमा चाहिँ नर्डिबी जोन अझ उही त स्वेटकारी एङ्गल कुला बुलोजीमा इ त रटकारी एङ्गल यो कोही दो त्यो लुटमोर अजमा इ त स्वेट पत्रकारी एङ्गल म यो कोही एक्जाम्पल चाहिँ छ लुकी भई अथे मेउ कारण चाहिँ भाषिक ख भाषिकै चाहिँ डकुमेन्ट अपो ना परिवर्तन चाहिँ उच्चारण अपभ्रंश ना जो खण्डु गतिके डक्को नेवाटे उपति ख त चाहिँ खेल जुवनका होला गथे जावला ख चाहिँ जावला खेल जुन मला तिन ख चाहिँ तिन खेल जुन गन ख गन खेल होला वो ख उपति अपभ्रंश जुयाए खेल जुन अथे आजीव मन्द उपति मरु जु अथे यो को एक्जाम्पल सुदु तो तै उनले इलं बि फामो अथे विभाषित उपति बाहुले जीवले न वे कपिने उपति उच्चारण पाइ अलि ना चेन्ज हुने भोटाइती चाहिँ भोटाइती जो हुन हिटी ते इमिसन चेन्ज हामीला अलि संस्कृतिको अर्नी मोहजी नचाइ न यो कुन आन्ता चाहिँ संस्कृति चाहिँ जीवति जामासु चाहिँ नागार्जुन जो हुन अथि अनुवादी मोह अनुवादी आपल्याला यो ठेगा न्यू पुखुरी र दुई पोखरी हामीला होला छौ जात्रा जसौँ का थोला अले 2 मिनट ल्याउन त नि पुष्कजी ओ सरी 2 मिनट जका अले सहजीकरण याचन थो ना चेन्ज याउ जसौँ अले नस्त्रीय संकीर्ण सोच मेउ कारण ख न्यू मिनट गाई खा मोला अले नेवाटे उली चाहिँ छोटो छ नेवाटे स थ्विट एकदम हल्का करहं गइ चौंडु चेतना अभाव खला कि अथे नेवाटे उदासीनता ख कि अले अथे नेवाटे कि चाहिँ ठो नायु महत्व बारे मगामचा अध्ययन मगामचा खण्डु अथे नेवा ना बारे अदिता तेगु दथि अस्पष्टता खण्डु नागटिकी किला गइ त किला घर हमार कार्य नु ट्रेन्ड गइ चौंडु म अथे अदिता तेगु दथि छौ सफुती बनाउको छ तिन ख चाहिँ अनि तीन युलिएन तीन ख रु खर गाडी उपति व्याख्या तौडु म उक्र ठो नाय उपति विषयले गलत व्याख्या याउ केन एना ठो पछि कमजोर जाउन जो खण्डु आठो देशमा पनि यो कोठा से ना पुनर्स्थापित जुपति ट्रेन खण्डु आगत कि अमेरिका छौ खनाउ कस माउन्ट मैकिनले चाहिँ देनाली पुलाउना पुनर्स्थापित जुदु देशै दुनी चाहिँ अयोपति खासै खनमर्नी तर चेतना चाहिँ अपो जसौंडु ठौकुने चर्चा परिषद बोल्न चौंडु अन्तर्क्रिया याउ नेवादे दबु पाखिन नरेशमाकार जुदै दुथै दु कोठा छौ समिति फर्म जुदु थो विषयले चर्चा परिषद जुया चोयुए बालाउ खख आठो पुराउना पुनर्स्थापना यामाउ छार गरा संचिउ छौ अलि न्यूज रोड खठो अलि पहिचान्यु आधार ख स्थानीय लागना प स्थानीय बासिन्दा तगु सपु एकिपा खठो अलि छिउति ठो गौरव विषय वस्तु ख छिगु पहिचान लेंके खसा छौ छिउ आन्दोलन युति छौ मुद्दा थाबायुति मौलिक नाम पुनर्स्थापना यामाउ न खण्डु अलि आ ठो छुकुनिति हिसन छु ज्यात यामा हेन्छु दकैना बाना छौ चुरासा कानुनी उपति कानुनी के व्यवस्था इनाले हिसन छु जे याके फैमको यदि मालवन नगरा सो कानुनी ते हिसन बहिष्कार या उपति ख मेवे जुइ महा तर गु विद्यमान कानुन दु इतना हिसन फलो या हुन माली हेन्छु गतिके स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 4 उपदफा 5 है तो थायु नामाकरण सम्बन्धी व्यवस्था एन्टौडुगा ओके छु दैटौडुगा गाउँ सभा वा नगर सभा यु सिफारिस है गाउँपालिका वा नगरपालिका ना हिलिफैगु व्यवस्था अनि एन्टौडु थो हिलिफैगु व्यवस्था चाहिँ चेन्चल लगारा ना सेंक्यु ज्याजो ज्याजौडुगा तर उही त जिउसँग सकारात्मक कथन छेली फट गरा पुनर्स्थापना याउ ज्यान ठो जिस ठो व्यवस्था त ठो प्रावधान ते छेले फै मला अथे छो नेवा पहिचान आन्दोलन युक्ति छौ अभिन्न मुद्दा कथा जिसन थित न्यानी के माथे छ अलि नेवा नयाँ महत्व बारे विश्लेषण याउ अन्तर्क्रिया याउ अलि जनजागरण हेउ जनचेतना बोटले उ जै त जिस महत्व साथ न्यानी के माथे छ
अहिले स्थानीय मौलिक न्याय सम्मान व निरन्तरता प्रोत्साहन व प्रवर्धन नीति व प्रक्रिया विकास निम्ति पैरवी या माने छौँ अहिले सरकारी नीति कार्यक्रम अभिलेख नक्सा औपचारिक दस्तावेज मौलिक न्याय पुनर्स्थापना या मफुटले चाहिँ ठो अभियान औचित्य दैमुखु अप्रभावकारिता दैमुखु अहिले उक्यु निम्ति चाहिँ स्थानीय निकाय पाखे ठो अधिकार चाहिँ स्थानीय निकाय के दै रुले छिउपटी दके सत्तिगु सरकार यो स्थानीय सरकार ख वेकयुपटी वेकय त गजगचे ना जिस थियो ठो सरकारी नीति कार्यक्रम अभिलेख विशेषण नक्सा चाहिँ जिस मौलिक न्याय पुनर्स्थापित यामा औपटी खण्डु ठो विषयले जिस यो कोही खट लाजु जी यो कोही एक्जाम्पल्स जी के ठाउँ ठन बी मफ्ट सागा चाहिँ EU पावन्दी ना यदि जी ठो विषयले सल्लाह एनुफु जुक्ति इमेल चाहिँ पिमाथिमा @gmail.com ख थ्रु विषयले सु सल्लाह या क्वेशन्स सु द दगारा छ आन खनाय फै अहिले लिपान जी ठो इमेल पाखे सल्लाह या फै यो कोही गुसुबा Citano yakwe suba puskuji chate no tarif no wa chongudu lipa nyason nyu mokonon daila swenu last yo prostudi Mr. Shobit Shakiju Pake Shobit Ji Tandila do ton we got so PhD candidate Tallinn University of Technology le okay Mike Chu Latte Jasa thank you so much, Professor Gellner. It is an immense pleasure to be presenting something on is in a session that is chaired by you. Your work has immensely helped on my research. My topic for today is addressing the key criticisms of Gucci. So since the 2015 Gokha earthquake, it has become increasingly more clear that the model of heritage governance through use of community participation is the right way to go. User committees have been very much successful in restoring multiple heritage monuments, as most of us might be following the news. And it is important to note that this particular framework of community participation in governing heritage structure is something that is very close to the Newah culture. It actually follows the Gucci blueprint itself. And in several of the cases, it is actually the Guccis who are doing the restoration work as well. In some of these cases, they are doing through user committees, registers from among the Gucci members, but then again, it is the Guccis who are doing the actual work. And when it comes to intangible heritage, it is very much even more clear that Guccis are very much important. Majority of the festivals within Kathmandu Valley are being organized by the Guccis. And so there is enough evidence that this particular framework of community participation through the traditional institution actually does work. So even though it is important to try to revitalize Guccis and bring them into being the part of mainstream apparatus for governance, not just within the heritage field, but also for some possible public utility functions and maybe even urban design. This is not happening, and this doesn't look like it'll be happening too soon as well. So what is working against Gucci's? What are the key criticisms that the Gucci institution usually faces? First of all, for many policymakers and advisors who do not have a background in studying Newah culture, dealing with Gucci institution is like entering a dark tunnel where there might be any pitfalls or anything like that. So it is very much difficult to come as an advisor
or to become a lawmaker, and then not have the adequate idea about Gucci and to deal with them. And when you do search for literature on Gucci, depending upon the discipline, it can very much distorting and not that very clear. For example, if you look at the news related to Gucci from anything before 2019, you'll see that most of the focus is on what is called Gucci period, or the victims of the Gucci. These are the people who have their houses in Gucci-owned land, and because the earthquake brought down their houses, they are suffering and are not being able to build or get funds to build their houses because the land is not there. It is belonging to different Guccis. So this aspect of looking from the perspective of the peasant farmers, or through the lens of poverty elevation and land reforms, is something that continues within academic discourses as well. Instead of looking at the Gucci's for being the Newah institution that it is often looked at as being this very exploitative and feudalistic institution where the farmers are being exploited. But this is, of course, because the word Gucci is often used very loosely. Gucci can mean the land tenure system. It can also mean the state agency, the Gucci Sangstan. And if two staff from Gucci Sangstan are caught taking bribes, it is often claimed by someone that the Gucci is corrupt. So this needs to be cleared out. This needs to be ironed out. And what is Gucci should be more clear. From my perspective, the perspective from which I'm doing my research is, of course, that Gucci is the Newah institution of self-governance. But within that as well, it is not always a very rosy picture. Sometimes, more often than not, I would say, Gucci is portrayed as something of arduous obligations for Gucci members. So the Newahs have to take this burden to participate in the different rituals and responsibilities related to Gucci. And because this is so burdensome, they are not able to really go forward as a community, and they are lagging behind. The saying Newah Bigre Bhose is quite popular among several communities, which means that the Newah community is degrading because of the different feastings that is associated with the Guccis. In the screen, you can see a snippet from Mark Leasty's book from 2002, and he presents Gucci as a prestige economy. So for Newahs, it is a prestige to do the duties that are associated with Gucci, which is not always easy, and for that reason they are entangled in this process and not being able to really go forward as a community. When it comes to caste discrimination and gender issues, the criticisms towards Gucci is even more harsh. Catherine Rankin, in her article in 2002 and also her book published in 2004, she sees Gucci as being something that defends caste and gender hierarchy. It marginalizes women. She mentions that Gucci is the surest mechanism for protecting traditional Newah culture against outside influences of modernization. So this idea of looking at Gucci as being something that is contrasting with modernization and not compatible with modernizing is quite a popular view, not just among foreign scholars, but also within the Newah community itself as well. Here is a snippet from Atul Bhattrai's article from 2018, where he quotes Srizu Pradhan, an official at the KMC's Heritage Division. She is, of course, a Newah, and she is quoted as saying, "You can't say traditional way and write accounts on back of
a matchbox. So her argument is that because Gutis are not able to use latest standards in record keeping and not use proper processes to run their own organizations, they are not fit for governing heritage monuments or conducting restoration projects for heritage monuments. But this is certainly not true. In my study, I found that multiple Gutis have used proper methods for keeping their accounts very transparent. They are using technology to their benefit. They have Facebook groups and they post different donations that they have received, all the information on their Facebook pages and Facebook groups. They are using emails and they are using web pages, and they are using chat apps to talk to their Guti members who sometimes are not even in the country, they are outside the country, but still the membership is going on and they can contribute at least to some extent in their Guti through chat and electronic communications. And this is something very remarkable. And if you see the screen, this is from the yearbook published by Osman Bazan Guti in 2016. They have used QR code. And for 2016, QR code is pretty much up to date. That is certainly so. When it comes to caste-related issues, well, we did listen to the presentation by Savitri Shrestha yesterday about the Deola caste group, and discrimination is true. It still goes on within the Newah community, but whether or not this is a Guti-related issue is something debatable. Does Guti really preserve this hierarchy and really causes the discrimination to happen is something I would probably say no, because there are several caste associations that have been actually established just for fighting against discrimination. Professor Tofan yesterday mentioned about how influential the Japu community within Newahs have become. And if you look at the Japu community, they are strong because of their different associations, and Guti is being part of that as well. There has been an effort now to bring all these caste-based associations together as a network so that the issue of caste discrimination can be the thing of the past. And I hope this certainly happens, and it is certainly a very welcome step. When it comes to gender discrimination and gender inclusiveness, yes, Gutis are male member only organizations. It is not true that there is no role of women in Gutis, though. There are important roles for women as well, but their role is often tied with the role of their husband or their families. However, these organizations are sometimes multiple centuries old, and in most cases, they have not really changed how they were functioning. So having said that, whether or not the routines in these historical organizations need to be changed or not is something that needs to be discussed very carefully and per case wise. There are some Gutis where the key task of the Guti is to prepare a meal and send it to the daughters who have been married. So should that Guti have female members? I don't know. Maybe this is something that can be looked at from case to case. Of course, but I remember this presentation from Rasmila Prajapati recently, and she mentioned about how even newer organization and events organized by newer organizations within Newahs still do not have inclusiveness. And I think this is the bigger concern for new organizations or newer Gutis, because most of them also have the namesake Guti. So for these organizations, I think inclusiveness is a must, and this is where we can really make a difference. The role of the government is very important for any kind of progress or change as well. So if we are to bring Gutis back into the mainstream apparatus for heritage governance, I think the government has to have a positive role. But unfortunately for us and for Guti, it has not been so. As we all know from the events from last year,
And this has been the historical trajectory as well. The government has been more interested about the property owned by the Gutis rather than the Gutis themselves. There is this certain element of imperialistic attitude from the government when they say that you are not doing your work properly, so we will have a very authoritative new body that will organize all the tasks for you and do all the things for you. So this is bordering towards neo-colonialism, like what earlier President Pushkar Mathema said. And this is something that we should not accept. And hopefully things can change. And there can be lots of things that can be done differently as well by the government. Professor Gelman always stresses on Guti needing to be an intangible heritage and to be registered as so. And I totally agree with this point as well. But also I stress that the key spirit which the Guti institution is based on, the spirit of community and the spirit of giving, that is very much well and alive within the Newah community. Even recently as well, there have been instances where land has been donated for Buddhist viharas. So if this has continued, and if the local governance shows some interest in working with the Gutis, than not controlling the Gutis, but working with the Gutis, then I think there is a lot of possibility and a lot of potentials there. Of course, Gutis do have problems. It's not that the institution is without any problem, but I think the potentials outweigh the problem. And that is my concluding remark. Thank you. Thank you very much for keeping to time. Now, we did start late, and the program gives us 15 minutes to discuss. So I'm looking at the chat to see whether anybody has specific questions directed to any of the paper givers, and apart from a correction on the naming of Lumare Ojima, which should be where are we? Okay, I've lost the chat point. But anyway, that's a relatively trivial point that you can find in the chat if you wish. Okay, now we do have a question for Lishaju from Bhavesh Pravan. So I hope Lishaju is there. Why is it that only getting recognized as a heritage building would help us get our act in place, as the concept of heritage has been a pretty recent terminology? How did people in our community come together to build their public spaces? Are those kind of practices not there today? If so, why? In other words, when my house is being displaced or our temple is crumbling down, why do we have to depend on international agencies to save it? So that's a very big question. We've been talking about I mean, several of all the other papers have also raised up the politics of cultural heritage. And Lisa Ju, you also coyly remarked that there is some kind of politicization, I would dare to say, you said. So perhaps I could invite you to dare say what politicization is going on and how we should understand this process. Thank you, Bhaveshji, for the question. First of all, I would like to say that what I meant in my presentation as heritage was exclusively, for the heritage site, as mentioned in the World Heritage Convention. What I meant is, of course, we do not need to. I really hope that we didn't have this kind of situation whereby we seek for international assistance at all, because our past, even like Sobitji also said, how Gutis were very prominent, how Gutis played a prominent role in heritage reconstruction, rebuilding, but the situation is not like as in past for now, because the Gutis were nationalized, and it kind of, I am not expert in Gutis, but I feel like it kind of hindered Gutis from, being actively part in heritage reconstruction. So I feel like
I hope we don't have to seek for international agencies to save it. But the importance of being termed as World Heritage is that it brings certain level of international assistance that Nepal as a developing country would not be able to deal with on its own, because we have this example also whereby Basantapur, the Nautale, this 9-story building was left for 2 years without being touched, and once we started getting this Chinese aid, we saw the huge progress. I wish it was not the situation. I wish we had done it by ourselves, but the situation is so that again, I would dare to say that government I feel personally that government is not that much willing in this kind of projects, and even if it is willing, there is some sort of again politicization I feel in the whole process. So yeah, to answer the question, I think I hope that the situation comes when we can do it on our own. Thank you. Thank you very much, Lisa Zhu. Now, as we might have expected, the issue of gender in Gutis has, I'm sure you were expecting this, Shobhiju. So Rashmila Prajapati has written, Gutis not only marginalize women, women are invisible in the Guti system. And Shubha Kayast, question to Shobhit Sakya. Regarding our position on the role of women in Guti, you said their roles are tied to their husband's male member of the family, thus the criticism is invalid. I would like to ask if this is your own analysis as a cisgender Newah man with the privileges you carry, or have you asked to women who are experiencing this firsthand? Oh, Shobhiju, you give your response. To comment from Rasmila Ju, I wouldn't say it is invisible, since I gave an example as well. Well, there is some kind of role for women in some of the Gutis as well, but of course in most they are excluded, and which is a problem, of course. And my point is that it is a problem, but then again, Gutis have not been revised in their processes or in how they function in most of the cases. Some of the organization can be operating in the same manner for 600 years. So there needs to be a conscious approach towards change. Of course, I agree. But where do we start from? That is what needs focus. And where we can start from is within newly established Gutis. Songyukta is here, Songyukta Ju is here, and in Pasapucha Guti UK, you can see now there is very good inclusion of women in the executive committee as well. So it is there in these new organizations that we can take the first steps towards gaining our goal. To the question from Subhakas as you as well, I did not say that the criticism is invalid. Rather, I said that it is not true that women are not involved at all. Some of the roles some of the roles the women have in some of the Gutis are very important as well. For instance, if there is the Acha Guti within Buddhist Vihara, the Naki or the wives of the Azu have an important role as well. So it can be said that this is more of a societal issue which is reflected within the Gutis as well. This is what I see. Of course, I have talked to women as well, and of course, being a Newah myself, I know what goes on within some of the Gutis that I am a member of myself as well. So this is based on all of these things, and certainly my point is not that change is not needed. Rather, my point is that some of the Gutis need to be looked at case-wise. Just that. Okay, I don't think we're going to get agreement on this, but although I think we're actually agreed on the facts about the way Gutis actually operate in practice.
Any other questions? I don't see any. I think one new message. David J, there is one question for Lisa Ji, please. From Is there on the chat box? I've missed it. Sorry. Where is it? Or can I read it out? Okay, you read it out. I can't see it. Go ahead. Okay. Oh, you mean the Bowish? We've had this one already. The Bowish question we've had. The one from me. So. Okay, I'm going to read out anyway. Read it. Go ahead. Yeah, please elaborate in Nepal Bhasha on economic gain from declaring the old heritage site within Nepal, where the sources are used. That's for Lisa. यो पयको सुझाव जी नाचाना है कि ठो इकोनॉमिक गेन रही है छिटा डायरेक्ट फंड वेव शिनाना थो हेरिटेज साइट चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट त्या इंग्लिश जुन का चाहिँ उके चाहिँ थो अटेंशन पिनी चोपी मनोटेटा चाहिँ ठो गयो ठ्याक खनि त थो मिस्ट्री जुनी चाहिँ वो टुरिस्ट यो को वे हिसाब चाहिँ वो टुरिज्म ये खमेन ख चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंग्लिश त्या हरेक स्टेट यो पट्टि मोटिभ चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ वो टुरिज्म जियोले टुरिज्म नयाँ चाहिँ गर्न इकोनोमिक रेभेन्यू कलेक्ट आउट छ हिसाब चाहिँ अझै न स्टेट टेस्ट चाहिँ टेन्टेटिभ लिस्ट यो को छे वो लबी आउ जाडको चाहिँ वो टुरिज्म यो लागि इकोनोमिक गेन यो लागि ख वसिना न नेपाल थेन्या कन्ट्री यो लागि चाहिँ तो छाना इम्पोर्टेन्ट जुइरा छ थिसो चाहिँ थो टेक्निकल असिस्टेन्स न फाइनान्शियल असिस्टेन्स न दयु चाहिँ खण्डु झिसन गुलिन रिक्वेस्ट त्यानुडु आटक युनेस्को ले मला 41 वटा तथ्य चाहिँ झित पोजिटिभै रिप्लाई वोडु $1 million सिनाना आपा झित फाइनान्शियल असिस्टेन्स वोडु अले झिगु थोरी नो रिस्टोरेसन प्रोजेक्ट लेन झित योको कन्ट्रीज देश चाहिँ मद्दत याउन खण्डु एजुली फाइनान्शियली चाहिँ झित फाइदा या दुट हामीलाई मला तर इकोनोमिक गेन त हिसाबमा चाहिँ डाइरेक्ट फन्ड वेस्ट न खो but it's a country you say it's a dayu ale country famous due the hisab state on lobby. I hope I answered the question. Raju. Thank yes, you very thank much. you. Thank you very much. Okay, we have a question about Nepal Sambat from Vijay Bhattacharya. This is threatening to get very technical. So I think Lipawe Pinta Pinigu I Quima Yinkuta Jiswe Kwachekima. I think if you don't mind, Supriyaju, I'll leave you and Vijay to have a kind of private chat about the technicalities of Solar Samvat. This has been a really interesting question. We've got, I mean, I'm really thrilled to see new young scholars coming up and exciting new ideas like the Solar Samvat, which never occurred to me, and I never heard anyone discuss this 35 years ago. So this is really interesting. But also, it's also good to have some of us old people around who remember how things were like in the old days. So I'm very encouraged. Pushkaji's paper. This is not a problem that is confined to Newahs and Nepal. A friend of mine just went hiking on Denatu, which nowadays everybody calls Champadevi. And this has been happening in my own country for many, many years. The Angrizhikaran of old Gaelic Turks names in Ireland, Scotland, and Wales has been going on for many, many years. Of course, it's politically motivated. It has been going on in India, is going on right now. The attempt to erase any remnant of Islamic influence, which of course is impossible to do, but just pushes it underground. But so many places are now being renamed. Urdu Bazaar becomes Hindi Bazaar and stupid things like that. But sometimes it's done by people themselves. Even in my toll in Yele,
The place where I used to live is known to locals as Ilone, but most of you probably have no idea where Ilone is. Ilone is famous to the outside world as Nagbahal. I'm not sure whether the locals would like to get rid of Nagbahal and replace it with Ilone, even though in Stania Basa, kon label Ilone taladai. So, Sokasita Yakwe Suba, Ale Me Pinta, Lolana Biuka. Thank you. Yakosuba, dear Ganazu. Okay. Yakosuba, since I told Napangu session, that's come back as a negative. At say no IPG, say Prostata, Shobit Sakia, Supriya or Lisa Dongol, Bazibinternet, Bazimazibinternet, that's called saying Yakego Suba, Sigunda. Ale Bamala चाहिँ डिस्कसन त खाना बनाउन सुरु जुल तर चाहिँ जिसा आना लिपान थो यादै थो ज्याजो सिरेका थन चाहिँ शोभित साक्के जो चाहिँ मिस्ते भूमिका बारे ख लान्दिबले गुथि दुने बामला चाहिँ अना चाहिँ ख त वदु अना चाहिँ जी छौ लिंक न त युदु भिडियो लिंक वली पास छ गतिखि पास बजे गुथि युके लन्डन चाहिँ लन्डन यु ज्यासना पुच दुने यक्को सोया मिजा सोया मिस्टर चाहिँ यक्को दु मलाई वो चाहिँ वेक न दाइदिला तर थो चाहिँ छगु चाहिँ सामान्य परम्परा मखु तका चाहिँ जी धा जी चाहिँ नापाम नाया जुल पास बजे गुथि युके लन्डन यु थो चाहिँ सामान्य परम्परा मखु तर चाहिँ थो चाहिँ छगु अपवाद कथा चाहिँ का फाइजी छ तर थो अपवाद मखु चाहिँ सामान्य परम्परा जुया वनेमा धयु चाहिँ जिउ पुता जुइमा जिसबले जिसा चाहिँ इभन वुमेन इन टेक्नोलोजी सरी वुमेन इन Newah society अले जेन्डर इश्यूज अझ चाहिँ ज्याजो त न तया पास बजेको थियो लन्डन दुने धैको ठाउँ चाहिँ गजाउ चाहिँ अवेरनेस चाहिँ दिसा हेमा गुथि नियो गुथि ढका चाहिँ गु चाहिँ सबिसके जुन दैदिल नियो गुथि त चाहिँ एटलिस्ट थो चाहिँ सूर्यमा त यो चाहिँ जुन थापु ख आ चाहिँ यको इबकासे next session is about activism, which will be chaired by Joint Secretary of World Newah Organization, Miss Rashmila Prajapati. Rashmila Prajapati जो चाहिँ जिउ निको थना session गु चाहिँ activism ख सक्रियतावाद उकी चाहिँ session chair याना दी जी बैठक चाहिँ थना unmute आया था इनके हजुर हस यो कोइको सुबा संयुक्त जो पास सकलसित थो थौ ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यानचंगु ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स या न्युगुगु दिया न्युकोगु सेशन एक्टिविज्म थुके चाहिँ जम्मा थौ पेमा प्रेजेन्ट खला न्यामा प्रेजेन्टर दु तर पेंगु प्रेजेन्टेसन जुइ वशिबे न्ह चाहिँ बति एक्टिविज्म या बारे ध्यामास्टु बोल द एक्टिविज्म त आजि सँगैना ठिका ख मला ओके डेफिनेशन्स त यो कोइको देफु तर सिम्पली जे ठिके बेले चाहिँ छुन सोशल चेन्ज वा पोलिटिकल चेन्ज लागि जुइगु छु एक्सन्स त वा छु क्याम्पेन या त चाहिँ जिस एक्टिविज्म तका ठिकु छ बाला त मतलब एतना ठिकले अफ ल अले आ थन जुमे आबद्ध जुया चुना दिपि अले अथे to global Newah conference या तो World Newah organization या Facebook page plus television ना अले यो Facebook page on सोया चोपी सकल सीता सका हकना दुनु गला लस्को से या थों या गुथो activism session है जमा जिना चो दयार न न्यामा presenter दु तर पेंगो presentation थुके दक्लेन हपा presentation या नदी खला थों करे Newah खेले चाहिँ योको संघ संस्था त नुनुको संस्था त वगुदु अले ओके छगु बालागु खंदगा दैगु चाहिँ Newah ल्यामा ल्यासे त Newah युवा त चाहिँ थपिसय लिड याना वो संघ संस्था चाहिँ यहाँका चुना दिगुदु अले थौकने योको सचेतता न वगुदु गन छु Newah इश्यू जुलकी चाहिँ वो इश्यू या त न्ह्यने हे त वो इश्यू या त न्ह्यने जके हेउ मको उ त चाहिँ सल्भ या त गेना चाहिँ न्ह्यने वनी उडाइको ठन जेपी योको Newah अभियन्ता त चाहिँ न्ह्यने वइ चंगुदु वो ल्या ख चाहिँ छगु संस्था गु कि बच्चा ताउ इ निसे हे थो Newah खेले खन्नुगुदु सेभ Newah भ्याली रका सेभ नेपा भ्याली रका वो नेपा भ्याली या निम अभियन्ता त्यसमा चाहिँ थगु प्रेजेन्टेसन त इदि अले वया लिपा चाहिँ छगु प्रेजेन्टेसन जिस योको Newah त्यसमा स्यु पृथ्वीनारायण शाह न चाहिँ थन नेपा गा त्याकी ढुंका
नेवा ते तो यो कोहे दमन जुल नाप नाप चाहिँ वो खत यो को ध्या वो मास्किङ याना त जुल जिसँग चाहिँ वो खत मसिल तर लिपा जुबले चाहिँ वो खत दको पिहा वो गुदु अले नेवा ते चाहिँ तस कहे दमन याना नेवा ते त तै त गु बारे चाहिँ थौ छौ प्रेजेन्टेसन न दु विशेषना चाहिँ प्रेजेन्ट साह नेपा नेवा ध्या अले उया लिपा यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेवा त थिति थासे छि थौको नै थेनुगला हलि यो को देशे थेनुगला जस्तै कि आठो ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स न झिन्युगु दे नेवा त वा नेवा गैर नेवा त न एज अ प्रेजेन्ट चिसँग चाहिँ थन वइ चुना अले यो कोही हे देश चुना हलिनियंक गनगन नेवा त सायद अन चिसँग लाइभ न सोइ चुना एजा नेवा नेपा पिने चुना न नेवा एक्टिभिटीज त यहाँका चंगु मध्ये चाहिँ छगु इजरायल देश चाहिँ गोजागु नेवा एक्टिभिटीज त जुइ रेखा न वो बारे प्रेजेन्टेसन दुसा दक्ले लिपादाइगु चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स ए बारे प्रेजेन्टेसन जुइ जि दक्ले नपा थौ यागु थो सेसन ए थनबना वेक पि चाहिँ निमेशा संयुक्त रूपमा प्रेजेन्टेसन यानदि कृपेन्द्र अमात्य व लुमु श्रेष्ठ वेकअपी नेवा एक्टिभिस्ट अले नाप वेकअपी चाहिँ थोइ सेभ नेवा भ्याली नाप आबद्ध दु कृपेन्द्र जी अले लुमु जी चिकपिन त लस्को सेन्चना जुजुलपा Saka Pasapi. Before I start, I would like to thank my teammate for making this template for us. My name is Kripendra Amatya. I will be presenting with my fellow teammate Lumu, also known as Lalima Shrestha, upon Newah movement and a struggle for legitimacy. So let's start with what is legitimacy. Legitimacy is something that is widely accepted to be justified. So it's always our target to be accepted. So let's go about what is Newah. According to Nation Act 2002 and Nepal Bihar Shabdakosh, Newah are indigenous nationality that generally resides in cities. And at present, the cities are suffering because of the government's plans and policies. They're trying to expand roads, and Lumu is also a victim of it. Similarly, there have been social movements, political movements, and economic movements. And as Newah live in cities, it's always been vulnerable to the changes the government have made, such as one language policy by the Panchayat government, and such as the Guti Andolan, Guti issues which have affected us, and road expansion, because of which SME have started. Similarly, in history, political movements have happened, and the words of Dharma Bhakta Mahatma clearly show that Newah have been fighting for the rights of Newah people. Similarly, we have also seen economic movement, such as done by Deepak Tuladhar, such as Anup Singh Swal, such as Pavitra Bhattacharya, and we also see Lorena and Irina Stapit's work as they created Ajis. I would like to pass to my friend Lalima to present her case and story of how she suffered. Please, Lalima, we are waiting. Suvat Kripendadai. Hello, everyone. I will be presenting about my personal experience on road expansion and its affections, and I will be sharing my personal experience on Save Nipah Valley movement. As a victim of the system, I will present myself what was the problem. I will explain why this idea of development was unsustainable and why my legitimization was not a progressive state. So before I start my ideas, I need to identify what are the we need to identify what are the questions we face every day. We face the questions such as the constructed infrastructures are considered illegal, which is not true, and I would like to present myself as an evidence. Why are we being accused of being narrow-minded and trying to start civil war? This point will be explained by Kripendadai. So now I will start my presentation. So people have been creating a rumor about making my house illegally, but in my own case, my house was compensated by the government. But that was meager around 5 lakhs rupees, whereas the reconstruction alone costed more than 20 lakhs rupees, which had legally purchased the land. We had legally purchased the land from the Nepal government, and now they suddenly decided to take it back with the negligible compensation. So the question remains, was it illegal? No. Was it good for the country? No. This part of the story is not discussed. So when my house was getting reconstructed,
Almost all the houses in my area had been reconstructed at the same time, and there was a lot of dust pollution. Plus, it is situated at the main road area, so automatically pollution from the running vehicles, including noise, dust pollution, which leaded my health gradually to a very bad condition. I suffered from pharyngitis time to time, and I continue to suffer from various health problems to this very day. Comparing my surrounding after the road expansion, there are more cars, more pollution, more garbages, more noise pollution, and more problems like scarcity of water. I have this nostalgia of my childhood of no air pollution, no water shortage, where working class could afford land, but now it's very difficult for working class people to even pay the rent here for a flat. While those money which was used to compensate us, used to construct roads, could have been used to develop villages and would have been a win-win scenario. But no, the poor parts of Nepal has remained poor. But still, I would like to go for even further as a livelihood officer to discuss the problems that I have witnessed as a bricklane, as witnessed at bricklanes. The workers who are working there are mostly from the poorer parts of Nepal who migrate to Kathmandu seasonally. So my question to the government is, did these roads infrastructures help this kind of working class community? No. We need to focus on SDGs that can create them jobs and to end poverty and enjoy peace and prosperity. So I was one of the first big team, and no one was there for me, but I didn't want anyone to feel my pain because of various reasons like this. So people like me who had common interests and goals all together started SNV, which is Save Nepal Valley movement. So talking about Save Nepal Valley movement, Save Nepal Valley was born in 2017. People who have common grounds realized and met together campaign named Save Nepal Valley. So then we collected data on unjustified construction projects by central government and conducted campaigns against it. The picture, which is on the top side, is of Khona, and the bottom one is from Sakhu. So there are many places where SNV have conducted campaignings and workshops, and these are the list of some places where the campaignings have been conducted. So we also conducted internet strike as to spread awareness about our dissatisfaction with the government. And the picture which you can see here is one of the viral picture of Save Nepal Valley movement. And the trend of hashtag Save Nepal Valley also started from this internet strike. So we also started heritage conservation at Swayambhu, Yanga, Khoyana, Changunarayan, and Rani Pokhari. The picture which is on the left side is from the Yanga Hiti, and the right side is of Khoyana. And the campaigns which we have started is now spreading further as a domino effect. Now, I would like to pass on this presentation to Kripanadai to continue it. Subha. Thank you, Lalima, for her wonderful presentation. I will be extending her presentation. So I hope I can be visible. So I will be showing some of the strategic framework of what should be done and what has been done. The first step would be to collect data, to collect literatures, cases, reports. Then we have to see of connecting people, actors, such as sending mails, and also to collaborate with other actors, such as with experts, to file cases, lobby, or anything that's necessary. So let me get to the examples. So we have seen two work. One was done by my former classmate Asim Sakya and one of my former teammate Supriya Manandar. So a single picture can speak 1,000 words. So we need to collect such information that can get connected to the people, to the history. And then
we could create an achievement. Similarly, we should avoid plagiarism. We need to credit the artists or the writers who have done such work. This motivates them to do something better. So let me go to another slide. Campaigning as a medium of advocacy. So we have been campaigning in various locations, which has already been explained by Lalima. And we have also made connection to UNESCO by sending them mail. And we have helped in Kokana by mailing to United Nations, ILO C169, ILO International Labour Organization, UN office. So this way we can always pressurize government in various ways. I've also been involved in helping in Haka Abhiyan, who was my senior. So another medium would be to be able to advocate. So from the point I came back to Nepal from my finishing my master's in China, I have been publishing articles. So nearly every year I've been publishing either in national or international outlets. So these are the kinds of collaboration which can achieve greater heights. I would like to remind of some of the ideas of Thomas Paine or Karl Marx. One was from a capitalist country and other was from a communist country, but both have contributed us to make revolutionary changes. So single literature can make vast difference in our lives. We need to learn and we need to share these ideas in various ways. This is the way we can achieve our objective of gaining legitimacy. So now let me go to the question. Are we being narrow-minded? So we have been accused of being racist or shallow. But then the evidence clearly show what we demand is based on International Labour Organization, C169, Convention 169, UN RIP, Nepal's constitution, and many articles in our national law. So when we speak from our legal perspective, which has already been defined by many of our friends, such as Lisha Dongol and Pushkar Mathema, these allow us to keep our position clear. So then another question emerged. Do we want to start a civil war? I would like to coin the ideas of the Newton, as also known as the third law of motion. For every action, there's equal and opposite reaction. We are demanding our rights. We have our grievances, and these grievances have to be heard. If it's not heard, it will lead to conflict. And if our grievances are heard, it does not create any chaos, but it will help and contribute in development. So how is it possible? I'll go with another slide. So we know that the Kathmandu Valley is considered as a single World Heritage Site. And we're trying to acknowledge the Newah knowledge as intangible cultural heritage. So these are our soft power. So what about our hard power? So we can use our heritage to build tourism. We could use our indigenous knowledge to export our handicraft. And about Gutis, our dear friend Shobit already explained about it. It has been a successful economic institution. So when the Panchayat companies were failing, people have tried to save Guti. And through the Guti movement, we have been able to achieve some heights. Similarly, there has been Farsi business, Marwadi business, Jewish business who have contributed in development of their countries. And therefore, being Newah or even having the sense of being Newah is not anti-development, but actually pro-growth. So what about future? What we need to do? So I would like to tell a part of our grievances with our own system that SMV was removed from the Guti movement. And then we again were asked to join Newah Cultural Autonomous Area. So when we have been betrayed by our own members, will our friends support us or will we have the motivation to work more? These are the kind of problems we face every day. We have very weak institutions. We have no carrots and lots of sticks. And then about our carrots, we need to use positive reinforcement, such as giving positions, awards, or any other forms which will motivate people. Similarly, we have to implement sticks, such as suspension or fine. If we cannot create these kind of structures, we will not be able to create our legitimacy and cannot fight our war. Similarly, we need to value our knowledge and academic framework. We need to cite from where we get those information, and we should be able to use it in an appropriate fashion. This way, we could achieve greater height. So finally, I will not be taking a lot of time. I would like to remind people that anything
cannot be done by an outsider. We cannot expect a savior to come and save us. We need to solve our own problems. There will be no one for us. If it is if there is a heritage in my place, and if I'm a recipient of it, I will work to save it. But if it is some other part of the country, then I have no obligation or interest because it doesn't affect my life personally. We are very selfish beings, and we have to understand how this selfishness really works. And if we do not understand how this selfishness works, we will be victimized. So we should not expect some politician to come and save ourselves. We need to have movements which are very strategically planned using the ideas of connecting, collecting, and collaborating. These ideas have to be done very precisely. So I would not like to waste my time and would like to conclude. Thank you. Thank you, Rashmila ji. I would like to conclude within the given time frame. हजुर यको सुबा कृपेन्द्रजु अले लुमुजु एकदम इले शिरेका दिला जिन चिकपिन्दा टाइम रिमाइन्ड न या मुयाको चिकपिसा शिरेका दिला उके लागि यको सुबा खला यको हे इश्यूज त दु नेवा दुनी वन विस्तार सेव नेपा भ्याली व मेमे पिसा न कगना यंकी रका विषय यान छना द क्लेन हने वइ चंगु रहेको जनगणना ख उके नेवा तेगु संख्या चाहिँ ठ्याक्क गुली ख उली हे केन्त चाहिँ छि नेवा त एकदम सजग जुमा जी वन गुब्ले मेबले जी डिस्कसन या मेगुस थो प्रेजेन्टेसन या त जी भाजुरास जोशीजु वेकन नेपाल हे वेक त बनाछना वेकल चाहिँ थौ पृथ्वीनारायण शाह व नेवा नामक विशेष प्रेजेन्टेसन या नदी भाजुरास जोशीजु वेक चाहिँ एकदम रेगुलर आर्टिकल्स त चोयादी वेक साहित्यकार न ख नेपाल भाषा या वेक रिसर्चर न अले वेक सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल भाषा टियु चाहिँ वेक असिस्टेन्ट प्रोफेसर न भाजुरास जोशीजु छित बनाछना प्रेजेन्टेसन या लागि हजुर रास जोशीजु दिला छितनया हजुर सुबह रसुनाजु हजुर जो पावरपोइन्ट को खया जी छिउ प्रेजेन्टेसन या न्य दिसाच कदा है थन सोइ चना दिपि हनि बपि भाजमे जुपि सकले वेकअपिनुको प्रेजेन्टेसन नाप चाहिँ वेकअपि नाप रिलेटेड छुन न्यस त दुसा छिकपिस थन जुमे च्याट बक्स टाइप एन्ड दिसाजु फेसबुक लाइभ न छिकपिस चाहिँ याना दिजी फेसबुक लाइभ न क्वेशन्स त चाहिँ छितै दिजु अले नाप चाहिँ प्रेजेन्टर तेसन झिन्यागो मिनेट दुने सिरेका दिसा झिन्युगो मिनेट न्ह चाहिँ छिकपिन त रिमाइन्ड याकी असुबा थन प्राविधिक गर्दै नक्सिन प्राविधिक गर्दै सो दिया थन चाहिँ निथन चाहिँ जो पावरपोइन्ट किन्दै त्यो उखला ठुला भइसन् न एनीवे जिते फाइल मलुला छु कम्प्युटर थन फाइल चाहिँ नक्सिन त्यो मोटोना चाहिँ थन चाहिँ समस्या होला हजुर कि छित भन्छ इ लगे जुसा मेमा प्रेजेन्टर त ते अले लिपा छित त असा जिला जुजु यान्दिस अठियाला राष्ट्रसिजु हसुबा वेक थन हनि बपि सकले वेक त भतिसा टेक्निकल थन समस्या वगो जिया थ्या लिपा इजरायल भाजु नरेश साके नरेश नेवाजु सरी नरेश नेवाजु या प्रेजेन्टेसन दु जे नरेश जुया त बना वेकल चाहिँ इजरायल अले अनया नेवा नामक विशेष प्रेजेन्टेसन याना दि वेक यो स्लाइड चाहिँ दि थन शेयरिया अले नरेश तो छि देखला हजुर 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 छि सूर्यान दिस छि स्लाइड जि थन तया तैदिस सूर्यान दिस दक्ले नापन चाहिँ थौ याउथो चाहिँ जुन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन पाखन जियो जंगो चाहिँ छु कन्फरेन्स तजिगा हना चना दिउदा थकी व्यवस्थापन नियन दिपि अले थन चाहिँ दिपि सकने हने बपिन्दा जिगो थौ व्यक्तिगत पाखा हो अले राष्ट्रिय नेवा इजरायल पाखन चाहिँ यको सुभान देछ जना जजला बन्न थाहा छना जिन चाहिँ खास त इजरायल या इजरायल या थाची इजरायल अनि नेपामी र जुन शब्द छ खगो छ यो ज्याउँदा खासन चाहिँ चिसन चाहिँ छि जो चाहिँ मल्लकाल तक चाहिँ छिगु नेपाल मण्डल देश अनि छिगु देशवासी भूमिया नामन चाहिँ छिता चाहिँ नेपामी तैगु जो जुने अनन चाहिँ गुली नेपाल देशन नेपाली चाहिँ उपत्यका वेमाला रस चाहिँ पिने पूर्व पाखा पश्चिम पाखा वेमाला रस न अनन चाहिँ जिउ उपत्यका वेमाला चाहिँ नेपाल वनेगु थाउ चलन आनन्द अनि
अथे जुलिन चाहिँ वो नेपाल मण्डल भूमि बासिया नामन चाहिँ चिसन संस्था तकन खोलिया छन् छुए मपा नेपामी अथवा चाहिँ नेपा खल नेपा गुठी नेपा पुच धाइदिया चिसन चाहिँ थरो चाहिँ वे म थेन चोङ थ्वे चाहिँ सिलसिला के चाहिँ जिन चाहिँ थना इजरायल या चाहिँ गु प्रस्तुति के चाहिँ जिन नेपा जाति धाइदिया चाहिँ जि नेवा समुदाय त जिन इंगितिया हुँदा इजरायल अले नेपामी नेपालले इजरायले नेपाल जाति नेपाल जाति नेपामी नेवान दाई सुरु लिसिए अघोषित रूपम पुच मुना मपुजा नुद मोनी नखा अले थिथि सांस्कृतिक नखा चका त हना वइ चुगु खने दोसा नेपाल सम्बत 1130 थम्बले नेपाल जाति विधिवत रूपम मेजु ममिता श्रेष्ठ जुया नेतृत्व नेवा खला इजरायल स्थापना जुगु ख रोजगारी सिलसिला इजरायले सन् 2002-3 लिसिङ नेपाली त धाइदिया चाहिँ फुक्क पूर्व पश्चिम लिसिङ पूर्व मेची लिसिङ पश्चिम महाकाली त के हो चाहिँ नेपाली त्यता इंगितिया हुँदो रहेछ नेपामी रह शब्द जस्ट नेवा त्यता जग्गा चाहिँ इंगितिया हुँदा रोजगारी सिलसिला सन् 2002 लिसिङ 3 लिसिङ नेपाली त धुवा वगु खने दोसा निकयाना सन् 2009 तकया नेपाली त वगु खना अना लिपा नेपाली त दुकागु बन्द जुगु खसा लिपा पाइलट प्रोजेक्ट थाय जीटीजे मार्फत 20% जका नेपाली त इजरायल दुआवगु खने दु इजरायलले थिथि थासे बायाचोना दिपी नेपाल जातीयता छपा छडी याना नेपालिया मौलिक भए नेपाल भाषा नेपाल तजिलजी नेपाल सम्बत नेपाल लिपि नेपाल सम्बन्ध नेपाल कला साहित्य बोलंके उतातुना अले फुक्क नेपाल जाति तेता वैगु सामाजिक राजनीतिक प्राकृतिक घटना आपद वित्तक त मसिक जेंके त अले थथेन्दो मेमेगु थिथि नेपाली जाति तेगु गुरुङ मगर खे राई लिम्बु आदि नपा थिथि जाति त नपा झि नेपाल जाति नपा स्वपुतया ग्वाली व्यापक सामाजिक भाषिक जात राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल एपलेस्ता जुख नेपामी त मुना राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल पलिस्ता जुगु खसा विधिवत कथा मेजु मनु श्रेष्ठ जुयु नकिन जु बोले राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलिया नाम चुलाको गोक वनन नपा चाहिँ जियो राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलिया नाम चाहिँ नेवा खल इजरायल जखल लिपा राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल चिसन्ते होक इजरायलले दुपी नेपामी त मध्ये लगभग 7-8% नेपा जाति त दु इजरायलले दुगु अपुष्ट तथ्याङ्क दोसा उति मध्ये करिब 1% नेपा जाति तेसन जगत थगु माम भए नेपाल भए ला सगु खने दोसा लिपा वया नेपाल भए सेकेम म लाम तका पावना फुक्क नेपाल जाति ते दति जागरण वगु दोसा सेकेगु जन तस्कन जना चंगुदो राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलिया आजु इजरायलले चम्पी फुक्क नेपाल जातीयता नेपाल जातीय सम्पदा भाषा तजिली थातुल कला साहित्य संरक्षण याम तका भावना वेक देश विदेश पलिस्ता जुगु नेवा खल गुटी पुचित नपा स्वपुतय थिथि चेतना मूलक ज्याजो न्याक नेपाली ज्याचंगु भाषिक सम्पदा थातुल अले नेपाल मण्डल राज्य या मासिकया निम्ति ज्याचंगु थिथि आन्दोलन त्या हपाबिया फयाम फची ग्वालियाना हलिन्यंक चम्पी सकनी नेपाल जाति तेगु मंका न्या नेपाल मण्डल नेवा राज्य स्थापना यागो राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल आजु ख राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हलिन्यंक स्वपु तेत आजु तय नेपाल सम्बन्ध 1137 लिसिङ राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल झिगु थो गौरव मले खल वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नापा समन्वय सपुतया वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन या इजरायल कच छैन राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल योजना चंगु दुसा नेपालले नेवा दे दबु नापा क्वाटक सपुतया योजना चंगु दु इजरायलले पलिस्ता जुगु थिथि खल पुचले यनारेन इजरायल नापानङ ग्वाली बैंक याना मंका ज्याजो कथन बिस्का जात्रा मोनी नका चथा पूजा लसता स्टेसो याना थिथि थासे आर्थिक ग्वाली यागुन या ढुङ्गो गुडा नेपाल जातिको तिसा वर्ष बलङ्गेको तातुन नेपाल सम्बत 1137 अन्तर्राष्ट्रिय मिसा वर्ष ढेन्डेमला कासा वर्ल्ड वुमेन्स फेसन कम्पिटिसन 1137 पुअङ्क कोचाका गुडो अथेन्तो नेपाल सम्बत 1140 नेपाल भाषा उठाने आजु तय नेपाल भाषा टिकटक में ढेन्डेमला कासा न सफलतापूर्वक सम्पन्न याना गुड अथेन्तो नेपाल सम्बत एमएमएको खल पुच लगायत
नेपाल सम्बत छेलेगु सम्बन्धे मेमेगु खल पुच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायल तेता छेलेमा तका इनाप याना दुसा आ नेपाल सम्बत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायल नमस्ते नेपाल सामाजिक संस्था नमस्ते रेडियो लगायत थी इजरायले पलिस्ता जो खल पुच तेसन नेपाल सम्बत गैर नेवातेगु संघ संस्था तेन नै नेपाल सम्बत छेलाबुला हेचंगु छिकपिना काने दुबले तय कोले त अथेन्टु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायल सदस्य संगठन जुया राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलको प्रतिनिधित्व जुया बैठक नेपाल भाषा प्रस्तुति तेगु ज्याजो थुसी लिसिङ सुरु जुगु दुसा इजरायली नेवा खले तामाङ खल गुरुङ खल लगायत फुक्कङ खल तेता जातीय खल मरासी राष्ट्रिय समुदायगत खल त्यागु चलन न विकास याउद थाना गु चाहिँ जातीय दया चाहिँ गैर आदिवासी तेसन चाहिँ घिउ संस्था त हित्याउ चलन द सबै जातीय छ जातीय संस्था खोल्या माला रहे यो कोही चाहिँ छिटो चाहिँ हित्याउ गु चलन द एजो चाहिँ थाना चाहिँ गु चाहिँ आदिवासी जनजाति महासँग आबद्ध जो च्यागो संस्था तसन चाहिँ जातीय संस्था मधेसिन चाहिँ जिमिउन राष्ट्र नेवातन छौ राष्ट्र राष्ट्रिय संस्था त्या विकास यनाउ दशा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ थथौए भ्यासन चाहिँ थाना चाहिँ बैठकै चाहिँ नुयाउ चलन विकास जुगु द थुकियाता निरन्तरता विषय भोका पीडित तेता ग्वाली दिलसभा श्रेष्ठ या वृद्धाश्रम याता ग्वाली अथेतुन थिति थासे चिची तांगु ग्वाली याना वैचुंगु दोसा लिपापति नेवा दे डबु केन्द्र नपाङ सपुतया 12 विषय बाढी पीडित ग्वाली पीडित तेता ग्वाली याना गुनन्द अथेन्टु सत्यमोहन जोशी प्रतिष्ठान भवन देकेताना राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल पाखन नेवा दे डबु नपाङ सपुतया नेदो देवा ग्वाली याना गुद अथेन्टु जी महाकवि श्रीदास महाजुया सचिव ने सोदक्यंगु भुनिया लसतया हलिन्यंग चोङ हलिन्यंग चकन साहित्य वाचन ज्याजो जुगुदु दोसा वे ज्याजे लोक कवि भाजु राजभाइ जकमिन सोया दुगु मे राष्ट्रिय नेवा खल इजरायलिया पाखङ नापाङको सांगीतिक सौगात स्वरूप कथा महाकवि श्रीदास मे राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल पाखङ पिथाना गुनन्दु अथेन्टु थोए नुगु द नेपाल सम्बत 1141 या लसतया मु पहा इजरायल निम्ति नेपाली महामहिम राजदूत मेजर डाक्टर अन्जान साकिया मु पहा खे नेपाल सम्बत 1141 नु द अले सुन्ति नख या भिन्तुना कालो बिलो ज्याजो सम्पन्न जुगु दशा थय लसतया इजरायले पलिस्ता जुगु एनआरएन अले राजनीतिक पार्टी खल तेता नेपाल सम्बत छलेबले याता इना बियासे ज्ञापन पो बियागु ज्याजोनन्द र ओकियाता चाहिँ वेक पिसन चाहिँ पोजिटिभ रूपमा काय छला बिलाना हाया चंगुदु थखा जिन थनानन कने थो चिगु इनाबियाता अनुसरण यासे आ इजरायले पलिस्ता जुगु सामाजिक खल पुच तेसन नेपाल सम्बत छला बिला याना हगुदो अथेन्टो आ लिपापति राजनीतिक कथन नेपाल जाति न्य जय म त्यागो आजु तया नेवा पहिचान नेवा राष्ट्रिय अभियान ताका राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल न समन्वय पुचे चोना ज्याजो याना वही चंगुद नेपाली खगो पूर्व मेची लिसिम पश्चिम महाकाली तक चोम्पी आयागु नेपालिया सीमाना चोम्पिता इंगित यानागु दोसा नेपामी नेपाल जाति नेवा मल्लकालीन नेपाल मण्डल चोम्पी अले ठीठी कारण देन्यंक व विदेश तक विस्थापित जुपी नेपाल भए मातृभए पुर्खौली भए तया नेवा तेगो तजिलजी नेपाल भाषा थगु गाला कैपी मल्लकालीन नेपाल दे नेपाल मण्डल बासी तेता पुर्खौली मौलिक नाङ इंगित याना जे नेपामी नेपाल जाति नाम थना तयाउख गथे कि जे चाहिँ खस जी नेवा भाषण जी नेपाल भाषण त्याबले खे भए त्याउजी खे भए ठ्याक्कै चाहिँ नेपाली भाषण चाहिँ ट्रान्सलेट ल्याबले चाहिँ गु चाहिँ खे भए त चाहिँ झिसँग चाहिँ यदि नेपाली ट्रान्सलेट ल्याउ खस चाहिँ खस भए त्याम नेपाली खे भए ट्रान्सलेट नेपाली मुखु अथे राथेन्टुन चाहिँ झिसन चाहिँ नेवा त्यता चाहिँ झिसन चाहिँ थाहा जुन चाहिँ नेपाल मण्डल बासिया भूमियाउ नामन चाहिँ जस्तो झापाली पोखरेली त्याथिन्छ झिउ चाहिँ भूमियाउ नामन चाहिँ झिता चाहिँ नेपामीए त्या म तरसा अबले चाहिँ झिसन खेत गुरुङ त दको दौ जुन चाहिँ खेत गुरुङ त झिटा वे मालकी नेपाल वाने उतै जुगुलिन चाहिँ झिता चाहिँ नेपामी अले नेपामी त झि नेवा त्यता जग कगाउ दशा चाहिँ नेपाली शब्द खन झि चाहिँ फुक्कन चाहिँ झि चाहिँ पूर्व महाकाली लिसिङ पूर्व मेची लिसिङ पश्चिम महाकाली तकया पिन्दा नेपाली अले झि चाहिँ नेपाल मण्डल बासी तथा नेपामी शब्द झिसन चाहिँ प्रयोग हेम तो चाहिँ झिसन चाहिँ छेल हेम त चाहिँ
जिन्थाना चाहिँ छौको तयाको यको सुबाय रश्मिला प्रजापति जी सुबाय थ्यांक यू हजुर हस्यको सुबा छिन तस्क इले सिरेका दिला झिन संगो मिनेट सिरेका दिला झिनियागो मिनेट खछिको टाइम थो सेसने उली ताता ग चाहिँ यान मदी प्रेजेन्टेसन उकियो लागि प्रेजेन्टर पि यको सकलस यको सुबा नरेश नेवा जुया बारे ध्यामाबले वेक इजरायलले चुनादी वेक अधिवक्ता ख लिगल वेक चाहिँ एडभोकेट अले ना चाहिँ वेक नेवा राष्ट्रिय नेवा इजरायल खल अले इजरायली हे आदिवासी जनजाति महासंघ संरक्षक न भाजु रास जोशीजु नाच चाहिँ भतिजा वेक या हजुर टेक्निकली प्रब्लम जु रास जोशीजु छिउ प्रेजेन्टेसन लागि छिता बनासना रास जोशीजु त्या डोला रास जोशीजु राजनलाल रास जोशी रसमला जो त्याद डोला त्याद अब नच नेपाल हाग्न नो योगे वौली ना म त सियुपति क्रमशोर जुला एजु कारण हैन चाहिँ जी छिक्न चाहिँ इले चाहिँ जी थाउपति प्रेजेन्टेसन किन मखन एजा जी छिक्न चाहिँ त कसके चाहिँ छिमा फुना छ न हजुर ठीक जो द यान्दिस थो बचा अस्ने स्लाइड त इदि माली छि अझै स्लाइड त यो खथन स्लाइड ख बचा कुएरु नि वो तर वे अन्चु खथन हजुर वो खता वला अझै सूर्य पिसनान सा व नेवा गोर्खामा जुजु पिसनान सा नेपा त्यागु थौ निसत्या देरुङला ए पुले ढुङला छोड थि बागमती एकको लबावन ढुङला पिसनान साया एकीकरण या त कया छिछि टिप्पणी जाचुङो दो जुया चुनी थुके छौया जग्गा कारण ख पिसनान साया आगमन लिपा नेवाटेको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अवस्था संकुचन अले मि अझ धाउको चाहिँ विचलनै बोल्नु थाहा छ मिगाया इले ठुकिया त कया स्पष्ट रूपमा सटेमा फु तर थौ इ हिलाउने ढुङ्गला ओके थौ सटेगु ज्या चंगरो वा अझ धाउ खस मिगाया एकीकरण नामे जुगु घटना त हाग्न छक मूल्याङ्कन यागु कुटा जुगु चाहे ठुकिया त आलोचना तयारी छ वा चिन्ता वा समालोचना ठो इलो फुङु ख ओके थौ पिनान सायत समर्थन न्याय पिनिको पुच विरोधन हिलाउङदु अले छटो राष्ट्र एकीकरण याम धका तैजिबि छोटो दु छ मेखे पिनान सा प्रतिवृत्ति स्नाय पिनि ल्यान वय कथा उपाय छुङदु ठो मात्र ने तो मात्र चाहिँ कृति परे चाहिँ छाकल ओटेउना इफाउनेको मुला ओ के जग्गा सीमित जाचुङ मखो चाहे वो चाहिँ कालो पाण्डे त स्यागो लोहे जुसान तो छुलेर गदाले पिनान साया बर्बरता पिनान सान यागो चाहिँ नेवात प्रति या चाहिँ गु नेवात प्रति पिनान सान केंगु चाहिँ नकारात्मक सोचाइ या उपज ख आखिर छातो राष्ट्र निर्माण प्रति ठुक्ने बकर दृष्टि मागो ठो नेस थहे गम्भीर छु किपुमी तेसँग थगु न्या मोर्ची न्याप ढुङले जग्गा ठुकिया त ठुक्द या त क्यों खाला छगु नेस लिपा मेगु नेस दौई भौगोलिक रूपमा नेपाल राजधानी केन्द्र ज्याचुङगु किपुया त न्याथेन न त्यागेमा फुको बाध्यात्मक अवस्था तको न पिनान्सान हमलाई न त्यागेमा फु अवस्था गु न्याय धन न्याप ढुङ रह्यो चाहिँ हैरानी ची खकी ठुनो छो बिचायामा ओके ठो ठन चाहिँ जी छैन पटक जी ठो गु चाहिँ प्रसंग त उठे तै जुना ठो खाली चाहिँ किपुए पिन्ट चाहिँ अपमान याको ठवा अञ्चोमी बासिन्दा पिन्ट चाहिँ खाली इमु उपति विगत या त कया चाहिँ जिल्लो काटेन थाहा छ पक्का मखने एजे थोरो चाहिँ जी हिस्ने चुनको चाहिँ ठो गु चाहिँ जी पिन्ट चाहिँ थोनो पिक्चर सोएन ठो छाकल वखा
हामीले त्यो छाका लोय प्रसंग जी छाइ जुन हामीले थन कालो पाण्डे स्याग न थौले पिनन साया नामे ते किपुमी पिसन थौ त कन इ भन्छ न ओ कारण छले हामीले किपु या त कया बर्बरता या चाहिँ बर्बरता यो गिन सुर्जु कारण नाख खेतला वेका विषय किपुर गराइ जुन तर वास्तवमै रहेको छ थो नेपालले वया जातीय विखण्डन वा जातीय विखण्डन या त प्रादुर्भाव या चाहिँ विरुद्ध चाहिँ जी ठुक्न कैछ न मको ढाइ खासा निवाद प्रति खुकुरी प्याख किनेमा आउको आवश्यकता मरो जबकि पेनान्सा स्वयं वैदिक परम्परा वम्पति मनु वैदिक परम्परा छुमरो गरे हामीले निशस्त्र वा चाहिँ छु अपराध विहीन पिन्त वा युद्ध संलग्न मजु पिन्त चाहिँ दण्ड बिगु चाहिँ वैदिक परम्परा मरो वैदिक परम्परा चाहिँ दुई ढुङ्गल ल्या दक्वे चाहिँ थ प्रजा कथ काम आउ तर उक्त मकाउ कारण हैन ठो गु चाहिँ खुकुरी प्याख किन खुकुरी प्याख विरुद्ध ख ठो चाहिँ छागल हो ए छागल हो इतिहास त दुवाला सुयो खसा पेरनान्सा राज्य विस्तार याउ हे शंका मरु तर व गुप्सन थ बैग मेपी सुयागुन हिट्याको मरु हिट्याको मरु ले ठुकी एना पेरनान्सा एकीकरण या त एकीकरण या कुट या त प्याची खकी मको रह्यो नेस्न जागो साह ठन मनु त वया वा नेवा त नागरिक लागे त मडो नेपाल गा प्रति यो चाहिँ सोचाइ सकारात्मक मडो मको ढाइ खासा पेनान्सा नेपाल गा फंगलो ख अन मया खेल खाल हो झेल झाल ज्याचुनी अले अञ्चोबी मन्ते स तु या ल तनी उमी बुद्धि न मडो आट न मडो ढाइ मढाइको चाहिँ उल्टेको मखो नेपाल हाग्न अझै झेल जालो खेल खाल ज्याचुनी उठासे ट्यागेमा रेउपति उयापति दिव्य उपदेश पेनान्सा न ढाइ त ट्यागेमा कारण छु हामीले ठन्चोङको सम्पत्ति वयामिखा अले थोदे ठन्चोङ सम्पत्ति ए रे छुले हामीले जब पेनान्सा ठने हुर्के जुङ ख थोदे चाहिँ नयाँ भोखनेको ढोका गरिया राजनीति याके बजायो छुक्त राजनीति ज्याचुङ थासे पेनान्सा न वास्तवमै राव खसा नेपाल प्रति ब्लेन भिङ्गो चाहिँ अवस्था मतको अवस्था न नेवात प्रति व गो अझ उल्टोमा खो नेवात त झेलजालो खेलखाल ज्याचुनी थासे व चाहिँ नेवातेको लुसैको बो व लागा कालो जग्गामा खो व चाहिँ अमिताभको जेन बेला पटक शीत हुँपी नेवाटे त युद्ध शीत हुँपी नेवाटे त हाक्न न स्याउ जा या त ठोल्याख पेनान्सा न राज्य एकीकरण यामको नेवाटे त स्याउ छौमेव अभ्यास चाहिँ सोर्याउ ख एजा ठोल्याखे गोर्खाया नेपाल प्रति गुजोगो अवधारणा दु धैन शीत आ दिन ठुके त छोचिरो मेरो दृष्टान्त छुले हामीले गोर्खा युद्ध या नीति युद्ध न्याकेको नीति खुरोरा नेपालमा चाहिँ गोसाई धैमिसके चाहिँ त्याकाउ ख तर उहाँ युद्ध त्याके ढुङ्गा न त्यसले त मब्यो नवाकोटे चोमिसके थिवा त्याकल लिद मब्यो ओली जग मखो खोपया टिमिला धैमिसके 18,000 दा बम फेक्ल मात्र ठोय ख कि वो निवाजु कारण वो रणजित मल्लया मन्त्री जो कारण फोटो ठुके छुसी दुले हामीले प्रशंसा वा गोर्खा जनजाति वा अझ रहेको छ नेपाल गा प्रति गब्लेन सकारात्मक सोच तौको मडो उगी वहाँ चाहिँ छुहाल ब्रह्मो सेना या त युद्ध न्योने इंकल तासा जित पात की ताई ठकुर या त न्योने इंकल तासा लिपा अंश जित है मछिंका भी मगत तस्का ढिला उगी खस्ते त न्योने इंकेमा उबी दयागु तुर्की सलखडका ठगु कव ब्याग मेपिन तको तुच्छ याखे मडपी अझ धाव खसा मूर्ख गवार कठ व्यवहार यन्त हो थुक्ता जी तुंका न नेपाया इतिहास गोर्खाया गो अपमानजनक व्यवहार जुल नेवात प्रति अपमान व्यवहार हैन उ चाहिँ छुजु यातले हामीले नेपालले आम हट्याया राजनीति सोचेत
खेतला भूगोल विस्तार या ढुंका नेपालका त्यागे ढुंका ठगु चाहिँ चौतर्फी शासन यामाउ ख डक्कु जनता ठगु यामाउ ख तर मया शान्ति लेङ्के माउ ख मलेङ्को थन जात जात ढका मडासी अभिभावक जी माउ ख मजु छुकिया दसु धयागु ये नगटवा ये नगले चोपी नग भनी अर्थात राजभण्डारी तलिसे वैवाहिक सम्बन्ध ते त तग प्रस्ताव वा व्यवस्था याव छेनबिल नग भनी त्यो आगमे दकुस्त नग भनी त मुका अन आगमे चाहिँ मित्या बिल गुकी सलस वा यक्को नग भनी त मी नया वा मी पुनासित तो छाया मल्ले ठुजोको हटकन छाया मल्ले रे व नेपाल गाले चोपिन त ठण्डाले म फुगे प्रतीक ख जी थौ ठु कथा उली जग मखो जे थौ या चाहिँ नौटले दरबार धै जुना बसन्तपुर दरबार तो बसन्तपुर दरबार न नेपाल गाया विशेष नै ये देया जोशी व राजो पाड्या ते चाहिँ अन चाहिँ मुका अग्निकाण्ड यन्लो मात्र ठुली ख कि गु उगु इया विद्युत जन ढाचो दयाचो बि मन्ते त चाहिँ व ढाउ खन्जिन गे म फे व ढाछन तो चाहिँ व गुणगान मया व नौ टल्ला दुगु डेगले गु पार्थिवेन्द्र मल्ल व गुठी छेडका डेका त उपति उ डेगले दक्को व जोशी व ब्रह्मते त मुका व अन्त आगजनी हैन साना बेला मुख्य कारण मिगा रणजित मल्ल मल्ल पिरियड तकन सलङ स या ल्याखे ब्रह्मदेव ना ढलडुली ठौ नेपाल निंकर चाहिँ ब्रह्मदेव ल्या काबले न 1300 ल्याखे मरो थोदैगु उगु इले व यागु को भाजने कारण उ इले व गु आत्महत्या राजनीति आम हत्या राजनीति जो कारण हैन ननाउ छौ चिख अले मेगु फुटैगु येले छ प्रधान त जग मखु आपलो येले चोपी विद्वान पिन्ता सह भोजन नामे येला मंग लाकुली सता सह भोजन नामे चाहिँ 20 नकाश्यत थो बाहेक न ये शारीरिक विकलांग जुम धरती लक्ष्मी धैमा मख या छम बमनी या त न जबरजस्ती ओ मिखा मखमा मनु या त जबरजस्ती सिंचतेका अपमान याना वे त चाहिँ वो कोपय वो चाहिँ धरती लक्ष्मी सीता उली जग मखु मिखा मखमा मनु यो चाहिँ सर्वसुतक न लगा काला ठो आम हटे राजनीति सुप्रतिजुल विशेषना नेपाल गा प्रतिजुल नेवात प्रतिजुल ठो चाहिँ जी नजव नग भनी त्यो चाहिँ जी आगौ धया तो नग भनी त्यो आगौ खा ठ कले ठो नौतले दरबार थौ चाहिँ भुखा चाहिँ सङ्गुला दे दो अले ठो चाहिँ मंगल ल्याको ठो ठो ढुङ्गा चाहिँ प्रनान सान चाहिँ मेरो निवात प्रति आगो चाहिँ सुलेर हामीले ने अपहरण वा बन्धग्या राजनीति हल सीमा आम हत्या राजनीति लिसे नेपाल इतिहास नापाङ अपहरण वा बन्धग्य प्रचलन सूर्याम प्रनान साख न्याठे याना जुसा किपु ट्याके मफे व प्रनान साह किपु या काजी धनवन्त या का वीर नरसिंह या त अपहरण याना बन्दक देको ख थरे बन्दक देके ढुङ्का फिरौटी कथ किपु या दुखा च्याकेगु ज्याजु ख ठो प्याची ख मको ठैगु ठठगु सोचाइ विषय ख नै चा युद्ध या धेरै चाहिँ व धात चाहिँ धै युद्ध व प्रेम चाहिँ दको जायज धै जायज खगी मखु ठगु चाहिँ छाती थमन्तु लाते आछ बिचायामा अवस्था अले प्रनाम सान मेगु सूर्यागु रहेगु वैदेशिक हस्त राष्ट्र छु न्यू मिनेट्स back then हस मेउ छौ सुर मेउ या रे वैदेशिक हस्तक्षेप प्रादुर्भाव उहाँ चाहिँ छेटले हामीले छके इस्ट इन्डिया कम्पनी या चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी त नेपालले दूत होला च्यासापु बन्दुके लिसे चाहिँ छेत नि छम विदेश त होला नेपालका त्यके नीति भारतीय सेना त हया थानकोटे चाहिँ तयउ ज्याय त ठुकै न चाहिँ वैदेशिक
हस्तक्षेप चाहिँ मखो नेपाल या सम्पत्ति या त 1/3 सम्पत्ति त कन विदेशी या त बिउ चाहिँ विदेशी या त बिउ जुल बुके न थौं त कन नेवा त चाहिँ जग मखो समग्र देश चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप मुक्त जी फुम हुने नागा पनि यो सन्दर्भ जी धामा अवस्था मरो छासा नागा पनि ठुली तक जुल कि थौए इले धाउ खसा उ इले किलो 1300 तक उनको जाकी भाटा हुन जबकि उ इले छमो ढेवाया चाहिँ 64 किलो बिगो अवस्था मन त्यसो चिनेमा फैको स्यात विशेष न नेपालले एजु कारण न थन चाहिँ ठोमी सब सोइस पृथ्वी नारायण जुया झाडा भने मालया सामल थाने या त नसमरया किवालावा यानाया फाकम पिनात्ता यानका चिमनेको वो चाहिँ फको चिमन त ड्याङ गथे छि सुसियाजको नयाँ चाहिँ गथे पिथा चुनमाली वो कया त ठुक त अति जीव लास्ट सुजला नेवातेस सो विद्रोह या भावना दन छापामार युद्ध न या माओ अवस्था बोला ठो नेवातेस मिगाला या त तथौ नेवातेस या कि म याले नेवात चाहिँ आ न सचे जु कि म जिउले तो चाहिँ जी छम नेवाया त स्याउठा ख गन चाहिँ नेवाया त चाहिँ तो पिनान सालिसी सम्झौता लिपा छापामार युद्ध लिपा उयोपति माग पुङ के ढुङ्गा स्याउठा ख थनु छपा चाहिँ ओ ख्वापा अख तुइका तौदु ओ सोइदिस जी थनु चाहिँ चिते असिन्दु तबले मिगा विद्रोह या फु बिने वाता थ विद्रोह या फु अवस्था दु छले तबले दक्कु थासम बन्दी त्यन दौदु विचलन न्यान दौदु ठो कार्य नाना पिनान सा लिपा नेवा त लगभग अवसान या अवस्था चाहिँ न्याउना चुन गुल्खे थौ चाहिँ इलन त खबा मलाउली ना जी थप ख ते मला त 15 मिनेट न जान जी सुबह हस यो सुबह रास जोशीजु एकदम हे बालाको छि एकदम हे रिसर्च याना एकदमै बालाको ओदको खततै दिल खला पृथ्वीनारायण साहना ब स्वागो योको मेगु खतन दु उके अझ अप्पो अनुसन्धान या बाके दनि छ उचकी जरा खजी स्वाजको थोबारे न छि आ रिसर्चर ए जुया चाहिँ छि सायद थुके न छु ख चाहिँ माला दि फै जिमी अझी जिम त जिपी चाहिँ बच्चा तर गजुङले यहाँ दको सिरुङले उले चाहिँ थागु छको पहिला गे चोर गाइबले चाहिँ सिरियाको ख अझी त न अझी या बा बजे पिस कना त गु मखला नापा चाहिँ ल ए निजु फिमर वहां नि ल छजु जको दटकी मखला छजु जको फिमा ल अले छजु ल दया चाहिँ वो ल हिबले मेउ फेरिया ल मरिया चाहिँ काप्त चिना चनमा अल छजु सिपे अप ल दटकी चाहिँ छेउ या दको छे डुप्री दको लुटेना कि हो मखला दाइबले गुली जको दमन जुयो वो इले वो इले या दमन याना चाहिँ नेवाते त सिके पिरे याना एकदमै यागु दमन ने बारे सायद अझन अनुसन्धान या बाग्दैन आछि चाहिँ वे खेले रिसर्च याना चने दिम जुया सायद थुके अझन जिमी अझी चाहिँ थिमी ख मखला अझन वो थासे वा खोपे गे ख छु ख वो बारे सायद रिसर्च या त चाहिँ छगुन हुगु अन यान्दी फैरहेको विचारमा चाहिँ जितयाको जुल आ थौ या थो एक्टिभिजम सेसन छु स्लाइड चाहिँ क्लोज यान्दी मालिला राजु हजुर क्लोज यान्दी आ थो एक्टिभिजम सेसन या थौ दक्ले लिपाङ्गु थन प्रेजेन्टेसन या त चाहिँ नेदरल्यान्ड्स पाखे अजु श्रेष्ठ मेजु अजु श्रेष्ठ जाइदी वेकल चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स बारे थगु प्रेजेन्टेसन तैदी थगु प्रस्तुति तैदी अजु श्रेष्ठ या बारे ध्यामा अबले वेक चाहिँ लिङ्ग्विस्ट अले वेक चाहिँ टेक्स्ट माइनिङ या स्टुडेन्ट न अले नाप वेक चाहिँ लाइडेन युनिभर्सिटी नाप स्वागु स्पेस टु टक अबाउट रेस एन्ड एडुकेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड सेफर स्पेस या वेक फाउन्डर न मेजु अजु श्रेष्ठ जु चित बनाचना छिगु प्रस्तुति लागि Hi, thank you so much for the introduction. Can you all see my slides now? Okay, thank you. Yeah, so I'm going to keep it like this because my notes are also on my computer, so it's not going to go in full mode. So I'll start the presentation. I'll just go up. So yeah, it's going to be on language politics, and I'll start with an overview of what I'm going to talk about. So the first thing I will discuss is the implementation of language policies in India during the British Empire, and then the language politics in Nepal, and then I'll have some thoughts and comments on it. So
I was mainly inspired to do this presentation because of the work I did during my bachelor thesis, which was actually on the perception of Indian English by the speakers of Indian English. And in this process, I looked into the history of English and how it was implemented in India. And from there on, I became interested in how linguistic imperialism was enforced. And I sort of started looking closer into a field that's like slightly closer to myself, and that is that of Nepal, which also has a history of imposing a dominant language on speakers of various languages that are native to its many people. And it has resulted now in a current linguistic landscape that is becoming increasingly monolinguistic. Even though Nepal is often not seen as a country that has been fully colonized by Western imperial power. एकछिन रोकेन दोक्स्या प्लिज म्युट या तै दिसले अनम्युट यान दिमते हस अजुजी कन्टिन्यू यान दिस Yeah, so I was saying that this has resulted in a current linguistic landscape in Nepal that is becoming increasingly monolinguistic. So even though Nepal is often not seen as a country that has been fully colonized by a Western imperial power, it still has this model. So I was looking for a connection between the current day Nepalese situation and the origin of this clearly Western model of a one language system that has been imposed. And I came across an article that actually made an analogy, so I wanted to do this presentation. So I'll start with the British. So yes, the imperial British language policy in India, which I would say it started mainly with Macaulay's Minutes. So the English language was structurally and institutionally imposed on the inhabitants of South Asia during the colonization of the majority of the subcontinent by the British, but this is most significantly marked by the approval and the implementation of Macaulay's Minutes in 1863. And this proposal is based and legitimized through claims of superiority of the English language over that of languages that are native to the subcontinent. For instance, it quite bluntly states that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic, which were at the time languages of education on the Indian subcontinent. He furthermore states that let me see this quote. I've conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the committee who support the Oriental plan of education. So there is a very clear idea that English is a better language based on the opinions of other English people. And he furthermore urges to stop the printing of Arabic and Sanskrit books and to establish a class of persons of Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. And this is a system of downward filtration. And in this, he suggests to make an elite serve as an agent to anglicize the entirety of India. So this is actually implemented in India, and it becomes a foundation for educational policy during the following period of the British colonization of India. The language and the culture of the British, as it was deemed superior by Macaulay, who speaks in terms of superiority, to legitimize his language policy, was systematically imposed through educational institutions. And the implementation of English in India was legitimized
by and with a belief that the language was superior to that of the people of India. So, no, it's still this side. So after the independence of India, the Indian Constitution declares Hindi the official language in 1950 and allowed English to be used for official purposes for 15 years, with Hindi gradually replacing its function. The legislation was, however, amended through the Official Language Act of 1967, giving English the associate official language status. The language then continues its official function in governments and higher education institutions and professional environments of Indian public and private sectors. Therefore, employment in these spaces require proficiency of the language. Additionally, it functions as a lingua franca between Indian citizens who do not share a common South Asian language. So here's a quote by Vandana Puri. Like today, English represents education, upward mobility, modernity, and prestige. And Bhatt suggests that in countries like India, English represents what Bourdieu would call symbolic capital, which is necessary for the accumulation of both economic and political powers. She furthermore states that the fluency in English in this age of globalized economic system is required for a career in almost any field, from healthcare to call center industry. In consequence, this is an essential component of everyday life and a preferred communication medium among the younger generation. So that is the situation in India. And that brings me to Nepal. And so the article where I found the analogy between the Macaulay's Minutes and the Woods Commission in is the importation of ideology from Macaulay to Woods Commission by Avasti. And in this, he talks about the NNEPC, which is the Nepal National Education Planning Commission, and it's also known as the Woods Commission. This commission was formed following political changes in Nepal starting from 1951 to democratize the country. And it was historic in that it was the first time that such a commission was formed, and that this report that was written in 1956 as a result of this commission is still the basis for Nepal's contemporary educational policy. So he basically draws an analogy between a lot of things said in the Woods Commission and then also in Macaulay's Minutes. And he notes 5 categories in which this monolinguistic nation state ideal is imposed. And these 5 ideologies are assimilation of people into the language and culture of the ruler; destruction, the systematic destruction of native languages and cultures; perpetuation, the use of propaganda and misuse of state machinery to perpetuate language power; possession, monopoly over the access to intellectual wealth; and restriction, control over printing and production of material. And like some of the quotes in this report are, for instance, like an example of assimilation is otherwise Nepali learned as though learned may remain a foreign language rather than the child's basic thinking language. The destruction of it, like many peoples will cease to depend upon their mother tongue, and it should be emphasized that if Nepali is to become the true national language, then we must insist that it's used to be enforced in the primary schools. And then possession, control over knowledge and information. The native languages would hinder the teaching of Nepali
time is needed for other important and fundamental learning. So he's clearly deprioritizing the learning of anyone's mother tongue unless it's Khas Nepali. So I would say the article does a great job of clearly showing that this is like drawing an analogy between Macaulay's Minutes and the Woods Commission by criticizing and exposing the superiority complex, which is, I would say, a lot easier for Macaulay's Minutes because the language is just very violent, whereas the Woods Commission, it sort of has this undertone of wanting to meet this demand for education in Nepal, and like especially universal education, whereas it is actually a way to further impose monolinguistic policies. And the one side note I would make to it is that he does not question the imposing of the nation state at all. For instance, he calls like Prithvi Narayan Shah's like colonization unification, and he doesn't question the nation of Nepal as is. Okay, thank you. That's great, because then we come to the thoughts that I have on these pieces. So what it mainly shows is that superiority constructs are reductionist, and that they attempt to impose one superior way through, although the ways of like measuring are always subjective. And due to these linguistic policies, there is such a loss in knowledge, and there's a wealth of knowledge that we lose with the loss of each language. And the last thing I like to give away is that, yeah, the language is so much more than what is measurable. Most of these policymakers do not take other meanings of language into account, such as language as a home, sense of belonging, connectedness to one's culture, heritage, and community. And they do not offer other ways of like sustaining like local cultures as well as more global cultures. So yeah, so the value of the mother tongue goes beyond what is measurable. That's it. Thank you. हस् यो कोही सुबा हजुर छिगु थो प्रेजेन्टेसन लागि थौ जी थन क्वेशन्स थो सेसन लागि खासे न्यस त छु वगु मखना दोक्सिया चाहिँ बालाको प्रेजेन्टेसन याना दिगुली सिकपन त भिन्टुना चाहिँ बिया दिगुदु तर न्यसय चाहिँ मखना अपोसिया चाहिँ थन इमेल एड्रेस त न्यौ खनी इमेल एड्रेस चाहिँ थन गुलिना प्रेजेन्टर त दु मिगो वथौ वेकअपिनो दको इमेल आईडी प्लस वेकअपिनो बारे बचाहको जानकारी छिकपेसा चाहिँ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन या वेबसाइट चाहिँ छि खना सोयादी फै अले नापा फेसबुक पेज न लिंक दु अनन छि क्लिक याना ओदको इन्फर्मेसन चाहिँ कयादी फै रसमेला जो हजुर नेसा त दु दै जी थन फेसबुक याना सोया chat mayana ji wo chose ga wa comment chose ga ya maudo wood commission wo mokali go kha taupati khachai a we khala we khala chai go nyasan to wood commission chai वास्तवमा खन to Oregon state चाहिँ नेपाल है डाक्टर यो wood धाम चाहिँ छमा प्रोफेसर चाहिँ appointment yana we company we go kha चाहिँ commissioner de ko pati चाहिँ kha to wood commission धाउ चाहिँ Oregon and चाहिँ नेपाल वेको यो निर्देशन चाहिँ नेपालले गुलिन भाडो ख उइट चाहिँ प्रमोसन यामा हो उइट चाहिँ छौजको भाइ चाहिँ या मार्का चाहिँ को कमिसन युज को रिपोर्ट आयो झ्याटो कानैना चाहिँ झिको भाइ चाहिँ ठुली मतलब चाहिँ सप्रेस जुपले खास कारण चाहिँ यसले अनन्से सुरु थेन चोंग थोय चोजको चाहिँ वो आइडिया लागि देखो सुबा एकदम बाला जो जिले बखला वेको नब हजुर हस बा अले मेगु छगु डेभिड गेलनर जु तै दिगुदु लुमु व कृपेन्द्र जु या त Has anyone made a complete list of those who have lost I say who have lost their home as a consequence of road widening the question to digudu ale hazar
पहिला अब क्वेसन या आन्सर छि तै दिस मखला दक्ष चाटे तै दिस ल प्रश्न प्लिज यो सत चाहिँ चाटे तै तैबिकी फास्ट जिला दक्ले पहिला अजुजु नक्तिनी दया दैन निना दिगु के बारे छि एड्रेस एन्डी खसा तै दिस नवान दिस This is so Lumu. Even in the case of Lumu, she actually got her aware that about the problem, as actually done by Lahu Nip has done a comprehensive understanding. And if you actually get some visuals of the SME presentation, we have found that 90% of those who have lost land were Newah, and there are actually numbers there. Actually, I will forward it in the chat group of what we have found so far. At the moment, I will be searching it. So maybe you need to give me a few minutes. Thank you. यो कुसुबा अजुजी छिन रेस्पोन्स एन्डी ख नचा दया जुँदै दिगु खे छुँदै दिगु ख के मुआला अले छगु थन आ नचा न बिसी हजुर हजुरजी नेवा बिहान खनाइ छ तर उली इंग्लिश ते उली बिहान खनाइ म छ तर वुड्स कमिसन चाहिँ वो अमेरिकन मनु चाहिँ छिनाया wait, I'll switch to English, sorry. Yeah, so I did read about indeed that Woods was sort of asked by the government to for advice basically. Could you maybe repeat what the other things that he said? It was just my comment that Wood Commission was formed in Nepal appointed by the U.S. government in 1951. So the person who Dr. Hugh Wood, so he was the one who was appointed by at that time the U.S. government, and then he created all kinds of advice for the Nepalese government to run the education system. So from that यो कुसबा थन फेसबुक लाइभ चाहिँ ओम कृष्ण श्रेष्ठ जो ताताको कमेन्ट चाहिँ चोइतको दु तर वेकल चाहिँ आठो बच्चा रोमन नेपाली चोइतको ज्या बन्छ चाहिँ त्यसमा थाकुलगा जी वो वेक यो क्वेशन चाहिँ मखु मखला तर पृथ्वीनारायण शाह यो बारे वेकल सुपरि इन्फर्मेसन तै दिगु बचको ख वो चाहिँ रश्मिला जी हजुर रश्मिला जी जे छ वो चाहिँ न्यान्यो रश्मिला जी जो तै दिस राज भाइ जी राज भाइ जकमी वो जे चाहिँ वो राष्ट्र जित छगु चाहिँ न्यान्टेनो वेकल चाहिँ के पो युद्ध बारे खनाट पृथ्वीनारायण शाह यो चाहिँ अतिक्रमे बारे खनाट तर किपली चाहिँ छम मिसा गुमसे चाहिँ लालमा थ सिनावन व कीर्ति लक्ष्मी ख गुम कीर्ति लक्ष्मी अब किपुमिटे चाहिँ वो छम नेपाल देय बिरांगना ढाली गौरव टाया चंगदु अजम व्यक्ति ना वेकन क्याटो फ्यु ठेचो वो खेंस का वेक विचार का नेने इच्छा हैन सुबा ए हजुर राजु थुके अड्रेस पता छियाको हजुर सुबा राज भाइ चाहिँ कमी छ इतिहास चाहिँ गुण पन्ने कीर्ति लक्ष्मी प्रसंग मडो एजा चाहिँ जी मिथकीय पात्र त चाहिँ जी चाहिँ थो न्याने फो अवस्था मडो एजा चाहिँ जी कीर्ति लक्ष्मी त चाहिँ म बि आउख तर समग्र रूपले आउख कीर्ति पुरे जो बि दबै कीर्ति लक्ष्मी ख सुबा हस यो कुसुबा अले द छगु आथो एक्टिभिजम मखला अले जी द तै धामास्ति भगु जी चाहिँ नेवा मिसा दबु लगायत यहाँले न देखागु याना जी नेवा दै छुलेसा मियो यो मरि पुनि नया चाकुतया मखला खुवातया यो मरि नया एजा नेवा कि जी थ्याको पर्सिसिना छन संयुक्त चाहिँ अन लस राखिना छन एजा नेवा कि जी नेवा दै छुलेसा नेवा दैगु चाहिँ भाषिक समूह ख तर थन या अधिकांश प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेवा भाषा मजलो जी चाहिँ भचा एक्सपेक्टेसन एटलिस्ट एक्टिभिजम खलाइबले चाहिँ नेवा भा वइला अझ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स गा चाहिँ प्रेजेन्टेसन यान दिल अजु जी आले ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स यो ख चाहिँ वेकल एकल जातीय याना चाहिँ झिगु नेवा भा प्यामोल गा खलान दिल तर वेकल चाहिँ नेवा भा स थगु प्रेजेन्टेसन तेम अफ द एज थोसो चाहिँ एकदमै मिले मजुगु पाटो खला आठुके थो ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर मरु ह्याउ भाषा नभाषा जिउरका बो चाहिँ वगुदु ओ ठिकै ख तर न छौ थिस रियलाइज या मागु खगा जस्तै डेभिड गेलनर जु वेकला नेपाले भूम मखु नेपा मा बौ दुम नेवा मा बौ पाखे वेक भूम मखु तर वेकल कुतय ना नेवा भा लान्छोसा जी नेवा त्यसो चाहिँ नेवा भा छ्याम लागु एटलिस्ट थजागु प्लेटफर्म व नेवा दे दबल येगु ज्याजो जिमा वा हली नेवा दबल येगु ज्याजो जिमा
अन चाहिँ झिस नेवा भा ल्यायो त उली चाहिँ झिस देखिमा ख नेवा भा ला ठाकु वा रगा चुनकिला छिगु बेन सही मखुजी मलाई तर द छौ लगे जु चाहिँ झिस जब एक्टिभिजम यो खलाई जब झिस चाहिँ अभियान यो खलाई जिउ भा सेकेको न एज अ एक्टिभिजम झिस हुने के माथि छगु टार्गेट सेट हैन 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ जी भा सेकेरगा साथ कि झिगु एग्जाम्पल लिउ संयुक्त श्रेष्ठ न ख वेक न छ कतै दिगु वेक नेपाली चुनले चाहिँ गुली भा ला सौ खनेवा भा उली ल्याम सबेक तर बेलायत खिनका चाहिँ वेक्ल थगु भा निवा भा लागु चाहिँ क्रम सुर्यान दिल वेक आ मजा वेक्ल कन्डक्ट एन्ड एजा छौ कमिटमेन्ट चाहिँ झिनेवा त्यसमा या माथि छ कि नेवा भा चाहिँ झिस याठा हलिमे झि याठा सोसा झि नेवा रका झि ग्लोबल नेवा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नारा नबिया तर नेवा तका सार्थक या चाहिँ एटलिस्ट झिगो जेनेरेसन वा झि मस्तेको जेनेरेसनले चाहिँ झिस नेवा भा ट्रान्सफर या फुसा चाहिँ झिला रहेको ख अले छगु चाहिँ द एक्टिभिजम चाहिँ जी एक्सपेक्ट या नगु खला झि अब पहिला सोइ ख तर न भतिजा नेवा समाज समावेशी मजुरका चाहिँ भिगयो पोडे समुदाय युपटी डाक्टर सावित्री जु यो प्रेजेन्टेसन न बोला मखला अले प्लस झिस एकदमै निनी या नि थ व झिस एक्सपीरियन्स त यान्छना अले मेगु दाइ चाहिँ लैंगिक रूपमा चाहिँ एकदमै समावेशी मजु नेवा मिस्ते त चाहिँ गणन थ्यामहरु जिन्या ब्लेन धागु याना थो चाहिँ एकदमै ख तर हलि नेवा दबुल कुत यागु दु नेवा मिसा मिजय त चाहिँ दक्स्त ओपनली जिस बि त तर थो चाहिँ देया झिउ नेवा तेगु मूल धार दाइ नि मलाई जिस नेवा नेलुवा त्यसन मन लिया माथे छ वेक अप सन नेवा मिस्ते त गनगन जिल्ला छार थो आर गुली न ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स जागो प्रेजेन्टेसन सोइदिसले नेवा मिस्ते स गुली बालाको प्रेजेन्टेसन यान चंगु दुनी थो अवसर दत एजा वेक अप स थगु पोटेन्शियल केनिको थ्या दत अथे नेवा खेलेन यदि छिकपिस थ्या बिउ खसा युको युको नेवा मिस्ते नेलुवा जुया लिडिया त चाहिँ यहाँ वे फैदका तै छ न अलि हाक्मस क थौ यागो सम्पूर्ण प्रेजेन्टर त दक्ले नापानसे कृपेन्द्र अमात्य लुमु श्रेष्ठ अले वयालिपा नरेश नेवा अले राज जोशी अजु श्रेष्ठ छिकपिनेको एकदमै भेरिएसन दो प्रेजेन्टेसन मखला नेवा दुनिया मुभमेन्ट अले नेवा पिने नेवा त्यसमा यानचोंगु ज्या निसेकया ऐतिहासिक खत पृथ्वी साल गेना चाहिँ झित दमनियागु ख व खनिसे कया चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स गुके चाहिँ नेवा ल्याङ्ग्वेज युजको मखु गेना चाहिँ थो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आ गुली झिस अफको लान्छु न व इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज यु पोलिटिक्स गेना सुरु जुल रका अजुजी एकदमै बालको तै दिला तर अजुजी या त चाहिँ जी हाक्नस कथा छि बालको निवा भाला त कुतना यान दिस व चाहिँ छौ छिगु थगु समुदाय लागि छियाउ न दै निसा व छौ छ यान दिला स एकदमै बालाजी यो कोइको सुबा छिकपे सकलसित टाइम चाहिँ ठो सेसन अप मोमेन्ट छ यो क्वेशन टाइम ए सिलेका दिला भतिसा चुइ सेसन ल्याओ नि छ भतिसा तो सेसन तागा थिजल जी संयुक्त जी छितय जी हान्नु पर्या यो कोइको सुबा थोगु ताइ लागि यो को सुबा रश्मिला त जी चाहिँ थना बच्चा नु पापिन त दिसाका चाहिँ बच्चा व्यस्त जुल तर जिन दको जिन नियन्त्रण हुँदो त्यसको बालाको चाहिँ छि थो न्याका दिला सेसन छि सला न्याप्ले चाहिँ निना चोनि मास्तु भयो बोला जी सक्सित भएको मलाई अले बामला चाहिँ कमेन्ट्स त हैन बोला थन अले आई एम रियली इम्प्रेस्ड अजु हाउ वेल यु प्रेजेन्टेड एन्ड हाउ यु इन्ट्रेस्टेड अबाउट you know how you actually shared quite valuable information about you know the politics that the English language itself went through, and otherwise we wouldn't been aware of it. So what I think is like I mean it is a well-known fact. We as an organizer and we all Newah community are quite welcoming to all different languages and users of all languages, because we really need to learn about activism where we are kind of lagging behind. So मक्सा चाहिँ झिसँग चाहिँ भाषिक रूपमा सीमाङ्कृत झि जुया छौं चाहिँ इले चाहिँ अंग्रेजी भाषा खनाइ मित जथन थामहरु त दालदा सल हाना झिन वया भूमिका मिति जुइ easily definitely you all are invited, we all are welcome, and we learn from you. Can I say something about like the fact that I'm, for instance, using English? Sure. I think it's like a very clear like result of what I talked about in the presentation. So English was really used and implemented in education. So it makes sense that I mean, I would say I am a Newah speaker, but I speak it mainly with my parents, for instance, and I would not use it in intellectual like contexts. So I feel insecure like as soon as I sort of try to, like start an argument. I agree. So so I think like the fact that I'm speaking English rather than Newah when I'm talking about these things, like spreading knowledge basically, is actually a direct result of that. And yeah,
I would have loved to actually said it in Newah. There'll be a day. There'll be a day. It will take some work. And I would also like to note that, for instance, David Gellner, he's actually studying Newah like as his job, right? So I think that is a part of his intellectual capital. Whereas for me, Newah is no longer a part of my intellectual capital. Like it's my cultural, Yeah, like no, my culture that is a connection. valid point. I think you make a very valid point because someone studying Newah as a part of his professional academic role and being from a different background makes a lot of difference actually. And also like thought saying व्यक्तिगत दक्षता न ओके वै अले चाहिँ थ चाहिँ गु वातावरण दुदै न उखिन चाहिँ युगा वै मखला जी थन लन्डन चुनले चाहिँ पासपछि गुथि दु तर नेदरल्यान्ड सुदु जी मस्यु मखला ओके चाहिँ I don't know how it is elsewhere around the world, but in London there's a very good environment to learn. And I started learning Nepal Bhasa when I was 30. Now I'm 40 plus, and I can easily and very fluently speak Nepal Bhasa, I guess. But the problem is now I'm just opposite of you, Azu. Like you have problems disseminating knowledge in Nepal Bhasa, but I have problems speaking with my family in Nepal Bhasa because these are two different formal and informal ways of expressing in the same language. I never spoke in Nepal Bhasa with my parents, so I don't know how to be very homely and in that way friendly in Nepal Bhasa, but I might be a bit better in informal communication, not otherwise. So taskan balaka चाहिँ खजुला अले राष्ट्र जुयाला taskan balaka चाहिँ वेक प्रेसिडेन्ट सायु चाहिँ खता तैला निरन्या चाहिँ जी कान्तिपुर पत्रिका चाहिँ पृथ्वीनारायण साई बारे छौचसु पिकाबले I received like 800 different hate comments and it's छरन्या जी हाना चाहिँ पृथ्वीनारायण साई बारे चाहिँ काठमाडौँ पोस्टले पिकाना and then I received getting like I think 600 hate messages. So please be ready to get more hate messages, and we should always welcome. And just to let you know that on Twitter, those hate messages were like 60% of people in Nepal believe nothing happened in Kirtipur. Kipule चाहिँ छु मजु नभा तका चाहिँ 60% Twitter या चाहिँ धाउ. Yeah, I don't live in Nepal, so that's I can't leave Nepal when I'm not living there. But the thing is, yeah, no, I wanted to respond to something else you just said. That so I also live in the Netherlands, so you don't have an actual like a lot of like Newah people around me, so that would be that makes a lot of difference actually, the environment you are in. Anyway, so thank you. Now, thanks Oju and thanks Rasju, everyone. Yakeko Subhashik Binda. आज जी दीपा का आयोजन इज ल उखि दीपा यु झले आज चाहिँ मेउ सेसन नेकी सोयाना जी चाहिँ दीपा का आयोजन इले चिकबिन्दा जी चाहिँ please take a break for 15 minutes during which we will not only play some very good commercials जी चाहिँ विज्ञापन त जी चाहिँ थन केने उखि न्या चाहिँ जी सुसु चाहिँ थन बच्चा जीसँग चाहिँ हने बहपी नेने बहपी त चाहिँ थका चाहिँ एक मिनेटको लागि चाहिँ वर्ल्ड अर्गनाइजेसन हलिनेमा दबु या जी द क्याउ लस्ता चाहिँ सु चाहिँ भिन्त्रा बुख चिकिन्छ चाहिँ बिया दिशा चाहिँ कृपया प्लिज थन चाहिँ दाइ फै दक्षिण हापा जी थन इना पिया मल्लके सुन्दर भाजु मल्लके सुन्दर जुया त बेका आना जिलिसे दिशा चाहिँ थन Malake Sundarju, if you are still around, if you are in Zoom meeting, chaka unmute pian disa. अथवा welcome बरु साझै थन महेश मान्जु त जी नक्तिन चाहिँ खनाउ ख महेश मान्जु आज खास नेपालले तस्मा चाहिँ लिबात छ छ उकि वेकबन जी थन मखना एसा चाहिँ जी छक थन जी चाहिँ यज्ञमान साकेजु तर खनाउ ख नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका या नयाँ भाजु आया अब कि अमृत स्थापित जी त कन पासपछि गुथि युके या पलिस तामिन खछम अले नापामा भन्थे अमृत स्थापित जी we like to just express a line of internal message for world organization सतारु मागता 1 मिनेट लागि प्लिज कसस्ता जो जल्पा Tumiyawa to चाहिँ हलिनेवा गुथिया चाहिँ गोठो सेमिनार जिदो क्योंगो लस्ता चाहिँ थो हलियंका विश्व 24 सक्स्ता चाहिँ ठुकी भाग गया ठटे चाहिँ छौ छु नेवाटे बारे ज्याचों
yana chong ja khanta bare chi sa shi ke data so educationally ro pana yoko chai chi da chai wa cha kyu jana jula to chai bangla le ja kha a chi ro ma chi kyong ali ni wa da wo so niple jakum mo ko biswe chong bi ni wa ta mungka so chai gena ni ha ni go dai go so chai tatna surya go kha mala तर आज 0% भित्र चाहिँ एक्टिभिटीज गुल्टको जुल लगाम यो सेमिनार इंजन खन बाला चीज ख मला तर चाहिँ आठो सेमिनार दुनिन यो कुरा चाहिँ खप्या ओ चीज छुजल ढासा चाहिँ छौला चाहिँ थो चाहिँ नेवाट जुया चाहिँ विश्व छरे जो विश्व यंक चाहिँ गुटी संस्था त अर्गनाइजेसन त यो कुरा बाला चीज खला तर चाहिँ गतकी बेलायत ना चिसा पासपचा गुठी सूर्यना विश्व विदेशे चोपी नेवाटे त छौ प्लेटफर्म दट बालट तर आ मुख्य चाहिँ खप्या होइ जो छुरास चाहिँ नेप्ले गणकी चाहिँ जीव नेवाटे चाहिँ रूट होला मेन चाहिँ जीव हाय नेप्ले ख होला अने चाहिँ नेवाटे चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बालन चोन होला चाहिँ खन प्यावला गु चाहिँ अपना जी नियन टय बनते हो नियडे भित्र चाहिँ नेवाट मरै पनि रेउटकन ख छिसा वाचाको चिज होला आठ नियने ब्ला चाहिँ तस्का ज्ञान पुगा होला मने चिरिङ पनि नुवा शेयो होला नुवा खे होइको नेप्ले हुने जीवन ब्लेन चाहिँ ठवे परिवार न चाहिँ मस्तेस चाहिँ नेवा भा खमला होला जी चाहिँ जिना पनि वा खलामा खला छि नेवा ज्यारका ढाओ अले जुरगा तटमटयना खलाइ तर हना इबि तके मिले जुलाओ माने पास्पे मिले जुला खेबा खला नै मला ट्याबले चाहिँ जियो फ्युचर छुले होला ट्याबले चाहिँ तो हलिन्जवा दबुयो चाहिँ हलिन्जवा दबुयो चाहिँ मेन फोकस कि वहाँ सब बालाई ठेन चारा चाहिँ मेन चीज चाहिँ चिसा चाहिँ छि फाउन्डेसनै मकिमाला होला ए जुलिना चाहिँ आठुकी त चाहिँ जी चाहिँ ढाउ छोया जुका ख यको जान चोंदु तर फुसा चाहिँ छि गटेकी थो एनआरआई ठे चिसा चाहिँ हलिन्जवा दबु वना वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन ना नेपाल गभर्नमेन्ट न प चाहिँ कनेक्सन जिया सो प्रेशराइज याना न्यागु खे न चाहिँ थो भ्यायु खे जुल जी संस्कृति सम्पदाय खे जुल चिसा चाहिँ प्रेशर ठे बिया चाहिँ ट्विट चाहिँ मका यंगे फैला रिउ चाहिँ जु चाहिँ इच्छा ख मखला बालाई रिउ ख अन्ना प चाहिँ ठटे छि चाहिँ मिले जिया चाहिँ तो खला बला जुठे छिसा चाहिँ पॉइंट्स पिकाठे उकी त सोलुसन न पिकाना छिसा गेना न्याउनेको छिन्यवाजिया छिगु तजि लजि भागे न मकटेको भविष्य चौपी मस्तेट न मखला दिपविपी जनरेसन इतना छिसा चाहिँ थगु संस्कृति गेना ल लान ठकेको रिउन छौ चाहिँ छिसा छौ जाना यंगे फेमा सक्स्ता चाहिँ छि भिन्तुने मखला अले विशेष हलिन्यवादे दबुइटन यको भिन्तुना देछाना चाहिँ यको चाहिँ बाला जाना तो चाहिँ छिसा छि ठाउने फेमा युवाट ज्या 56 ज्या छडी ज्या नेवा छि नेवा हे जी फेमा रगा चाहिँ सक्स्ता भिन्तुसे जी चाहिँ सक्स्ता भिन्तुना देछा अनस्का जोजल्पा अले चाहिँ आकनेनसे सूर्यको नोगु स्पेसम्बर 2021 चाहिँ हैप्पी न्यू इयर नोदाय भिन्तुना यको सुवा अमृजु वेके चाहिँ अमृजु जुल पासपजको छि युके या पलिस्थामी छम व नरेश पिर सके जु झिलिसे दि थन जी चाहिँ कुत यान चनाउदु वेके त फोन चाहिँ कन्ट्याक्ट नरेश पिर जु छिदा मसिका बिया चन्न वाला थन झिसक्या चाहिँ छितो सम चाहिँ नेलवा तका चाहिँ मसिका चनाउ जुल नेवा खेले छिउ चाहिँ 1 मिनेट छ नतिको चाहिँ भिन्त्रा बुख दुसा चाहिँ थन बिया दि त जी इनापि हजुर जी मोठुल छुदै दियो ग नरेश बिरजु हलि नेवा दबु जी द क्यों लस्ताए छु भिन्तुना बुख छु पाखे चाहिँ छु 1 मिनेट यु दुसा चाहिँ थन प्लिज चाहिँ कृपया प्लिज हजुर सुबादो Deglin habala
पिन्टुना बेचना छि विश्व नेवा संगठन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन छिटक्यन छिटै दुने वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन गो ठाउ गतिविधि द न्याकल विश्व नेंकया नेवा देदा छौ अम्ब्रा दुने छौ कथा गुखना जागरण बोलिंग की जजला वो तस्का है जो छाबा गो जाथे जी ताके जना अथे रेथे आरो गो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन गो विभिन्न किस्म विभिन्न देशे डुबी नेवा संगठन देदा छौ किस्म जागरूक या कथा छौ किस्म चाहिँ नेवा देदा गु कथा चुन्याकेको जा या चाहिँ कुटा यान्चुङ ख के आज त्यसका बालाउ ज्याजङ ख ला विवाद मरो ट्विलिसलिसे चाहिँ नेवा अर्गनाइजेसन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अझ भरिजा सशक्त कथा न्याहाउन मागो न्यागा मागो सोचौं खता अझ न दनी ठौया ठोगु ज्याजो ज्याजना अन्तर्राष्ट्रिय कथाए चाहिँ गो ठो कन्फरेन्स ज्याजना ओ कन्फरेन्स जिसा आपल पार्टिसिपेन्ट अथेरे विश्व यंका चुजो बिन वाद गुमी चाहिँ आछौ गना पर्दै लुने जना गो नेवा भए जाति संस्कृति प्रक्रिया चाहिँ जायन जंगु ख वो जाइदन छौगु मसिका बिकरा गु छिक बिसा तो जाजो तैदला उकि निम्तिना आपलो सुभाइ दिसन जना मूलतः वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेवा देगु मसिका आसे गुक्ता बि मा ढेगा ढेगु खै त कया छरजिता ख चाहिँ गुकथा तो विभिन्न देशे नेवा देगु जात्रा पर्व इदन नाला चाहिँ नेवा देगु मसिका गुकथा बिवेन्जुन निश्चित गरेर झिगो संस्कृति अले नेवा देद थपि नेवा ख रेगो गौरव ठिकु निम्ति गु विचार हल वो चोछागु खंख लिसिलिसे मूलतः चाहिँ भिसा छटा ख चुना ध्यान रे मार्गा राजा झि नेवा द न्याठा दुसा न्याके दुसा झिगो मसिका रेगरी दैगु मूलतः झिगो संस्कृति रा जोगे जुला तर झिगो भाषा इदन उटिए महत्व बिमारे दिन खान चुनाउ विशेष गरी झे पिन चोबी विदेश चोबी नेवादास थपिनेको संस्कृति या त गुक्ता चाहिँ हने हया थपि नेवारका ढागो गौरव बोलंगीको जायन जुन उकि यात चाहिँ छिसा भाषा इदन ठो नाप एंके माथे जो ठो भाषा छिसा लागु टोटा अथवा छिसा ला मसला अथवा भाषा इद कम महत्व बिया संस्कृति या त झिसा सोन्याका छिनेवा खरिगु केदिगु ज्याजन जिसबले उके या त मूलतः झिसा भएदन छोकिसमा मूल स्थान बिया छिनेवा खरिगु चाहिँ पहिचान ख उ पहिचाने र भाषा या माध्यम या न फिरमा उके निम्ति भएकनिगु भाषाको बिगु अले उके त मा गठाए चाहिँ मेमे गठाए तयारी मागु ज्या जिसले वर्ल्ड अर्गनाइजेसन पाके जिमा थे जो जेसँग न दु तर अझ ठुइटा बृहत ठो चाहिँ बृहत क्याफेमा रेगारे जी दुनुगुलन चाहिँ मनोजना जना विशेष गरेर ठिक पिसा जिदान थन छु गठाएन नगाको मौको बेदला ठिकबिन्द विशेष सुभाइ बेचना सुभाइ यको सुभाइ नरेसु छिउ गाली दया चाहिँ इलोहन प्रकाशन पाकेन जिउ ख न्याब्ले चाहिँ नेपाया चाहिँ थिथि थासे थिथि चाहिँ यको जी चाहिँ दुजपि पापि चाहिँ जी पासपिन लिसे चाहिँ वन्छौँ यको सुभाइ त अहिले अब जीवने यज्ञमान साकेजु लिसे नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका या आया नयाँ भाजु 1 मिनेटलाई छिउ चाहिँ भित्र नसुबिया दि त यहाँ पिया यको सुभाइ सुगन जो दक्ले नापा छिडक्यंगु अलिन्यवा दबुया लस्ता सकल दुजा पासबिन्टा पिन्टोना देशना छना मेयाव थौयु आ गुन्न थौं जिंगु कार्यक्रम सोया जिता तस्कन लेता तस्कन याइ फुसे छना यको चीज यको खत सेके खन सीके खन फ्रीके खन उगे लागि सकल जि ठगे गोटिके आदिबी सकल जि बाजु मेजु बिन्दा यको पिन्टोना देशासे जिगु छत्वा त खन छौ छुतेता सा जिसा झि नेवा दया चाहिँ झिउ थयो भाषा झिउ संस्कृति झिउ चाहिँ तजिलजित
지상 하나와야 주노도 토텐 지상 नो जेनेरेसन त छिसा हस्तान्तरण नियामक त अथवा चाहिँ नो जेनेरेसन पिन्टा चाहिँ छिसा चाहिँ सेना उन्मुक्त भाषा छिउ चाहिँ मिया छम छि दाजु तैदि थेन तो 50 वर्ष लिप छिउ चाहिँ नेवा यो चाहिँ अस्तित्व दैमक ओ कारण जे चाहिँ छिसा चाहिँ थो नो पुस्ताइ त चाहिँ छिसा हस्तान्तरण निनामा नो पुस्ताइ त चाहिँ सेना उनीमा विशेष सेना अझ जी नेपालले चाहिँ नो पुस्ता त सेनमा हो नेपालमा चाहिँ झि पिन चुना चपी हलिङ्ग चुना चपी चाहिँ झि मस्ते त चाहिँ अपैना चाहिँ तजिल्लो जी सेना चुनु जा झिसा फट्ली सेना चुनु तर झिटा नेपालले चाहिँ ठुके चाहिँ एकदम कमी कमजोरी खौज्या नेपालले चौबिसमा चाहिँ थ मस्ते त चाहिँ थयो भाषा संस्कृति सेना उन्माहरू चाहिँ जिमो चाहिँ छौ छि तो हलिङ्गवा न्यङ्कन चौबिसमा चाहिँ छौ अभियानमा देखि माथि छ अहिले उगे साथसाथै छिथन हलिङ्गका चोपी छि नो पुस्ता पिन्टा चाहिँ गोकिस्म केता चाहिँ न्यन ह्याकिङ क्युले गोकिस्म सेना उनीले यो चाहिँ छौ सन्दर्भ चाहिँ जि छपा छि हाका छौ चाहिँ खते छि नोपी पुस्तापी छि मस्ते त केता सेन त छि भाषा सेना सेना ल्या चाहिँ सेना उनला चाहिँ वेलकम सेकिङ हो सेक फैनम हो इन्ट्रेस्ट न दैम हो ठुके लागि चाहिँ छि मस्ते त चाहिँ सेना मस्तेसँग सेको चिज चाहिँ स्कुल पाखि चाहिँ छिसम प्रेजेन्टेसन या फटासा इमसा चाहिँ थयो भाषा न सेकी थयो तजिलजी न सेकी गुगेना चाहिँ इमदा स्कुले न छौ चाहिँ प्लस पॉइंट जी उगेन चाहिँ छिसम उ किस्म तरिका उन ढासा छिउ मस्तेसँग छिउ भाषा तजिलजी सेकी दिउ चाहिँ जिता योको विश्वास दु अथेन्टु वे हिसाबले चाहिँ जिमसा आ ठुसी थो नु दयु स्पेसलमा नु दयु लस्ता चाहिँ न्युवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका छौ लिपि सेन्यु चाहिँ कुडयाम याते नगदु उगेको लागि चाहिँ हलिङ्गन चोपी चाहिँ सुना लिपि मसेको नि जिमु चाहिँ सपुली चना सेगा दिटन इनापेना छुना अहिले ठु किस्म जिमसँग विस्तार चाहिँ मेउ न चीज त मस्ते त सेना उनी चाहिँ कुडया याते नगदु उल्टा से जिगो नित्वा ख थने कोचाकी सुबाएको सुबा संयुक्त जो म्युटेल लान्छन् का संयुक्त म्युटेल लान्छन् ए सरी तस्को बालाको चाहिँ खताइदिल योग्यमान जु अमेरिका चाहिँ बामला छि ज्यायान दिउदु नेवा प्याखन चाहिँ सेना अले आजि भने थोदुङका चाहिँ दक्ष लिपा थन राजबाई जकमी जु थन दि झिलिसे वेक चाहिँ ज्यापु महागुथी या नाय भाजु राजबाई जकमी जु छित चाहिँ 1 मिनेट नछु थन चाहिँ हलिनेमा दबिया त हिन्द्रम नछु छु दिउ चाहिँ मन दुसाथे समितिजी यकेको शोभा पिन्टुना छको त बिहे लागि द अवसर बिहा दिएकोले आठो हलिनेवा डब्ली को निनु गुगु जाजो यात कोभिड-19 यो महामारी दथि विश्व न्यङ्कया छि नेवा नेलुवाट मुंका गुठो कार्यक्रम यात वछौ चाहिँ तस्क टजिको कार्यक्रम ख टजिको कार्यक्रम याना दिएकोले शुभा लिसलिसे आठो डमज ज्याचन अलि नेवा गुठियो वटस्क बालक सफल जोगले शुभा आज छौ जग्गा ठौ खण्ठा छिउ भाषा विकास यो खवैचन छिउको भाषा गेना संरक्षण यावले खवैचन छिउको भाषा एटा गेना भन्नु पश्चात हस्तान्तरण यावटेपटि खवैचन ठुके लागि आजसम्म म त कविता स्वयंपट्टि न सम व्यक्ति ख साहित्यकार ख ठुकुल्या ख जिता ठुले ध्यामा छु छिउको भाषा लेङ्किए लागि छिउको भाषा हस्तान्तरण याको लागि छिस मसमे विकास या मागडु मत साहित्य विकास या मागडु वो चाहिँ संगीतीय माध्यम या मागडु संगीतीय माध्यम या नाम मगा ठौकुने भिजुअल या मागडु भिजुअल चाहिँ या नाम मगा ठौ चाहिँ कार्टुन प्याखन्छ अन्त्यका मस्टर चाहिँ मुटी नेवा खको दुचाके मागडु ओके अझो ज्या डब्लु एनओ
ठेन्या संस्था न्याजिले न्याजु सब बाने रेबटी सुझाव दिया हली न्यंकया छि नेवाट एकता याको लागि गुगो हली नेवा गुठी चाहिन्छ न अब चाहिँ आचो छा बजु अझ उप जायना मनु फामना पिन्टने ब्याचन सुभा योको सुभा जी चाहिँ नेवाखेले जनकवि व जपुगुथिया महागुथिया आया नायो राजभाइ जकमी जु ए जनकवि मखो लोक कवि sorry extremely sorry लोक कवि सुभा अहिले नक्तिन वम चाहिँ थो थुसिया जपु दिवसिया न योको बिन्दना ढासे का जपु दिवसिया लस्ता नसक्न पिन्टना नि चाहिँ दिले ठाउँ छु निगब ठाउँ चाहिँ जपुला फिया चाहिँ थन सिपिनि नने भयो दु जे खना छन छटा एकदम सुभा नि जे फिल्म अफ द फिना दिला anyway so now just to end this the session we will have a short display of our sponsors ji ja bigaban data pin चाहिँ शिक्षा छौ चाहिँ थना बो ने भयो जी चाहिँ मेरो सेसन भने थो दिपा चाहिँ सिरल 10 मिनेट लागि चाहिँ जी चाहिँ थना बिगाबिन छ अहिले न्यानो एकैको सुवास किन्दा Introducing 2 PM Akabari chicken, the hottest noodles of Nepal. No, the guy, इसका 70 को जाच रही होगा. No sound, Sanyukta. सिकिन्छ चाहिँ ठ्याक्क बिचेर चाहिँ अनुलियन लासे चाहिँ फैल चाहिँ अघि चाहिँ हातमा छक्का चाहिँ थो शेयर गरेको त या दिखाइ चाहिँ अनुलियन दिमते थर्मस त Welcome to the Niti Mandal Mahabhyara. This temple built in 2009. We're teaching the Buddhism, we're teaching the practice, we're teaching the meditation, we're bringing the other different teachers to talk about the Dharma things. We keep it alive, that traditions in United States here in Portland. We establish all the different places where you can have the powers, and we buried a lot of vessels
to protect this temple. If you want to learn, it's about a half an hour that ritual to take, and after that people sit and meditate. And any kind of traditions, if you're doing practice meditation, this is a place to sit and meditate. That's what we do here. Everybody welcome to join and meditate, and if you want to observe, you can observe. If you want to be initiated, if you want to be part of the ritual, we can teach you how to do it. It's called the Nitya Mandal Mahavihara. We name after the Newah Institute called the Dance Mandal. Dance Mandala, it's in the Sanskrit term, it's a Nitya Mandala. You can contact with, it's in the web page, www.dancemandal.com. You can find that. Introducing 2 p.m. Akabari chicken, the hottest noodles of Nepal. The vision is to make Makuse a global Nepali brand that identifies the delicious taste of Nepal worldwide. Our product range, I believe it ranges from an authentic, untouched past, then journeys into a playful present, and then leaps into an innovative and exciting future. So to start with the authentic past, we have the Pushtakari, hard candies made out of kua. If you ask anyone that grew up in and around Kathmandu, say about even 10 years ago, this would be the taste of nostalgia. Then we journey into the playful present with the gunpak, again made with pure kua. It's a familiar taste for many people, but we have played with it a little. We have it infused with rose water and gunpak, one, and another with a kick of coffee with mocha. So many people have their favorites. I am equally divided. I like to use it as a spread over my toast sometimes. Best served warm, but also tastes pretty good cold as well. And finally, we leap into an exciting and innovative future with the cookies. So we've got 2 cookies. One is a crinkle chocolate cookie with a gunpak center. We've got very large cookies. And then we've got another one with oats, pumpkin seeds, cranberries with gunpak infused throughout. Goes very well with a cup of black coffee and is my favorite way to start the day.
Introducing 2 PM Akabari Chicken, the hottest noodles of Nepal. U.S. West Coast Taekwondo Hollywood has been in the Hollywood area since 1995. Our mission is to provide a quality martial arts education for any level of student, either young or old. We like to specialize on the family experience. It's really neat to come to class and see a whole family working out together. All of the benefits that they'll receive from this program, the health benefits, the stretching, the physical activity. But most importantly, you'll find that the techniques that you'll use every day will include things like courtesy, integrity, perseverance, self-control, and indomitable spirit. Those are great tools to have. Those are great tools for your children to learn. The Yeti, or abominable snowman, is a mythological creature said to inhabit the Himalayan region of Nepal and Tibet. Stories of the Yeti first emerged as a facet of Western popular culture in the 19th century. And now, introducing Yeti Restaurant in historic Jack London Village in the quaint town of Glen Ellen. Their creative menu is a Nepalese Indian fusion of both cultures. Their kitchen draws from the best from Sonoma County by bringing you fresh, seasonal produce, meats, and seafood, offering traditional appetizers, soups, salads, fragrant tender curries, tandoori sizzling entrees, and a number of vegetarian dishes, chutneys and pickles, and desserts, international and local beers, in addition to an
extensive wine list. Their impressive non-breads come served on a giant silver platter. Yeti may be a legend, yet it remains one of the most famous creatures of cryptozoology. Open every day. Make your next destination to Yeti Restaurant on Arnold Drive in Glen Ellen in historic Jack London Village. तोधुंगु महासागरीय लोद्रिया बेलायत साउथ मटन पाखे बना बले लय तोधुंगु वाफे बोला जीपी तनागु रिबन लोख सातुए उनको सन धेजुया भूपिला धाइथे ब्रह्मत ज्ञान गायत्री मन्त्र जपायन छ उगले जी भाग्य वस्तुए मजिपा लाखे आज याता लुमंका ग्वाली जीवे बाला ममेचु जीवे दे दसा नेपामिते तजी गुनखा इन्या पुनिया दिने छंगु शक्ति खना मनु त छन्त पूजा त हथा चल मनु तेगु पूजा तनी पिन्छ थगु कर्तव्य लो मंकी थगु मतिना या त लो मंकी मते जिगु स्वापु अजु चाइपु सेचो लाखे वो मनु या मतिना छंगु जिगु यचुगु मतिना लो मंकी पी सकसिता लुमंका बीता प्याखा हुहु ले ताता जी मजीपा लाखे हन लिहावे जीवे बाला ममेजु जीवे जिउ दिपा यी सिरेदुङका मेरो सेसन पखे जीवन या मेरो सेसन चाहिँ आज यो दु culinary heritage taka Newah nasa to sa bare Newah nasa to sa yu meu session nakdita ji inapia America mezu Medina sakya malle juya Medina ji si kamdi jidise as Jojolapa saksita laskus ju socler tadu kala tadu हजुर Laskus saksita World Newah Organization ya ninu kunu yagu jachongu to pekwagu World Conference ya ninu kunyagu jajo ya songugu session katha culinary heritage ya session chair ya छिकपिनीको न्याने जी मेदिना साकेमल्ल उपस्थित जाचनगुदु विश्व न्याङ्क अन्यवाते थपिनीको सभ्यता जाति गौरव व संस्कृति या मसिकाएर छायाएको नीति थपिनीको कुट न्याका वयाचंगुदु ठोहे झोले नेवाते त छटासतया थपिनीको भाषा जाति संस्कृति प्रति जागरण बोलङ्के त निस्वाना तगु थो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नपाङ्गु डिकेट कथा न्याका तगु थिथि ज्याजो आपल सराहन योग्य जु थोय मध्ये थौ ज्याचंगु थो सम्मेलने विश्व न्याङ्क नेवा विशेषज्ञ त भर्चुअल माध्यम कथा नेवा इतिहास कला सभ्यता शिक्षा नसात्वसाय विषय नेनेकने यागु थम सिगु ख मेपिन्त नकनेगु ज्याचंगुदु थुकी नेवा सभ्यता बारे जागरण बोलङ्केगु खसा मेखर नेवा संस्कृति सभ्यता बारे जानकार दुपी मनु तेतन न्यने हेगु ख आ ज्याजो न्यने न्याकेगु झोले जी थौ खेले थगु खेले तस्क नाजाम भाजु विक्रम वैद्य या त बुना चोनागु दु वेकन थ उगु नेवा
culinary heritage या ठाउँ ज्या पाउजना जाइतंगुदु वेका यागु परिचय ब्याजना वेका Oregon Culinary Institute thama lead instructor juadisa Le Cordon Bleu teacher of international cuisine na juadi American Culinary Federation e weka thama board member na khasa ale Nepalese food heritage ya weka author na kha bhajumejupi ji Bikram Baideju ya ta laskusiana chuna Bikramju chapinigu japau ke ne ta jama 15 minute biguji ale east date tengu 2 minute nya ji chikpin ta वा चागुजी छपिनेको निम्ति आजी फ्लोर तोटा लस्कुस्याना चना लस्कुस दु विक्रम वैद्यजु हजुर साउन्ड ट्याड होला ट्याड हो हजुर हजुर ट्याड जिठो स्क्रिन का शेयर हेर्ने छिको पनि पहिला हस् हस् ओ खण्ड हो स्क्रिन खने मोडुनी खण्डला खने मरुनी हजुर खने मरुनी 1 मिनेट खण्ड र अझै खने मरुनी 1 मिनेट नै त्यो कुन थो छु फाइल चाहिँ लोकली सेभ एन्ड दिइदियो मलाई और मको जिउ कुन यानो थो आले हजुर हजुर ठीक हजुर हजुर मलाई हजुर हजुर आ खने दत हजुर हजुर खने दत हजुर कासेगा हस् जो लता छिकपिन त योको सुबारो जेता ठाउँ निमन्त्रण बियो डेलनी ठाउँ चाहिँ थो जे मोस्टली चाहिँ स्लाइड चाहिँ इंग्लिशमा तैट्यो दो तर खल्याउ चाहिँ जे नेवा भान खल्याउ जे ठाउँ जे झेउ नेवा तेउ नेउ नसा सम्पदा विषयले खल्याटनो दो नेवा culinary heritage जे छौ mystical cuisine of the world गाटे दो ते दो था दासनी चाहिँ जे नेवा तेउ त्यसकै नापाला झिन्या तेउ ज्ञान सिपो अभ्यास नापाले चाहिँ छौ पुस्ता चाहिँ मेउ पुस्ता या त ल लाना वे चोङडो ठोए झेउ नेवा तेउ तरङ पहिचान ख उकी झे ठुकी त चाहिँ निरन्तर याना चाहिँ वने माडे चाहिँ जो ठाउँ विचार दुगा ला थो ठु विषयले चाहिँ गु छौ चाहिँ नापा ख लामा चाहिँ छुर रानी नेपाल मण्डलले दुनिया हजारौं वर्षले छे नेपाल चाहिँ थो फ्याली चाहिँ दुने विभिन्न छरछिमेकी राष्ट्रिय पि मनोटो वया चोना चोङडो ठुकारण छुरास्ने चाहिँ छौला लयो कारण ख व नेपाल चाहिँ मेउ छौ चाहिँ तरौं चाहिँ अब उब्जनी जुइ जोल जग्गा जमिन जोल अनि मेउ चाहिँ छेउ टिबेट व भारतीय गु छौ व्यापारिक केन्द्र छाड्ने वो चिज चाहिँ नेपाल चाहिँ ठु एभिडेन्स ठु चिज चाहिँ युनान प्रोभिन्स चाहिँ कया चाहिँ जे बंगाल तक चाहिँ गु नापा टियु चाहिँ ट्रेड जिउ ख उकेन सिडु खण्डु घाटो ला ठुके याना गुल्नो छिटा वया बसोबासी जुया चो चोङडो ठो फुकुसा चाहिँ छिटा कन्ट्रिब्युट यान चोङडो रह्यो चाहिँ सिडु ठुके चाहिँ याना छे नेवाटे ठये युनिक कल्चर चाहिँ बने जुया चोङडो उके माथि चाहिँ छौ culinary चीज है ठो कुजिन विषयले चाहिँ खाना नेउ नसा चाहिँ छौ युनिक किसिममा चाहिँ छौ नेपाल गाले चाहिँ बने जुया चोङ खण्डु गाखला ठो चाहिँ छौ culinarian ते हिसाबमा चाहिँ मेउ छु जो रानी छे नेवाटे हो छौ झेउ फुड छौ नेवा छे नेवाटे चाहिँ नेउ ढेउ तस्कै प्राथमिकता ब्याटे डाउडो होला छेउ कल्चर है झेउ नेउ मरेको चाहिँ छुन आगु झे सभ्यता यो खलाउ ख छ ओ छुन दे मका अब नेउ हे देया चाहिँ सभ्यता सुरु जोगा वो टेम्पल न देखल झेउ चाहिँ बाछै बाजा थाउ जुल फेरि हरेक चीज कल्चर डेभलपमेन्ट गुल्न जुया चंगलो वो चाहिँ ओ छौ चाहिँ छुके सिडो हाँस्ने झिरा अस्ने जुल अस्ने अन्नपूर्ण अझै दु गडेस अफ ग्रेन या ठेठे टु मलाई आउके एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज चाहिँ झेउ कल्चर केना टेटाउडो मेउ छौ चाहिँ बिहा चाहिँ जागे जान क्यु रे टेटाउडो ओ थाहा से चाहिँ छौ इम्पोर्टेन्ट चीज चाहिँ बिहा टेटाउडो छाराने नेचर ना भन मेउ चाहिँ झेउ फेस्टिभल जुल छौ उके चाहिँ मनसुन यु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ दो अन ठरे रे थे झेउ नेउ नसा चाहिँ गुल्न जुल यमरी पुनी रहे झेउ क्वाटी पुनी रहे ना बिहा टेटाउडो हन गुलिन
जे जात्रा त जोला बिस्का जात्रा भोट जात्रा जोला सिटी नख यन्या पनि देउपर्दा याव गुठी संस्था चलाए याव ठुफुको छिच नेउ मरेको छुए चले जिमका नेउ मन त सुनो वइ मको जो बिचार होला त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बिमा तर ठुकै ढस्कै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जे नेवाटे कल्चर पार्ट लगाइदिनु छुरा छिने जे नापा कलनरी स्कुल वना चाहिँ जे थय सरप्राइज जो कारण छुरा नि छेउ छौ फुटु बइ गयो छौ सरी ठुक छेउ छौ मेउ चाहिँ जे खलाट नौ ठु फार्मर्स मार्केट हेउ छौ गुलु कुडु ख छेनेवाटे हो वन तस्कै इम्पोर्टेन्ट ख झिउ नापा चाहिँ झिउ ठा ठासे चाहिँ बिहा टेटाउडु ठा ठासे चाहिँ ए ठन देखियो अन मिउ ढेउ डेका टेटाउडु जस्तै किला गल्ल जुल असं जुल ठटे ढ्या चाहिँ मेरो छौ चाहिँ जे ट्रेडिसनली चाहिँ छुप ट्रेस ब्याक एन्ड अडु ढानी जे मस्टर्ड ओइल युज याव जिन्जर युज याव क्युमन याव हरापा सिभिलाइजेसन तक नापा मिलेजु चाहिँ जे खना चना जुगाला अहिले छौ चाहिँ मेरो छोरा नि छिस हान चाहिँ घुल्न मसला युजे घुल्न खाना युजे उकेर चाहिँ छौ मेडिसिनली हिसाब न जुयाचौँ खण्डुगा फुटु बैगर हाल्गा हाला अझै ठो छौ म्याप ठो सौ सिडुके कि चाहिँ गु सिक्रेट प्लेस होला छेउ फुटु बैगर धस्के चुएटल्ला अझै उके चाहिँ सेनिटेसन इम्पोर्टेन्ट छ एकदम ब्याटेरहरू उके चाहिँ छौ कारण मेरो छोरा नि स्मोक कोही तल्ला जसलाई स्मोकी जुई छे तले चाहिँ बाँलाई मुखो उद्या मेउ स्मोकी छौ कुनी छौ न ठा बाँला जुया चौँडो मल्ल तालिने चाहिँ ठो मिडिएबल टाइममा चाहिँ एकदमै छौ ची जुई मल्ल पाले चाहिँ ठो फुटो बगै नियम त चाहिँ चेन जु खण्डुगा उके चाहिँ दसके टरौँ चिज चाहिँ छु खण्डु राख्ने चाहिँ ठो हाइजिनिक सम्बन्धी हाइजिन आठौँ हिसाब रुल्स त गुल्न मोडर्न रुल्स त हो वुड रुल चाहिँ ढापा खण्डु हेउ चाहिँ सिडुगा ठो ठुकै याना चाहिँ छेउ फुटु बैगले ठुकै जुल दसके खलामा चाहिँ छुरानी छिस नसला कामा ढका ठाइ मलाई फुटु बैगले उनीले नसला कामा ढाइ लाली सिली अनौना चाहिँ गु क्वा नेमा हेउट्यो खोउको चाहिँ खोउको क्वाउ खौ मिले याम जो ढेटाउडु फुटु सफाई आउ ढेटाउडु उके चाहिँ रुल्स त दो फुटु गेना सफाई आउ बैग गेना सफाई आउ ढ्यो ठुचित त चाहिँ झेता नौ ठौकने नना वना चौँडुगा मेरो जुल छेउ लानेउ खै यो कुसा चाहिँ क्वेसन मार्केट हो छेउ लानेउ होला थो छान लानलले त्यो छि जिठु पिक्चर छौ डेकोडु लेफ्ट ह्यान्ड साइड कट अफ बफलोज एन्ड द क्युजिन ढगा झिउ गु दुख मे छम मे न चाहिँ छौ चाहिँ यक्को परिकार चाहिँ खाना देखिछु झिउ अछिले उके हान ठठो ना ब्याटेरहरू ठुची चाहिँ वेस्टर्न सिभिलाइजेसन जुया चोङडु छ ओ छिठा नापा चाहिँ न उ चोङडु मेरो छौ चाहिँ छोरा नि बफलो वाटर ठो मेयु लाने छु फाइदा डु रासिने चाहिँ उके कम फ्याट जो ल लो कोलेस्ट्रोल जो हाई कन्टेन्ट चाहिँ अछिडो हाई कन्टेन्ट चाहिँ प्रोटिन दो मेरो चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ झिन्यवाटे चाहिँ नेउली चाहिँ हेपुजी चाहिँ छुरानी तखा छा नेउले ढाले सले सन्या खुना दो तखा नेउले चाहिँ गु पौष्टिक आहार दो छौ उके चाहिँ शरीर र स्वास्थ्य त हड्डी त स्किनी त चाहिँ तस्कै बाँलाई ऊ कारण छुरास्ने चाहिँ छौ नेचुरल कोलेजन दो कारण ख ला अब यहाँ कोही चाहिँ झिस छे नेवाटे सो से ताटो नेउ चलाउँदो यो कुनेला मजो वे चाहिँ नापा भ्याबले चाहिँ छकु नेउ नि ढका ठेटाउदो ऊ कारण न तस्कै बाँउ चाहिँ ऊ के छुजी ढार्ने भाइटामिन ओ मिनरल आइरन ठो गु छिटो माउ ख पौष्टिक तत्त्व ऊ चाहिँ खण्डुगा झिउ नेवाटेउ जस्तै 200 प्रकार छौ युनिक ख ला 200 प्रकार अफोर्डु ओके चाहिँ हरेक ठोके माउ झिटो चाहिँ शरीर र माउ पौष्टिक आवश्यकता ध्यानेना विशेष नेउ नसयाना डेगटेटहरू जस्तै क्वाटिजुलगा क्वाटी डेकिबले चाहिँ गु स्प्राउटिङ यही ऊ कारण चाहिँ उके चाहिँ फुल बेनिफिट वो स्प्राउट याबले चाहिँ झिटो पछि याव पाचन क्रिया वो झिटो बढी त माउ चाहिँ एकदमै तत्त्व चाहिँ बिगा
अब वो प्रेसर कुकर ढेका नेबले वो डाइरेक्ट ओभरनाइट चाहिँ वो याबले योको पागा अनि मेरो चीज जुल चतामर ने टोटली ग्लुटेन फ्री ख होला वो गेना तस्का बाला गेना स्टार्च वो प्रोटीन कम्बिनेसन या रे जो ढेकटे रौ उना वो या चाहिँ छि मोमो जुल हन मोमो झोल त या ने जुल खुटी डेकी ढेडै मेरो छौ छिउडु यमरे यमरले छि म्या शेयर अल्थे खला म्या तस्का बालाउ तर यमरे बाह यको दु तर ठुके चाहिँ जे चसो छौ बिया चुनौडु ठो चाहिँ आज वेबसाइट जे सुन जे पिकाउट चुनौडु नजी ले मेरो चाहिँ छु चाहिँ ग्वार्चा मरे रह्यो चाहिँ छि मेरो छि क्वाटिपुनी नापुले ननै मेरो टाइम ननै वेज होला जसके नेपुसङ चाहिँ छुरानी छि सगबे चलन छि नेवाटे यक्को दु तर वो सुब्य जा याबले जुल मेरो जसके उके चाहिँ जन्मदिन जुल केटा पूजा 12 जंको नोड जुल उके मरेको मगा ठोछौ चाहिँ यो हान छौ तान्त्रिक हिसाबमा स्वेटरहरु लाखे नेउ ढेउ चाहिँ चलन मेबी सुयु पाखेन खनमुरो स्पेशली लाखे वो एला बिरी चाहिँ झिरा नेवा भ्याली चाहिँ खण्डुटे चोन्डुका ठो चाहिँ आज जस्तै ठोटेउ जुल ह्याङु ठोटेउ जुल ठो चाहिँ तस्को युनिक कल्चर खगा जे चाहिँ समय बजी जुल समय बजी चाहिँ नकेबले चाहिँ छुले रास्ने समय बजी छौ युनिक सिम्बलाइज्ड हो उके चाहिँ सेरोमनी ब्लेबले नेउडु गु घाँसा त उके युज है ठठै किसिमको पौष्टिक फाइदा चाहिँ उके खण्डुगा कारण छुरानी आज छिसम बजी ढालगा बजी नेउड हेउ छ कारण छ नि उपचे या अफुका उके चाहिँ हाई कार्बन डोल डिहाइड्रेटेड फुड या गने जो उके हाना छौ मेरो छुरो रासिने चाहिँ जे खनाउ चाहिँ वो ट्राभलिङ याबले चाहिँ एक देश जे नेवाट नेपाल चाहिँ व्यापारिक हिसाबमा चाहिँ ट्राभलिङ याबले बजी जना चाहिँ होला उके जुलगा मेरो चाहिँ हाना चाहिँ गु लानै ला चाहिँ पालु झोल त या लान स्पेशली छुला डेकिबले वो डेकिबले चाहिँ छित पचे या अफुका पालु नै पालु चाहिँ ग्यास एसिडिटी चाहिँ बचे जी झे चाहिँ मेरो चाहिँ एला भटी चाहिँ टुनी उके चाहिँ पाचन मिटर चाहिँ बल्ला कि अठे ढाटे मेरो चाहिँ थाबु नेउ चलन जुलगा छे वो छौ चाहिँ छिउ ल्याभिस ग्यास्ट्रोनोमिक ख वो छिउ नेवाटे कल्चर है छिसम वो सिस्टम चाहिँ तस्कै बालौ चीज ख ठौ चाहिँ आउके 84 व्यञ्जन भाइ छौ छिउ गु वर्तमान स्पेशली ब्याओ म चाहिँ जानकीले चाहिँ छिस नकिउ यान्ट्रिटो वो छौ चाहिँ तरंगे गजब ख उके जिन हाज ढेथे झिउ मेटा इंडिया न जे खना ठो चीज तर ठुके चाहिँ गु झि नेवाटे या खे ला बिउ चल एला बिउ चलन चाहिँ वो चाहिँ मेउ अचिले चाहिँ खने मरोगा अन टिपिकल डिश जस्तै चाहिँ भेनेउ चलन ठु भेनेउ चलन चाहिँ झिउ छौ चाहिँ जिउ चाहिँ दसको स्याट माइपुस चोङ चाहिँ खन दुई चोङ आ छुरा नि झिउ नेउ भेनेउ तरिका चाहिँ चेन जुजुङ हुन चोङडो ला स्पेशली ठोला 15 से 25 कोही किसिमको भेनेउ वो खाना तेउ चलन दो तर ठो सिस्टमैटिक गु सिस्टम दो वो चीज चाहिँ तनाउन चोङडो जे छौ छौ फोटो तेउ दो ठुके चाहिँ गु छौ छौ रिमेड हो वो छौ छौ कोर्स हिसाब ख वो चाहिँ जिउ जिबी एज अ culinarian टेस्ट यो हिसाबमा चाहिँ गेना स्वीट हास्ने हो छौ फ्लेभर कम्प्लिमेन्ट गेना बेटेटौ दो कुकिङ टेक्निक र गुगु अप्लाई एन्टेटौ दो वो छौ जिमसँग स्वेउ जिमु ज्याख वो चाहिँ एकदमै मिलेजुको डेकोटेटौ दो गु चाहिँ झिसँग चाहिँ वो हंकी मुजु ठे चोगा होला ठो चाहिँ मेउ छौ चाहिँ जे खनो चाहिँ छुरा हेर्ने चाहिँ भनी दाजु भनी नाया भनी जे होला झिउ नेवाटे छौ उपाधिया बेटर रोड शेफ्ट र छौ भनी दाजु रे वेक अप चाहिँ लास्ट डे वो या चाहिँ छौ न छौ सिग्नेचर डिश बी है वो चाहिँ तरङ चीज ख वेट हाथे चाहिँ ठो चीज चाहिँ ठनो चको झिउ
देश चाहिँ म के ठोर चीज चाहिँ ठन वेस्टर्न वर्ल्ड न ततरङ ल्याबिस अचिनले चाहिँ शेफ प्रेजेन्ट 2 मिनेट बाँकी दनी हजुर हस् मेरो जुल आठो लाखमरी मरी चाहिँ नेवाटे मरी चाहिँ छौ युनिक ख गुलिन मरी त दो फुक मरी ला ढाफै मको तर लाखमरी छौ चाहिँ युनिक ख वो छौ चाहिँ ट्राभलिङ याद न अफ उ चीज जुल उके चाहिँ फुल प्रोटिन दोगा उके खारन छारने राइस जुल अनौना चाहिँ जाकिचु म्याचु अन स्वीट वो छौ चाहिँ आठौं कुनै चिस ढाटे छौ प्रोटिन बार ने ढाटे ख वो नाप नाप लाखमरी बिया यंकी छोइबो नि ढा ट्राभलिङ याबले वो कारण दुका हो छारने वो फुल प्रोटिन हो अन सुगर दो अन आ न्यावे जुसा न आ ठाउँ चाहिँ आ छेउ मोडर्नाइजेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कुछ चीज त छेउ प्रिजर्भेसन चाहिँ तनाउना दो न्यू नेक्स्ट जेनेरेसन चाहिँ ठो छेउ चाहिँ हनाउना चौंडो ठुके जिउ बिचारा इंटरनेशनल स्टेज यंकेमा छेउ नेवा खानाइ त गेना चाहिँ बच्यामा विनोद जिउ जी मिलेजिया चाहिँ ठो युनेस्को हेरिटेज यंकी र्या जोजिया चुनौडो ठो ठुले र्या जी ठाउँ बिदा कया खला ट्विटर को चाके जिदा सुबार छिकपिन दा पाकिस्तान ज्यू यको सुवादु विक्रम वैद्यजु छ पिन्स ची नेवा नसा तसा यागु वैज्ञानिक पक्ष केना थुके यागु महत्व थगु जेनेरेसन या त अझै बालक सिके त गुहालिया नदी त ठोय जोले जित छगु खढ्या मास्ते होला छ न झिगु नेवा दे यागु सभ्यता तस्क ए प्राचीन खला अले तो अमेरिका दे ढागवे मरुने बोले जिठ्या लाकु दरबार बने जिंगला उखे जुइमा सायद थन नेवा तेगु ठो जिवे छेले धाले थन किचन त फर्स्ट फ्लोर जि मखला अले उके थन छे छु किचने छु देखल कि छे छक्का तरकारी अयो बास होइ छु तले सेकेन्ड फ्लोर कोठा त हजुर वे शायद इमसा चाहिँ अझै सिग्निफिकेन्स त मठुली जुइमा सायद झिगु थो थुजोगु गरिमामय इतिहास दुपी झिगु नेवा त्यसमा विश्व न्याने थपी नेवा खदैगु गौरव बुलङ्केगु प्रचार प्रसार याए माथे चुना ओके नीति थो WNO पाके आपला ज्या चंगुदु अजागु ज्याजोले झि सक्सिया बोती अपरिहार्य ज्या चंगुदु यो कोइगु सुबादु विक्रम वैद्यजु तस्क बालागु प्रेजेन्टेसन छपिन्छ हया दिल जी वेक यागु लागि छु क्वेशन त दुसा थो फेसबुक अले जुम यागु च्याट बक्स ए तया दित इना प्यान्चना सकोमे भाजु मेजु पिन्त आथो प्रोग्राम अझै न्याने नेके त जी आ थो ज्याझो यागु सेकेन्ड प्रेजेन्टर नरेश ताम्राकार जु या त बोनाचना नरेश ताम्राकार जु यागु मसिका बीके मासा वेक sorry वेका बुद्धिस्ट स्टडीज या रिसर्च पार्टनर ज्यादी युनिभर्सिटी अफ टोरन्टो रे लिसे क्यानाडियन नेवा गुठीले ट्रेजरर न ज्यादी अले नेवा कन्फेक्सनरी एन्टरप्रेन्योरशिप रे वेका न टोरन्टोले बोटिकाया चना गुदु जी नरेश जुया त न वहे नियम न्याङ्का चना छपिनेगु ज्यापो लागि 15 मिनेट दै अले 2 मिनेट बाँकी दै बोले जी छपिन त जनाउ घन्टी थे बिगु जी रमेश ताम्राकार जु छपिन त लस्कुस्तो छपी म्युटे ज्या चौ दु जी नकुनी छन कोलेन हजुर यो कोइको धन्यवाद छ त Thank you very much for providing me this opportunity to share my experience and ideas on Lakamari. And in the meantime, I'd like to just thank entire WNO team and this conference coordination team, and especially I would like to thank Sangjoju for arranging this all. Now I'm going to start my presentation and using Nepal Bhasa for no reason. So let me share my screen. I'll use screen Khanedula. हजुर खनेदु जुटो विषय ठाउँ चाहिँ to promote and preserving Lakamari. जी चाहिँ अब नेपालले
머리걸음에 가 오이사거나 터는지 버리거리 저 라크머리 프레젠트 라크머리고 메메오 미타이운 지네와 미타이우제 니 터나 cultural use wo ale promote ya using yana sunu gudu a chi sai to presentation ne bani to sai lakhmari jin so chi rong nakcha zo la introduction ne sai a chi lakhmari lai la chi to Newah using so एकदम परंपरागत मिठाई का नाजा नकिनी या chi to become very general area अनुसार so unique मरिना का so chi Newah विषयले चाहिँ to cultural na value rupi chीज na का अहिले चाहिँ ठो नर्मली ठो चाहिँ लाखमरी ढाँचा बजार टपाउ टरो साइज चाहिँ चिज मननियाजी अहिले लाखा ढाइए छौ खास छौ ठुके मिनिङ ए छौ टरो अब बिग इन साइज है चाहिँ मिनिङ खौ वे हिसाबमा ठुके ठो लाखा तेउ थलै टटको न अझ छि लाखा बाटा हेरि छि साधारण किसिम साधारण साइज होला छि बाटा जरा हेले ठो टगो बाटामा हो या उ बाटे त तको न लाखा बाटा त्यहाँ रे चाहिँ चलिन्दो अहिले अथेन्डो झिटो नेवा कल्चर सम्बन्धी चाहिँ झिटो मिठाई त नयोको भेराइटी हो छम चाहिँ झिटो संस्कृति विरताइरी अनुसार अब डक्को मिठाई मध्ये लाखामरी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मेन छो हिसाबमा मर्डर स्वीट न था अहिले लाखामरी चाहिँ आज झिटो विभिन्न किसिमको नडु विभिन्न साइज न होइ अहिले झिउ चाहिँ ठो कल्चर चाहिँ लाखामरी चाहिँ विभिन्न किसिमको आइटम विभिन्न कल्चर चाहिँ झिटो कल्चरली युज न ज्यासुन्दु अहिले उके माथि छि नेवा त्यही चाहिँ विभिन्न जात नेवा जुन विभिन्न जात मध्ये विभिन्न जाते चाहिँ विभिन्न चाहिँ लाखमरी चाहिँ विभिन्न पर्पसमा चाहिँ चल्न जाउँदै उकेनी चाहिँ त्यो 38 छौ लाखमरी 38 पर्पस चलाउ हेर्न छि चलन एक वाइडली चाहिँ वाइड भेराइटिज पर्पसले चल्न जाउँदै अथि खजाना न छिटो लाखमरी गुब्लेन चाहिँ चलेजु अथवा गुब्ले सुरुजु रहेको चाहिँ छौ ऐतिहासिक छु यो रेकर्ड बुलाएर यासुले चाहिँ आटक चाहिँ खास ठुले चलेजु ढ्यारे हेर्नु सिमहरु ठु विषयले अहिले छिटो 6 डिसेम्बर महिना 9 तारिखे छौ पत्रिका न न्यूज बोर्ड अहिले छिटो ट्रेडिसनल युज विषयले प्लस चाहिँ उकेन मेन्सन आदोडुगी ठोकुले सुरजु रहेको चाहिँ सिमहरु त्यो चाहिँ मेन्सन आदोडु तर जिसु अनुसार त्यो यो को नाम चाहिँ चले जाजौँ अथेन्डो ठो अटके भेराइटिज हिसाबमा यो किसिमको डोलेज अहिले चाहिँ त्यो इन्ग्रेडिएन्ट्स व न्यूट्रिसनल फ्याक्ट थोरै विषयले पति चाहिँ बिरुम जुनन परिवरी बयान देखौ वेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन मुख चाहिँ त्यो लाखमरी छौ चाकी छु राइस फ्लोर अहिले म्याच छु ओके छौ किसिमो बने जिनोडु अथेन्डो हाना छिटो होल व्हिट छुजु देखिउ न छौ तरिका दो उन्यु र न छौ लाखमरी किसिमले है समग्र रूपमा चाहिँ जिसमा त्यो राइस फ्लोर अहिले ब्ल्याक लेन्टल फ्लोर म्याच छु अहिले छोचु अहिले घिउ सुगर अहिले मोलासिस त्यहाँ चाहिँ थना चाहिँ साखन थाइले चाहिँ त ओके बनेजी अहिले सिस्टम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो हामो न चले गुलिसा अहिले देखियोलाई चाहिँ भरि त्यो बेकिङ सोडा बेकिङ पाउडर भरि पनि चले अहिले देखि ढंगा खाना चिनी लाग्यो देखादु खास साधारण त्यहाँ चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिँ भएको प्लस चाहिँ न्यूट्रिसनल भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बिरम जिते तो राइस फ्लोर एकदम लो सैचुरेटेड फैट दुज प्लस चाहिँ ब्ल्याक लेन्टलले चाहिँ आइरन कन्टेन्ट एजिया छो चाहिँ न्यूट्रिसनल भ्यालु हिसाबमा इम्पोर्टेन्ट छ अहिले मे किसिमको पनि त्यो लाखमरी जुन के त्यो छिटो छोचोदेखि उकेन फाइबर हिसाबमा हुन एकदम हेल्दी फुड छ अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो छिट चाहिँ त्यो शरीर लागि मा बी कम्प्लेक्स त प्लस फलोक एसिड त चाहिँ उकेन उपलब्ध जी अहिले चाहिँ त्यो विशेषण पछि चाहिँ त्यो खाउ टाइममा चाहिँ घिउ मोलासिस घिउ चाहिँ शाखा यो चाहिँ ओके कन्टेन्ट रहेछ छिउ पग्यो लागि न उके चाहिँ छौ सपोर्ट हैन छँदै त्यो हिसाबमा छिट चाहिँ त्यो हेल्दी फुड हामा युनिक फुड साथसाथै हेल्दी फुड नख नेउसलाई चाहिँ त्यो लाखमरी चाहिँ भेराइटिज ठुकै साधारण त्यो लाखमरीलाई थाहा चाहिँ लाखमरी ढाँस त जोप्सा चाहिँ भन्दैछ ठुकी तर लाखमरी चाहिँ त्यो जोप्सा छोजोको लाखमरी चाहिँ यो भेराइटी हो थोरै अनुसार जस्तै त्यो फोटो खण्डो चाहिँ त्यो जोप्सा नाउँछ ल अहिले अठेन्डो जिप्सा नाउ चाहिँ यहाँ थुप्रै ल अहिले मटर धाउ पनि त्यो ल त्यो चाहिँ झिरो छुचौँ देखियो चाहिँ जोप्सा हो जिप्सा चाहिँ जाकियो देखियो
जो चाहिँ प्रयोग नदेखि मोटी चाहिँ थो मठको ठु मठो यो चाहिँ पच्चा तबाउ साइज जुला चाहिँ हान चाहिँ फुमरे न ढाक ओके त खास मरि वयं ख अलि साइज हुन्छ न फरक न ढा अलि अठेन्डु छोचो देखि ठो ऐठा मरि जुल अलि ठो न्या ठो न खास मरिए ख अलि चाहिँ ठो ब्याइ टाइमले देखि छौ फरक किसिम उली लाख मरि चाहिँ छौ भेराइटी ख अठेन्डु ठो चाहिँ ब्या चाहिँ शेप जुल अलि ठो बर्ड चकुङ चाहिँ हिसाब जुल अलि ठो चाहिँ भन्छ अझ युनिक शेप चाहिँ ठो नाग बिने है ठीक छ ठो न ठो जाक छु देखि ख अलि ठुके त चाहिँ गन जिन्जेन अनुसार पछिटा मरि ध्या धाउन न्याना जस्तै कि चाहिँ ठो मेउ नेवा समुदायको चाहिँ ठिक पछिटा मरि ध्यान ठिक हो अलि प्लस चाहिँ ठो गुली मरि जुल ठो न जाक छु देखि ख अलि ठो चाहिँ आटी ठो चाहिँ ठो तपौपरी लाखमरि उन्तु इन्ग्रेडियन्ट्स ख तर साइज छिरोना देखि युज हो नि ठो चाहिँ ठो ना चाहिँ आटी रहदै ठो चाहिँ छिटो स्नैक साइज चाहिँ बने जे ठो अफो चाहिँ चलन चल्दै चाहिँ साधारण किसिमको स्नैक चले हिसाबले चलन चल्ली अफोर्ड तर मेरो चाहिँ ठो ग्वारमरी चाहिँ विशेषता चाहिँ खास छिटो ब्यायो टाइमले के अफोर्ड अफो चाहिँ छिटो साधारण किसिमको ने किसिमको चाहिँ चलने मरु तर ब्यायो टाइममा त्यो चाहिँ जाति अनुसार चाहिँ ठुइ प्रयोग न विभिन्न किसिमको ज्याज हुन खण्डु ठुके त अलि हैन कल्या मरिन ढा अलि निको मरिन ढा पनि त्यो चाहिँ चिनेवा जाने फरक जाति चाहिँ फरक पर्पस चाहिँ युज किसिममा नानो फरक खण्डु अलि कुलिउली चाहिँ ठो छिउ लाखमरी भेराइटी त टनाना हुन्थ्यो हुनुका गुलिसा चाहिँ ठो चिक्को पाठाउरी चाहिँ लाखमरी भेराइटी प्रयोग मो ठेन खण्डु जिन ठो ठोय चाहिँ छिटो कार्यक्रमको लागि ओके बुझेन मैले चाहिँ त्यो चिक्को पाठाउ चाहिँ जि अन्य नक अहिले चाहिँ नाप छौ चाहिँ ठो ठन क्यानाडा चाहिँ नर्थ अमेरिकन रिजन न्युज कन्फरेन्स यो चाहिँ छौ पब्लिकेसन चाहिँ डाक्टर पुष्पराज राजकनकारी चाहिँ लेखेन ठो चाहिँ ठोमरी विषयले छौ जानकारी चाहिँ खाना एजाना जी ठो थन छिन भएको भ ठुपरी ठो छौ आइटम चाहिँ गरे आउने थे मेउ छौ चाहिँ जी थन फोटो चाहिँ खगी मक्त सो टिकी मरि राउसन रो ठोन छौ किम लाग्नु रे ठो चाहिँ जिनेवाटे गुठीले चले प्लिज मरि ख थै किसिम गुलिउली छौ न्यू आइटमलाई चाहिँ मस्यु अथवा प्रयोग म या त नानो हुन्थ्यो अथवा ठो चाहिँ जी स्यु अनुसार भेराइटिज अफ लाग्नु ठो छ ल अलि सिग्निफिकेन्स अफ लाखमरी चाहिँ ठो लाखमरी ला दुख्या जनरल इम्पोर्टेन्स त्यहाँ चाहिँ ठो एसा न टुगेदर चाहिँ छिटो कल्चरल एस्पेक्ट प्लस मेमे एस्पेक्ट न चाहिँ इम्पोर्टेन्स खण्डो रहेको छ जी ठिक अथवा पहिलो चाहिँ कल्चरल एस्पेक्ट ल लाखमरी चाहिँ छिटो म्यारेज सेरेमनी विशेष हैन चाहिँ म्यारेज सेरेमनी चाहिँ चले आएको प्रचलन हो जस्तै गोइ बिङकेको इङ्गेजमेन्ट टाइममा चाहिँ नाभा चले आएको छिटो चलन हो ओके चाहिँ थयो गछ अनुसार ठु लाखमरी भेराइटीलाई चाहिँ मतलब मेउ आइटम चाहिँ थयो गछ अनुसार त्यही ख अहिले अठेन्डु लाख बिगु ठो चाहिँ लाख बिगु रे छि नाभा चाहिँ नेवा चाहिँ जाति ठो साकी बजार सारे पिन्जुल मर्जन कम्युनिटी पिन्जुल इमेले चाहिँ यो चलन हो ख तर 8 महिना पछि कम जो ओके चाहिँ लाख बिले चाहिँ गुलिसा चाहिँ जोप्सा मठन बि अहिले मर्जन कम्युनिटी चाहिँ गुलेबले ऐठा न लाख बि हिसाबमा बि ल लाख बिले चाहिँ ऐठा चाहिँ गुलिसा 6 लाख नि लाख 6 लाख हेमा चाहिँ one lot 2 lot हेर्नु 6 लाख चाहिँ गुलिसा 12 वटा ऐठा न 6 लाख न काउन्ट या गुलिसा 16 वटा न 6 लाख अहिले इमेज चाहिँ परवारको छ अनुसार गुलिसा चाहिँ नि लाख बिदै गुलिसा चाहिँ 2 लाख बिदै ओरा मतलब चाहिँ 32 वटा बिउ 64 वटा बिउ वो चाहिँ थै परवार अनुसारमा जिगु चाहिँ खाना अठेन्टु आठो ख्वासो हुनेको टाइममा न लाखमरी चलन जुरो उके चाहिँ करिब गोइ बिगु ब्लेन्डो चले सामान वेवे र आइटम तो दोरे जो खन्टुका अठेन्टु आठो कल्याण याकी छेगु अथवा सम्पेकी छेगु थयो छौ ब्याए चाहिँ नापा अथवा लिपा चाहिँ जिगु थो त्यो चाहिँ सामान उके न चाहिँ छिटो ग्वारमरी चले आयो खाउके चाहिँ टक्को चाहिँ आइटम चाहिँ छिटो कास्ट वाइज चाहिँ प्रयोग चाहिँ पछि फरक दिन आछ न त्यो साके बजार जर्बिन चाहिँ लाखमरी थासा न तो जोप्साउ मठो चाहिँ लाखबि दै यिंकी अले मर्जन बिन चाहिँ ऐठा यिंकी अले तुलादर बिन न मेयो किसिम न चले छिटो
नेवा खजाना छि थय जाति अनुसार विभिन्न किसिमको चाहिँ थय प्रचलनहरु छ उदाहरणको लागि छि म पूजा माने पूजा या तरिका चाहिँ छि जाति जाति अनुसार छि अडबाउन जानु फरक हो एजो कारण हैन थो लाखमरी न प्रचलन चाहिँ थय किसिममा चलिआएको प्रचलनहरु तर ओभरअल स्टेबले चाहिँ छिटो ठकुने पनि छ त्यो लाखमरी चाहिँ प्रयोग या चाहिँ पछि कम ज्यादा इन द सेन्स कल्चरली प्रयोग या कम ज्यादा हुन्छ आत भरिभरि चलन ज्यादा चाहिँ अन्य किसिममा त्यो चाहिँ स्नैक हिसाबमा गिफ्ट हिसाबहरु चलन जो त्यो कल्चरली चल्याएको कम जो कारण चाहिँ थर्ड ओपिनियन दु जाति थर्ड जाति पनि चाहिँ समूह चाहिँ निर्णय अनुसार त्यो फाइनान्शियली अपबर्डन जो त्यो किसिममा चाहिँ कतै आउ ख नभए जिउ ब्याइ टाइममा अफिस चाहिँ जि थय चाहिँ मेडिकल मुजु छैन लाखमा छपजको चले अब अवस्था छ उलेला अझ लाखमा नभन्नु अब नापा चाहिँ व्यवहारले चाहिँ योको तजी उसमा व्यवहार हानमा उले चाहिँ फाइनान्शियली बर्डन जिको त्यसमा को चाहिँ व्यवहार सुधारिया हिसाबमा चाहिँ कतै आउ ख तर चाहिँ आधा कोही चाहिँ त्यो जिउ चलचलन सेबले चाहिँ वो चाहिँ फाइनान्शियली चाहिँ बर्डन घटाएर चले कमी आएको चाहिँ चल्न खसान मेमेको कारण हान चाहिँ फाइनान्शियली चाहिँ बर्डन जिउ एक्टिभिटी ज्याज हुन्छ उ हिसाबमा चाहिँ कल्चरली चाहिँ थो बढिया कल्चरली प्रयोग या बढिया माथे चाहिँ जिसले त्यो फाइनान्शियली चाहिँ बर्डन जिउ किसिममा मक्की पर मेमे फाइनान्शियल बर्डन चाहिँ कटाफे वो सो चाहिँ चीज चाहिँ थन गरे पनि प्रयोग या कम जो कारण हैन जिउ चाहिँ विचार छ प्रयोग अथेल तो मे कल्चरल एस्पेक्ट चाहिँ छिटो थाहा गर्न कि उब्लेन आठो लाखमरी प्रचलनहरु थाहा भएर चाहिँ जिउ लाइफ टाइम इभेन्ट चाहिँ हरेक टाइम होइ जस्तै म सबले म चाहिँ जुजङको जुल ले ब्याइ टाइम जुल बडाबुडी जङको जुल मेमेउ चाहिँ तो इ आयो 12 टेबले न थाहा गर्न कि चलनहरु अयोले विशेष जना न तो लाखमरी चलन जो खण्ड अथेन्टो आठो जी गुठी भेयु अवस्था न लाखमरी प्रचलन जुगुडो अहिले अफना बनाबो हान थो छि मोरुबले छु चाहिँ छि कर्मकाण्ड याले न गुन जाते चाहिँ उब्लेन लाखमरी चलन हैन त खण्डो अब चाहिँ छि थथय प्रचलन अनुसार फरक पर्छ चलन त खण्डो अब चाहिँ सबिनीको 2 मिनेट बाँकी त नि हजुर जी हो त्यो चाहिँ फलाङको चाहिँ फोटो जी छ फलाङको चाहिँ थरे अब चाहिँ थरी आएको आर कम कुरा चाहिँ पछि कम जुगुडो अहिले ठो चाहिँ त्यो तौ मकने चाहिँ छौ बिहा मजुन त्यो 12 मटा पिमे समस्या चाहिँ ब्याजीले ब्यासीको सामान त त्यो चाहिँ रिलिजियस एस्पेक्ट चाहिँ आज कुमारी जादा न त्यो लाखमरी प्रयोग जुगुडो हिन्दू जादा न प्रयोग जुगुडो अहिले चाहिँ लक्ष्मी पूजा न प्रयोग जाजौ खण्डु अहिले गुलमरी न छि छो स्वस्थानी व्रत कथाले प्रयोग जाजौ अथेन्डु आठ सम्यकी पूजाले न अहिले चाहिँ पञ्चपक्वान या पूजा या टाइम न छो महत्व प्रयोग जाजौ मे एस्पेक्ट चाहिँ छो कन्सेप्ट कन्जम्पसन एस्पेक्ट वो चाहिँ एभ्रीडे स्नैक एन्ड फिंगर फूड हिसाबमा पनि छ प्रजत अफोर्ड अहिले चाहिँ गिफ्ट हिसाबमा न प्रजत अफोर्ड तर चाहिँ अहिले कल्चरली कमजोर साना टुरिस्ट पिन्ट न छो तो गिफ्ट आइटम हिसाबमा कम्युनिटी होना चले जाजो लोक ठाउँले आठो गिफ्ट आइटम चाहिँ ठन्ना न थ्याङ्क्समा चले जो अहिले ठो छो चाहिँ भन्छ विशेष किसिमको चाहिँ युनिकनेस हिसाबमा लाखमरी वो छौना एस्पेक्ट प्लस चाहिँ युनिकनेस चाहिँ नेवा कल्चर चाहिँ ढक्कै युनिकनेस युनिक के टाइममा जस्तै कल्चर जुल छियो भा जुल भाषा जुल मलाई चोसा जुल छियो आँखा जुल छियो पुसा जुल छियो टिसा जुल ढक्कै युनिक जो हिसाबमा मरि न छौ त्यो लाखमरी युनिक सेवे खण्डु प्लस चाहिँ आठो थन जिठन विशेष थन क्याना बेंगा थन 5 मिनट नाप्लाले चाहिँ मेमेउ मोरी ढक्को चाहिँ बरु मेमे कन्टिन्यू चले जो तर लाखमरी सडक चले जो खनमोर जस्तै फर एक्जाम्पल हलवा रे चाहिँ मिठाई कन्टिन्यू चले जो लालन बर्फीलाई मिठाईको चले जो तर लाखमरी सो जिन्छ जे चाहिँ मिठाई चले जो कन मखनी ओ हिसाबमा चाहिँ थोप विशेष ख प्लस चाहिँ ठुकै डेकी त चाहिँ चले टुल्स न विशेष जी गन यहाँ एउटा थप सन्डु टुल्स देखमा अहिले डेग्यु प्रोसेस न एकदम युनिक चीज जस्तै कि थो छोल चीज न मको छुजु चीज न मको छो चाहिँ सेमी लिक्विड चीज त चाहिँ स्क्विज ना सिधै अन खेलेन टेमाउ अहिले मेउ सो चाहिँ पछि सेप देखा देखि वो विशेष तरिका छ ल प्लस चाहिँ के मेउ सो हजुर सपिनीको टाइम जी जाग्न सिलेको मेउ सो नि तो स्टोरी आउलो भजा ताको स्टोरी आउन दु अथेन्डु आठो मेन चाहिँ थो चाहिँ पछि डिसअपियरिङ जियाजो कारण हैन पछि चाहिँ चिसमा ठुके
ठिकै कल्चरल युज चाहिँ घटना या उसको खाली सुव चाहिँ तो सोभिनियरको कारण पर्पसमा चले जाछौँ उठे हेर्दा त अहिले चाहिँ रिलिजियसपट्टि चले जाछौँ दु ठो चाहिँ क्यानाडा वेयर हुँगा जी थन याना जी एकदम छोटकरी था क्यानाडा वेयर हुँगा जी थन मफुजाय चाहिँ ठो प्रस्तुतियान दु जुन कि क्यानाडा गोटी सपोर्टेड जी सपोर्ट दु कारण वे या पट अहिले समय कार्यक्रम जी थन प्रस्तुतियान सनौ दु अफेन दु अहिले छिटो थन चाहिँ क्यानाडा लागा चाहिँ जिनेवा चाहिँ ठो ब्याज युले जम्बु प्रथम दे टाइम हैन जी ठो कल्चरली यु प्रोग्राम याना सनौ दु अफेन दु ठो चाहिँ आछि मफुजाय वो समय बजी त्यानी उतै ल अहिले ठो चाहिँ गए बिङगु ठो पामले ठो डको जी छन् क्यानाडा देखो टिक अहिले ठो छौ चाहिँ कन्फरेन्स चाहिँ जिम्स बयाजनेको अहिले ठो डब्ल्युएन कन्फरेन्स बयाजनेको ठो नर्थ अमेरिकन न्यू कन्भेन्सन एन्ड बयाजनेको अहिले प्लस चाहिँ छौ टोरन्टो युनिभर्सिटी जिम्स चाहिँ नेवा रिचुअल कुलिनेट कल्चर हाउस चिरो इभेन्ट हैन ठुके चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन न जिम्स याना गुरु अन्न जिम्स ठो पामले ध्या चाहिँ वपिङ पापिन चाहिँ ठो जिम्स प्रस्तुत नौका ठुके चाहिँ लास्ट ठो चाहिँ फोटोग्राफर एट लास्ट चाहिँ यु चाहिँ ठुके छौ कन्सर्न चाहिँ ठोकुने ठुके यो चाहिँ वे फरवर्ड छुलेर स्मल चाहिँ छौ जो छोटकरी चाहिँ आइरा त्यही छिन ठुके चाहिँ ठो गिफ्ट आइटम युरोपमा वो प्लस टुरिस्ट यो लाइक कम्युनिटीमा बढ्याउ अथवा प्रमोट या गरेको एक साना चाहिँ आतको चाहिँ कम्प्लिटली बिजनेस प्रमोसन बिजनेस यो एस्पेक्टमा म होला नि चाहिँ कल्चर प्रिजर्भ या प्लस जिउ स्किल चाहिँ जी बजाय यसमा याना हुन्छ ठुके चाहिँ नेवा पास भएमी नेवा संस्था र अथवा डब्ल्युएन छौ एक वाली दुसा चाहिँ अझ ठुलो प्रोजेक्ट आफै आज मेन कन्सर्न चाहिँ ठुके चाहिँ मेजर च्यालेन्ज लाइज इन प्रमोटिङ इट्स ट्रेडिसनल भ्यालु इन भेरियस कल्चर यो तो चाहिँ थो गिफ्ट रूपमा त म के थो कल्चरली युज या चाहिँ छौ तरिका देमा त हिसाबमा जीवित अनि त हिसाबमा दो गेलाई चाहिँ जिस मे पनि ग्वाले जी एक्सपेक्ट नाजनहरु यो चाहिँ थो लास्ट आइडिया ट्र्याकर चिपिन चाहिँ युको धन्यवाद थो न्याना दिगो नि अहिले थोय विषयले सुनियान कनि यानले माछा जिउ चाहिँ इमेल चाहिँ थन्ट्यागरो हजुर धन्यवाद जिउ एक 2 मिनेट अफ होनी जिउ धन्यवाद हजुर ओइ ख यको सुवादु नरेश जुया त जिगो यगु मरि लाखमरिया प्रमोशने छबिन्छ यको हेकुटा याना चना गुली छबिद यको लस्कुस बियाचना आ जिसा थना थो जिगु ज्यापो थना जुम व फेसबुक ए लाइभ होना चना गुली जिसा यको हे जिगु दर्शक तेगु कमेन्ट्स त न क्यागु जिके अपर्चुनिटी ज्या चंगुदु वहे चले जि आथना दक्लेन हापा विक्रम वैद्यजु या त थन वगु प्रश्न बारे छपिङ गुन्ह्यानेते वे कयगु बोलीले दक्लेन हापा विमल श्रेष्ठ जुनला चिपिन्त छपिन्त सुभा अन nice presentation daga dhai digudu lise what is the significance of tokha and nyakhunya daga nyana changudu uke bare badija prakasyan dilagi वो तखा रेउला खास सिग्निफिकेन्ट चाहिँ खनाउ खास सिग्निफिकेन्स गाल छु खास अपास कमहरु खास वो नै कारण छ नि म ओ गु छि विन्टर टाइम ए चाहिँ लङ टर्म चाहिँ खाना देख चोन मुआ के हिसाबमा चाहिँ विन्टर टाइम में प्रिजर्भ न यो को जी जुल कोल्ड फूड जी जुल वो जो चाहिँ ये चीज दैट है यूरोप न डू इट एस्पेक्ट है जेलो होला वो चीज अन्न न एनआईए वो न विन्टर टाइम में नहीं ख छारे नि वो गु छिट टोटो बडी त माउ ख विन्टर टाइम में वो एस्पेक्ट नेबले चाहिँ टखा नेबले चाहिँ छिट फुलु बडी बेगा वो छौ चाहिँ मुख्य चाहिँ खण्डु चाहिँ वो खगा अहिले संज्ञा खुन्ना नेउ छार नि हान संज्ञा चाहिँ ठोक्ने नो वर्ड दो उमामे रहने ला उमामे रहेगा थ फिफ्थ एलिमेंट है फूड यू एलिमेंट है वो खास उमामे खगा वे जे संज्ञा खुन्ना नेउ बोले गु वो पावर दैनी वाउ धेउ छौ दो नि वो उमामे धेउ वर्ड वाउ का वेगा दसके अहिले वो जे संज्ञा वो तखा नेबले संज्ञा कुना नापमाउ कारण छ नि वो छौ बूस्ट यालाई वो फ्लेवर कम्प्लिमेन्ट देउ वे खगा हजुर पलसा काई चना छपिनिगु क्वेशन यु बट आन्सर दट जुइदका
आज मेगु क्वेशन चाहिँ सुदीप करण जितियागु दाइचनगुदु वेकन चाहिँ जना दिगुदु कि 200 dishes are they only buffalo meat based or including vegetarian and bakery dishes as well? Question to you, Bikram Baidaju. 200 dishes are made. There are actually over 300 dishes if you include lakumaris and all the sweets include 350 or something like that. But to bichara चाहिँ we kana nacha naresh jiuna dhedel ni guli kisimi lakumari do we ja चाहिँ वो include या खसा तर खाना यो हिसाबमा चाहिँ 200 चाहिँ definitely do छाने जे काउन्टे एन्ट्री do रोटो गया चाहिँ over 200 चाहिँ do छाने नि हैन वो एकदम फ्लेभर कम्प्लेक्सिटी न do वे चाहिँ न ने मको खा वो लायु चाहिँ भेराइटी चाहिँ एभरेज 30 वटा चाहिँ ढुका 30 अलि चाहिँ 40 हजुर छपिनीको लागि मेगु प्रश्न चाहिँ डेभिड गेलनर पाखेदु वेकन चाहिँ छुनियाना दिगु दुधासा Bikramju, very nice illustrated talk. I wonder if you know the book by Per Loudon on food culture of the Newahs, which he prepared with the help of Prem Bahadur Kasa and based on fieldwork in Sunakuti. I also wonder if you have noticed the recent success of Santosh Shah on BBC MasterChef, creating new dishes, some based on Newah ingredients. Yes, that was Namaste, David Joe. Chita to ji go kitab chain dhaidiu kha ji wo mokhanani wo dosa ekdamai banlai kha ji nyano do tara ji thamesha चाहिँ bono morni we kayo kitab we ja चाहिँ jeta chu सहयोग दुसा धन banlai जो research को लागि अहिले ख सन्तोष जी चाहिँ जिउ कन्ट्याक्ट उन का वो खा वे खाना पा जो वेकै त यो कोही सुबारु खास चीज न वाटे अच्छी लेनो वे खाना वो यंचों दिवली हजुर अले आजी नक्टिनी थन फिस जुमिवे च्याट खना संयुक्त जिना धाइदि कि सन्तोष शाह जु न थौ थो कन्फरेन्स जोइन यागु कुत याना दिगु ख तर अफसोस वेकन मिले मजुली जोइन या मखन आज थन फेसबुक कमेन्ट पाखे भने छ बिन त रुक्मिनी मानन्दर जुन जिगु क्लासमेट दगा गर्वे नदी थन उत्तम कुमार मकाजु जुन चाहिँ very informative on Newah culinary heritage daidi gudusa doksiana balangu suwa bia chapinigu presentation ya lagi yoko suwa daidi gudu yoko suwa du Bikram Baidaju hakna chaka बिचाउन फुकिसेको पनि त फुकिस्दा सुबाडो हजुर आज पनि नरेश जु पाखे नरेश जु छपिनीको लागि क्वेशन तयार दिगु नापाङ्गु छले थन क्वेशन छगु वगुदु कि why the taste of lakmari varies from one sweet shop to other sweet shop? Is there any secrecy for that? Dega nyana chongodu. Weka nyana di mo chai. Weka gunaji. Thana delete ja chongu juli chema phona chana. Weka yu lagi choga answer daya disa ina pianchana. Ju ato ji lakmari degi chai to ingredients na to new kimo lakmari ta new kimo ma hola. Ale chai जस्तै कि जाकी चु वो म्याचु उया खसन गुक्ष्म पोर्सन मिल्याउ अले जाकीजु म्याचु सिधै मिल्याउ न मको छौ तरिका न ढुका जस्तै जाकीजु चाहिँ छिटो जु मक्की पहिला जाकी प्याका अले हाने उतो पेल्यामा होला अले म्याचु न म्याप चाहिँ पहिला प्याका सिला निना अले हाना उतो फिट्या मानिया just not just the best होला वो मिल्या न हाना फिट्या भए चाहिँ with the fluffy या वजुला अले उके पोर्सन जाकीजु गुली पोर्सन चाहिँ म्याचु गुली मिल्याउ अय किसिमना यो टेस्ट बनाउने प्लस चाहिँ अले छिटो छिउ लेन आज केले छुना अले चिनी टेबल न गुल्टको चिन्ट्यो वो चिन्ट्यो मिले मजला यो को चिनी यो को कभर जी अय किसिमना टेस्ट पायो ख अले तो न्यू किसिमो लाखमेला डेफिनेटली टेस्ट ल पाए पा जस्तै कि तो जोप्सा जिप्सा चाहिँ पछि तो हार्ड क्रन्ची जी because of made of rice flour and to masko dal the meal चाहिँ to motha अले ऐठा अले meal चाहिँ item into bird या बिहाचा देखो चाहिँ वो चाहिँ तो जुन देखियो जब बच्चा
soft crunchy ji uge swat चाहिँ पछि पाएका ए जान ख पायो तो हैन कुलिनरी ढाँचा त न आज जस्तै कि इन्ग्रेडियन्ट्स प्लस कुकिङ प्रोसेस चाहिँ थो एक्सपिरियन्स अनुसार न भरि स्वादलाई पाए तर बेसिकली चाहिँ आठो स्वाद पातन कन्टेन्ट वेज युज या तो न्यूट्रिशनल का अस्या का स्वाद पाइ चाहिँ धन्यवाद हजुर यो कोको सुबादु फेसबुक पाखे वना जनाजी थन रोडे साके जुन लाखमरी बारे योको जानकारी सिल धाइदुगुदु उके लागि सुबा धाइदुगुदु अथे रविन्द्र नकर्मी जुन wonderful Narisu need to introduce this in international sweet market धाइदुगुदु दासा यो वन प्रयास हजुर उत्तम कुमार माकाजु जुन in depth info about लाखमरी thank you धाइदुगुदु अले थन chat Zoom chat अनुसार चाहिँ थन कृष्ण प्रकाश जुन लाखाया अर्थ छु धकान्य न दिगुदु उके बारे न बटी प्रकाश यान दिला कि हजुर लाखा छौ शब्द जगत छ विचारले छौ टरो लेख्सम थि त चाहिँ अहिले आज मरिरहेला मरिया जलो लाखा म त्यास एजिया चाहिँ त्यो लाखमरी टाइप चाहिँ छौ टरो पनि लाखमरी टरो साइजो लाखमरी क उगेन चाहिँ जिथन न जिकाना चाहिँ थन इन्ट्रेस्ट जान्दैन पास पिसा चाहिँ म कुटो चिज रौ बजा चाहिँ ने अपिकित जनाजी अपिकित चिज रौ देगा म कुटो लाखमरी यो चाहिँ मटै मरै चिरौ देगा लाखा दै छौ जी प्रस्तुति आले थन छौ चाहिँ थैक्सम ओभरवेल्म जिमा कि तो टरो देखे जिमा जी एजिया चिक्न लाखमरी न्यन ट्याले चिक्न खला मकला थो थरी बजा फनी बेले बजा ओहो नङ चिज वाउ दैदेल नि वो अरे जुए मागा त नि शब्द तो लाखायो चाहिँ शब्द विक्समा न थन कामा थन चाहिँ सिकेमा एजना थु मरि टेउ थलै त न अले लाखा बाटा दै वो चाहिँ लाखा बाटा चाहिँ तगो साइज जी मरि चाहिँ 6-7 वटा जाङका यिङक्यु जी जुन कि वो जी प्रेजेन्टेसन ढाए कि साके बजार पिने चाहिँ लाखा यिङक्यु ढाए नि उले चाहिँ तो योको गए चाहिँ लाखमा टेकमा टपौ साइज अझ चाहिँ जी नापा नेपाली ज्यान देला छौ ब्याजीले थयो लाखमरी 80-90 वटा 100 वटा तक न बने जी अले छपाए चाहिँ फुल साइज जीवले चाहिँ छपाए चाहिँ 2 किलो 2.5 किलो जी अले ओके चाहिँ फ्यामिली यु चाहिँ रिलेसन अनुसार चाहिँ इन्भिटेसन युरोपमा बिउ खम अले इन्भिटेसन बिउले न त्यो चाहिँ रिलेसन अनुसार गुलिस्ट छपा बि गुलिस्ट बापा बि अले अपना चाहिँ वो इन्भिटेसन चाहिँ यो कुछ शब्द malaला लाखमरी यो अले देगा चाहिँ लिसे अझ इन्भाइट चाहिँ बढे जा हाना चाहिँ छपा टप जी बना एजिया चाहिँ फाइनान्शियली बर्डन थे फिल जी जान जी न्यान हुन्छ ठौने साके बजार पिन्न थो चाहिँ व्यवहार पछि कठाएर हो न्यान दु अले मेमेउ जाति पिन्न असे चाहिँ चलन दु एजोनी लाखा चाहिँ तरौ योको युज क्वान्टिटी रेक्सम चाहिँ बिगेको खास लाका यो हजुर हजुर योको सुबादु छौ मेउ चाहिँ क्वेशन दु मार्लिना फ्रिसोन मेजु पाखे वेकन चाहिँ विक्रम जु नरेश जु निमना पर क्वेशन त बुदु कि are there any publication in Nepali or Nepal Bhasa on the topic of Newah food that you recommend? For example, is there any popular book on Newah food that people know and use in the community of Nepal or abroad? Okay, Michelle, Yokudo, Geo, G. Ek minute. Research is almost free when you cause I work on a Newah Batusa Bala, Newah Batusa, Yoko cheese to do. I just take Newah Motu Jonajita. Nepali too. English on side too. English on Jim Mokana Triela. Sorry. Senimoka Tana Belade. Oh, I'm so sorry. Newah Batu Mokla. Ji Tono Yoku Kitab to Jinkinela reference to Tono Bidesha Nyamuru to Nepale Nyama. I just say to Tantriki is our Newah Tantric New Nasato New Toto Jula. No Muchis and Newah Sanskriti no Kotaka de Udo Todula. A tour on nothing Tajilaya Nakon our Tozula La. I know nothing to the skate to Banlau teaching. Newah name Nasadao, Google time in Neuka, Chickpins on Woto Notasca Bala,
अहिले दसके अन्न छौ जे जिगेठन छौ किताब मरे चौडो वो छौ चाहिँ दो जिन छौ आर्टिकल छौ दो वो जो vikramvaidya.com में वहाँ से चाहिँ जे द ल्यान्ड अफ सर्पेन्ट का जे चोइट्यो दो ओले छेउ चाहिँ काठमाडौँ गेना जो लिसे कयाटक आटक गेना सिस्टम दो चाहिँ नेवाटे उड्या आर्टिकल चोइट्यो दो का जे शिकागो नेवाजे लागि मेरे जी छौ चाहिँ एक कमेन्ट दिया हो बिचार जो जो होला तो नक्ति वो लाखामरी गना वो और गादी वो चाहिँ शब्द यो चाहिँ मतलब इटिमोलॉजिकल भ्यालु से बोले तो लाखा यो मतलब वर्ड आगो करेन्ट युज हुआ ज्या चौं तो ठो वो चाहिँ संस्कृत लक्ष्य खगा जो यो कोही चाहिँ वो लखा वो ला ख फुक चाहिँ वो छ पाख्ने चाहिँ ख वो खला अघि तो लाखामरी गाडी हो चाहिँ लक्ष्य मरि धाउको लक्ष्य गाडी हो चाहिँ एम्बिसियस मलाई एकदम एम दियाना चाहिँ देखो छौ छौ चाहिँ लाखामरी देखेबले छौ छौ उत्सव यो लागि गठिया आठ साकी बजार चाहिँ जिमी साकी जुला जिमी चाहिँ 12वटा मरि बिमाग झिन्निपा चाहिँ सुंगु थरी हो सुंगु थरी हो मरे चाहिँ छौ छौ महिना या छौ छौ हिसाबमा चाहिँ वो ब्याज यो चाहिँ लगन फिक्स जुल हो 12 महिना नि हो अले वो लाख बिङ के छै अले वो हरेक महिना चाहिँ छपा लाख चाहिँ अले परिवार पिन त इना बि अले काइपी मनुटेसमा चाहिँ परिवार योको दशा इम त चाहिँ एक्सचेन्ज याना चाहिँ अथवा छौ लख न्यू लख या डबल लख याना चाहिँ या चलन दो अले गुली चाहिँ सम्बन्ध सचिना वला उली छपा बि सम्बन्ध ताबा पिन त चाहिँ हाफ जल क्वार्टर बिल अले वे अनुसार चाहिँ इबि ल्या वेबले भयो वेबले चाहिँ इमो चाहिँ साइज अफ द कोस यो साइज अनुसार चाहिँ भयो वेको को जिउ छौ चाहिँ युनिक चाहिँ चलन खर्ने वाटे हो ओके लाखामरी दिउ गनावरला चाहिँ संस्कृत शब्द त लक्ष्य त चाहिँ लिबा नेवा अफसर चाहिँ वो नवाबले चाहिँ लाखा जुवा हो जिसो एउटा अठी चेन्ज हो यो कोही ज्याचौं उदाहरण त यको सेवा आज जिन ठो लाखाइ विषयले अझ जिसान अझ एको हेरेको नि अहिले ठो पब्लिकेसन विषयले जिगेन छौ न्यू चाहिँ छन् ठो ठो चाहिँ लाखमरी विषयले जो म कि झिठो ओभरअल नेवा नसकेको विषयले अफिस ढुका जस्तै यो नेवा नसनको सडाउ ठो छौ बुक्न ठु मलाई अहिले ठुके चाहिँ झि नेवा नसतो सदा हे वासा ख रेक्समा चाहिँ बयान ठो ठो पाकोले हाउ न अथे ख छि चाहिँ ठो चाहिँ नसा दैवे चाहिँ छिटो वासा किस्म छिसो प्रया सेकमा त्यसमा चाहिँ बियाडहरु अहिले लाखमरी विशेष लागि चाहिँ ओके चाहिँ छुट्टै पब्लिकेसन दियाला खासै मने तर छौने लाखमरी व्यवसाय एना चाहिँ बिस त वेबसाइटले बामालकै इन्फर्मेसन दियाडहरु जिन छमला नाब नेपालले जिन लाखमरी व्यवसाय ख तर हातन क्यानाडा चाहिँ जि किस्म पब्लिकेसन मैन तर जि क्यानाडा कम्युनिटी चाहिँ ट्विटर चाहिँ मगाटेमा किस्म जि सौ चीज चाहिँ जिना छनहरु विशेष जना चीजो क्यानाडियन नेवाको टी नपाउ चाहिँ अथवा छिटो कल्चरल इभेन्ट जिपले अनि ओबेको पनि चाहिँ इन्करेजमेन्ट गर्न चाहिँ जिठो इन्ट्रेस्ट या सुरेन हो जि थ न क्यानाडियन नेवाको टी एज अ ट्रेजर चाहिँ एसोसिएट ख हजुर मदिना जी नारायण राज भण्डारी छौ चाहिँ नि नरेश जी छि चाहिँ नि फादर जमुना खला जमुना कृष्ण तामाका मको जी ओबेको चाहिँ फादर ल मको जिठन जी जेजेपाजु परेजोका जुजुपाजु ए वो जी जाने पासा जो नि छु खाना अब मिले जुठ्यान चुना छोरे र छौ चाहिँ नि तो लाखमरी दुनी लाखमरी जी ठन लाखमरी नेपाल हे ख ठन टेबले फेबले ठन लाखमरी एकदमै जिमस युज ज्ञान सुनाउदो तर मोन्टेसन नेट ग्याव कारण छ त हाई क्यालोरी दे का नेट ग्या ओके के क्यालोरी भ्यालु भन्छ झिस चाहिँ नि खुले या फट अले थ्यु चाहिँ नि हेल्थ यु सिग्निफिकेन्स भन्छ त या थुके ठोठो फाइदा जुइरहेको किस्म छौ टेफटा छ थ्यु मार्केटिङ जुइथेन चौनी छिटा छौ जिरो कमेन्ट्स काटो हजुर यो कोइको सेवा आज थन मार्केटिङ थन जी चाहिँ लोकल रुपले यहाँ जस्तो इन्टरनेसनली याद चाहिँ या थन जी नेवा पासपिस नेवा संस्था अथवा डब्ल्युएन जी क्वालिटी छन जतपाले जी थन इन्ट्रोड्युस जानु चाहिँ सो कल्चरली प्लस चाहिँ स्नैक आइटम हिसाबमा चाहिँ थन कोशाइएको अले प्लस चाहिँ जी मेमे नेवा मिठाई थन जी थन इन्ट्रोड्युस जानु जनाउदो अच्छा सुधा बिहारी ठेन्डु जी उस गर्न हाना जी प्राइस या मोर चाहिँ इन्फर्मेटिभ जी के अले ताकि नैविन्द न एथ्वे देखिन फाइदा जी देखिन जानकारी देखिन जी सो जी छबो प्राइस या हजुर एकोको सेवा छ हजुर अले जे कमेन्ट जग यारी टु गेट 10 seconds अरेस जुन अब क्यानाडियन नेवा गुठी छि बाल्टिमोर जो सेकेन्ड डब्ल्युएनओ कन्भेन्सन न बालका लाकमरी यो डिस्प्ले एन्ड ड्यू कव एकल नाजैलिन फोटो जी भन्छ समय चाहिँ जी
पहिला फ्राइडे समय यो को लगे जो नि जी वो चाहिँ फोटो जो केना के नजैले न जी छौ फोटो जी आनस को जी थो दोल्या फे एकसको केन्द हजुर ठुपडी चाहिँ हिजो गाउ सिजन नै ठुपडी ख अन चाहिँ बाल्टिमोर चाहिँ सोहेनपडी ठुप चाहिँ फोटो चाहिँ जिथो क्यानाडा जो थन नर्थ अमेरिकन रिजनल कन्फरेन्स जुले छ सोहेन हो ल अथे चाहिँ मौका दत्तले चाहिँ जिथो प्रिजर्भ किसिम याना छ ठो चाहिँ आको युनिभर्सिटी टोन्डे चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन याना अनवपी पार्टिसिपेन्ट दिएर चाहिँ ठुप पामरी लर्न छ ल मानव ब्याज हो क ठो चाहिँ ओके चाहिँ प्रमोसनल मेटेरियल ठो ल हजुर जो मेउन छु हजुर छपिन्दा थना मेगो छु क्वेशन होगुदु केसर मान्जु न छपिन्दा थना लाखमरी देखेको तालिम बिगु छु व्यवस्था दुला थिए र कान्यन दिगु छु तालिम बिगु चाहिँ थना जी व्यवस्थालाई मैले नि यासा याफै तालिम बिगु न याफै आथो हरेक किसिम चाहिँ छौ किसिम त जानकारी मरुनी जो ख जानकारी बिया पछि चाहिँ एक सेन्बलेलाई चाहिँ देखियो न तालिम बिफै जी थन चाहिँ फर्लमेन्ट आटाको चाहिँ जी थन गुल्न चाहिँ त्यो कल्चरल इभेन्ट अथवा रिलिजियस इभेन्ट जो त्यो फ्यामिली इभेन्ट चाहिँ माउ जी आटाको चाहिँ जी जिन्दु देखा जी उपलब्ध याना छ नउलु सोकजंगु या खाना छ जी देखे तो पामरी भ्यू चाहिँ उपलब्ध याना बिया अले थन क्यानाडा चाहिँ जी नेवा क्यानाडा नेवाको थियो चाहिँ अरु जीवित थाहा चाहिँ ब्याज जो अझै छे चाहिँ ब्या नकजुलेन अन्न चाहिँ त्यो वेइङको जोलाउँदा देखियो र मौका मिलेछ ल ओके न सोन्यो हजुर अथे चाहिँ yana आटा यो नै याफे हजुर यो कोइको सुबादु अलि अथे थना जी वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन या अध्यक्ष बाजु यज्ञमानजु याना छ इनाब्दु धका छपिन त तै दित इनाप्यान चंगुदु यज्ञमानजु छपि नवान्दी लागि यज्ञको सुबाय जी वर्ल्ड नेवा मुख नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका या I'm sorry. जी वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन ये ची सीजन दाइदु जिगो थो मेउ त मुख छिन नरस जुता चाहिँ नरस जुन न दाइदि ल अले ची दया दाइना न दाइदि या ल लाखमरी विषयले चाहिँ खास चाहिँ लाखमरी छि नेवाते अपचलन जा निमन्त्रणै लागि या ख अले चाहिँ थो साइज अनुसार न चाहिँ वो फ्यामिली यो चाहिँ ओके चाहिँ वो साइज चाहिँ ठुलो किसिममा हुने थियो न वन छौ छि इन्भिटेसन यो लागि हुने हो तर अले जी थके छु त चाहिँ जोरे मासो चाहिँ छोरा जी थमेन न सिउ जी थमेन न पगे हामी या अले को लाखमरी बिबले चाहिँ छि एकदम नजिक पिन्दा चाहिँ छप बियो मलाई अले वया फित छौ लेभल को वो बापा बियो अन चगन छि बियो वो चलन चाहिँ नम्ना पतनी आ छि चाहिँ कार्ड या चाहिँ बियो मुआ अले फ लाखमरी यो हिसाबमा चाहिँ इन्भिटेसन हुने हो ल निमन्त्रणा हुने हो ल अले वे अनुसार अले छप बिबले चाहिँ छप बिउ मेहन चाहिँ कोसा छुछु हेमा यो ले चाहिँ जी फिज जोड बिट्नु छ अले छप बिबले चाहिँ उगे चाहिँ छि चाहिँ फसिज ल तबागो फसित अले तबागो सिज यो टेपट अयो बिमाका छप बिपिन्छ चाहिँ नि छप काइदिन्छ अले बापा या थाइ मलाई बाटा या थाइ अले बाबा बिउ त चाहिँ नि बाटा नयाँ बाटा यो हिसाबमा चाहिँ बाटा बिउ हो या चाहिँ नि वो बाबा काइदिन्छ चाहिँ नि बाटा बिमाका चाहिँ ली बाटा रसिज बाटा छु अथवा बिउ ओ अनुसार अले चकन्ची उनी पिन्छ चाहिँ चकन्ची पिन्छ चाहिँ अथवा चिचिगो बाटा कसरी ट्विट चाहिँ इन्सान परवा अयो चाहिँ प्रेजेन्ट बिउका वो चाहिँ छौ चाहिँ लेभल न देखा त जुल न अले थयो आ देखिबले चाहिँ यो कोइ देखमा का नबाजी छे जी बिडी ब्याजुबले दाइटिनी ब्याजुबले छे तया चाहिँ जे मरि देखि बि छे या छे तया चाहिँ चछि मरि देखि यो चाहिँ जी खौ जया अले वो चाहिँ इन्भिटेसन नब छयो चाहिँ वो किस्म छयो आठौंले चाहिँ अब नगनी नरेश जो थाकेन तो फाइनान्शियली न यो जुल छौ चाहिँ मुनु पेसा आठौंले चाहिँ नबने अब बाटा कसरी यो हेरियो न चलन मरे होला मलाई ओए ज्या चाहिँ वो फ्रिजर उ दाजन फ्रिजर छियो कल्चर न ल्युन लाउँ हैन छ न मलाई ओके त चाहिँ छिसा गु किस्म चाहिँ ठुके त चाहिँ हनी यंजो ख छिसा गु किस्म ठुटा इन द लास्ट प्रिजर्भ ज्या पनि दियो चाहिँ छौ छियो कल्चरली रूपले चाहिँ कल्चर यो लागि चाहिँ छिसा चाहिँ गु किस्म यंग फै दियो चाहिँ
抽真个几world Newah organization 做了几2000年作品几Newah organization 做了 together 比这掉比这里推到这里संरक्षण也这里महत्त्वपूर्ण ठेस हो भने जुन चिरको कमेन्ट यो सुबा जो यो के चाहिँ चिचु कमेन्ट लागि यो चाहिँ धन्यवाद थोरै विषयले जी छौ आप जो विचार छौ ते आ जी चाहिँ नभा व्यवहार सुधारिया हिसाबमा फाइनान्शियल बर्डन घटाया हिसाबमा लाखमरी चाहिँ प्रावधान चाहिँ जी चाहिँ जितले घटाया धेरै वो घटाया गया ना जी फाइनान्शियली जी कम ल मजु फाइनान्शियल बर्डन कम ल मजु आ उगै ठासे केक देउ प्लस चाहिँ जिउ मेमेउ प्रचलन त चले जुरा बिहाले अझ चाहिँ इन्डियन देउ प्रचलन त चले जुरु उके पाके घटाएन जिउ ठु कल्चरली भ्यालु डु पुरी बर लाख चाहिँ लाखमरी चाहिँ प्रचलन ल्यामा भएको जिउ विचार फाइनान्शियली चाहिँ हिसाबमा खसला चाहिँ छिज मेमेउ व्यवहार घटाएन फाइनान्शियल बर्डन घटाएला याना जुनो मरु मरु आथौने टाइम लासे आथौने चाहिँ मरु न्युवा भे जोबे मर्याउनी होला जोबे मरे होला अले उके माथि झन् जोबे चाहिँ चाहिँ मचानी मलाई यो कोही मचानी आउ थोरने पार्टी सिस्टम जुल वजनी एक अनि मलाई छिसा बुकिसमा इंगिजु आ छौ जो जोबे यो लागि छ छौ हेल्पर मरुलिन चाहिँ नि वो नाउ ख भिजा म थाप्या हेल्पर जीवो यहाँ मर्याउनी होला टोले बि ग्वालियोको माग एको मैन पावर त मा एजना वजन नाउ तर जोबे या म रुपिन्छ यो कोही जनी तर अर्सान या चाहिँ समस्या या चाहिँ या म दशाना चाहिँ या म फ्याउन हो मलाई अटेन तो आटो छिटो लाखमरी जुल टुबिन छियो गुल्न नस जसो त दो इंदा चाहिँ छिसा चाहिँ गएन संरक्षण या भई वो चाहिँ छिसा चाहिँ सुए मागा हो चाहिँ ख जिउ हजुर यको सुबादु छपि त थो सेसन बदी तागे वनि ढुंगला तो निवा नसा जल यो द क्वेस्ट के इंटरेस्ट जुली यो कोइ क्वेशन त वइ जंगु जिउ जिताको छ ना थोए जि नापन ध्यारो न थो विश्व न्याङ नेवा विशेष सकेत भर्चुअली नाप्लाई बोले अपि चाहिँ सिगु ठुगु ख थेना आदान प्रदान ए बोले जिसा वा वे चाहिँ मखु उके आज ठुके अल्जे मजुसे न्याने प्रोग्राम न्यागे मागुली जी छपिके यको धन्यवाद का उजा फन्सना आज शेयर चाहिँ स्टप हजुर शेयर स्टप हजुर यो सुबा मेदिना साक्य मलजु हजुर थ्याङ्क यू प्रश्न चिता चाहिँ सुवा धामा मेरो कारण सुन दु झासा चिजिर अबि मस्तै माजु या नछि चाहिँ उलिमछि चाहिँ नाबा मंका खल दुनेन यको ज्यायान दि ल छि अले अमेरिका बनाना छि चाहिँ तस्मा चाहिँ नेवाते नेतृत्वलाई इ बिया दिल अले आवयाना छि चाहिँ समाज हाउसवाइफ यान छि चाहिँ नेवाते बारे चाहिँ छि दिने चाहिँ गुली चाहिँ छि चाहिँ चुता तयादी अले चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ छि आन लिहा चाहिँ इ बिया चाहिँ न्यानिवया चाहिँ ग्वालियान्द्र बेला यको सुवा थपितना थो जित अपर्चुनिटी बिया दिगुली थपा रंगो त रंगो स्टेज द बिगो जित लुमंगा दिगुली छपिन त यको सुबादु थ्यांक यू सो मच सटेको नेपाल चैप्टर बाके जोना सुबादु यको सुवा नरेश चाहिँ खजी सन्याना अले वैको प्रस्तुति जग्गा बाला मखु कि वैका छुयादिउ चाहिँ थो लाखमरी तस्का सार चाहिँ चीज ग्यारेन्टी या खोइ थाहा छ बाल्टिमोर वो अमेरिका वो कनाडा चाहिँ वो टोरन्टो न जीवना चाहिँ कि सवा काउ नयाँ चाहिँ चीज चाहिँ सुयदैन तस्मा चाहिँ सा अले छु जी दक्वेस्या यगु मरि ठोक लाखे मरि खला हजुर जु आजि थन बिदाका जी थन हाना छकन छौ खछुड्या मास्टुल दासा थो सेसन सुरु जी ठ्याक्क न्यने जी जिम तबाया त खने गुमौका त वेका नरेश वीर साके जु ख अले जी वेका त थन भिडियो खन गुली थन है बा भागिया दि मास्टुल ओके बा हजुर तो अथे जे नरेश जी लाखमरी विषयले छोटा खरे थातेन ओके तो लाखमरी प्रमोशन निम्ति छे येन यको ज्याज्या जंगदो अथनो ब्रान्डिङ एटे लाखमरी चाहिँ मार्केटिङ ज्या जंगदो अथे रेटे नक्तिने जको सिक्किमे न तो लाखमरी छु ट्रेनिङ ए बिउङ दुगा अले उके लागि सपुना पिके दौडुगा यदि छिटा मास चाहिँ आई क्यान अवेलेबल थे जो यसो जिके डेम आउ किताब लाखमरी विषयले थोचो इसला जानकारी जको ब्याउका सुबा डेफिनेटली वो चाहिँ छु गणेशराम लासी जुन चाहिँ मुना थो सब जिगेन दु छौ चाहिँ लाखमरी सिक्किम यात्रा लाखमरी सुरु दिए परिकार मात्रा गणेशराम
गणेश राम मको लक्ष्मण गमाल जी चाहिँ किताब खडो गणेश राम जी नापंग वना चाहिँ अनु ट्रेनिङ याउ बडी ख त्यसमा बाल ज्यू ऐसा चाहिँ यो कोही सुबा नरेश ज्यू हकमसित अहिले झी चाहिँ सूर्यले 80 जवान दुसा चाहिँ म जुजु उहाँ चाहिँ 50 51 जना पार्टिसिपेन्ट्स बोधिका दुई ठाउँ जुन मिटिङ ऐसा न दक्ष योको चाहिँ डिस्कसन चाहिँ खलाबला जु चाहिँ सेसन थो नसा तोसा बारे जुला उकि चाहिँ सिधै कि गुली चाहिँ झी चाहिँ नेवा नसा तोसा यो चाहिँ विषय चाहिँ गुली रोचकको गुली चाहिँ यो जुनी झिके जिता चाहिँ यो चाहिँ यहाँ झीसँग सिकेका खै आज भने दक्ष लिपाङ्गु सेसन गु चाहिँ क्लासिकल लिटरेचर ख शास्त्रीय साहित्य त्यो चाहिँ नेवा भाइ बारे जुल नेपाल भाषा यो चाहिँ क्लासिकल लिटरेचर बारे सेसन्स न्याकदी त जी चाहिँ इना पियाए कन सदे जी चाहिँ नापामा हलिनेवा दबुया नापामा नायो वो छम चाहिँ हलिनंका या तस्मा चाहिँ नाजामा नेवा या चाहिँ शोधकर्ता सम रिसर्चर डाक्टर बाल गोपाल श्रेष्ठ जी Jojolo Sakshita, I'm very pleased to have this chairing this session. We have two important presenters this time. Anahi Tissekam from Belgium and Ambir Moore Timilsina from Canada, Toronto University. They both are very promising scholars who have been studying about Newahs and Nepal since past several years. Chakutajing Parise, first presenter Anahi Barebi. Anahi is a recent graduate of Leiden University. She just has finished her master's. I'm pleased to tell you that she invited us to present during her master's certificate ceremony, but that didn't happen because of COVID. But later she had to do this through the virtual ceremony that we attended. We are very pleased about that. That thesis, her thesis is when masters became deities, line drawing in a Buddhist ritual manual from Nepal. She got this on this thesis. She got a very cum laude, that I think everybody know cum laude, that is a distinction in her master's. Also, she did her VA thesis about Nepal between the artist rule and ritual realities, Homo in Nepalese paintings. That was in 2017. During that time, since that time that I came to know about her. She also speaks Nepal Bhasha. She has been learning Nepal Bhasha from Sri Lakshmi Sesta since past few years, and she speaks very well Nepal Bhasha, but I don't know whether she would like to speak Nepal Bhasha today, but let's invite Anahi Tissekam for her presentation, our first presenter of today. Anahi. Tedula? Tedula? Thombani ji Angrezi be Base Khale Terasa ji Newah be Botcha Jaka Khalesa. So I will continue in English. That's more comfortable for me now. So I would like to start by offering my thanks to all the dedicated people who have been working hard to make this conference possible. And I feel grateful to be able to participate in this worldwide event to increase awareness and open discussion on topics related to many different parts of Newar culture, language, and society. My first encounter with Newar arts was about 4 years ago, when my supervisor at Leiden University, Dr. Ellen Raven, encouraged me to study the Homa, or fire ritual in Paubas.
And this was for my bachelor thesis, as Balgopalju mentioned. To this present day, I am very happy that she opened the door for me to the amazing treasure of Newar arts, culture, and religion. And I also wish to thank Sri Lakshmi Shrestha and Balgopal Shrestha for their continuous support in my study of Newar language and for inviting me to present here tonight. So, Yeko Yeko Sube. So now I'll share my screen so that you can see the presentation. Yes. Okay, good. So in today's presentation, I will describe a Tiasafu manuscript that was the focus of my master thesis at Leiden University. Here you can see a photo of the first folios of this manuscript and a brief note on the photos that I will be showing throughout this presentation. They were all taken by me, except if otherwise mentioned in the caption with the image. As you can see, the folios of the manuscript include series of illustrations related to the performance of a Padasadhana ritual. So what is the Padasadhana? The Padasadhana practice includes the performance of several postures in combination with hand gestures or mudras and the recitation of mantras. The ritual presumably has its origins in 8th century communities, Buddhist communities from Northeast India, but here I will only talk about the ritual as it was in later times transmitted in the region of the Kathmandu Valley. The manuscripts that I accessed all date after the 17th century, so late Malla period and continuing in the Shah period, and probably all have their origins in the Kathmandu Valley. The Padasadhana is also an esoteric ritual, and initiated Vajracharyas can practice it. And taking the physical postures enables the Vajracharyas to embody a deity, a Buddha, or a Bodhisattva. The Padasadhana is a part of a set of rituals that are performed in the context of larger ceremonies. So the Padasadhana is not a ritual on its own, but it functions as an ingredient of larger rituals, so to speak. The manuscripts that I accessed for my research seem to represent two such ceremonies. The first is the Parikrama Vidhi, described in the Kriya Sangraha Panjika text. The procedure of the ritual consists of walking around the site while taking postures and mudras to embody several deities. Different masters were involved, taking different relative positions in the site for the enactment of the ritual. And the purpose of this performance is to purify the ground before the establishment of a mandala. And this mandala was then later used during initiation rituals that are also described in the Kriya Sangraha text. An essential aspect of the ritual is a visualization by the practicing masters of themselves as the deity, Buddha, or Bodhisattva while they are performing. So they embody the deities by taking the physical postures and gestures. So it is as if they become the Buddha, the Bodhisattva, or the deity, him or herself, during the performance, of course. A second ceremony, including a Padasadhana, is called Ahoratra Puja. And this ceremony consists of an elaborate series of rituals extending over several days and nights. The Padasadhana was performed during one of the nights. And the purpose of the ceremony is generally to consecrate receptacles for deities, such as statues and chaityas. Here you can see in this slide a photo of Yagyamanpati Vajracharya at the Vajrayogini shrine in Sanku. And there he supervised an Ahoratra ritual that was performed for several days in the month of April 2013 English date. So let's now turn to the manuscript. The manuscript is currently preserved in the Royal Library in Copenhagen in Denmark, and it follows the format of a traditional ritual handbook, or Vidhi. This means especially that the text is written in both Sanskrit and Nepal Bhasa. So mantras and charya songs, for example, are written in Sanskrit, while instructions and explanations of ritual actions are written in Nepal Bhasa. The script is Prachalit, with some influences of later Devanagari script. The manuscript, however, does not have its colophon anymore, and some pages are broken and missing. So we don't know the title or the name of the ritual from the manuscript itself.
but Yagyamanpati Vajracharya and Sarvagyaratna Vajracharya kindly identified the ritual as Parasadhana of the Ahoratra Puja to me when I showed them photos of the manuscript during interviews in Kathmandu. When we look at the manuscript, characteristic are the elaborate series of images, 148 in total, and each of these images are depicted in separate frames. And I suggest that these images depict the Vajracharyas in the act of performing the Parasadhana practice, and more specifically, the very moment that they embody Buddhas, Bodhisattvas, and deities. In the thesis, I elaborately describe the iconography of a selection of images to support this identification. But here I will briefly point out some iconographic clues that enable us to identify the figures as performing Vajracharyas. So first, the figures consistently carry a Vajra in the right hand. I hope you can see my cursor. And the bell in the left hand. And they also persistently wear a particular type of crown. And this crown strongly resembles the crowns that practicing Gurujus still use up until today, as you can see in this photo. But the figures also wear many different kinds of ornaments, and they also have a halo around their heads, as you can see in the drawing. And this actually rather recalls the iconography of deities, Buddhas or Bodhisattvas. The presence of these, let's call them divine features in the iconography, such as a halo, suggests that the illustrations capture the pivotal moment in the Parasadhana practice where the masters actually become the deities because of practicing the physical postures. And the medium of art has the power to visually show this to us by skillfully using iconography. So, next to the elaborate series of illustrations, the manuscript also includes pages full with text, including Charya songs, mantras, and instructions on ritual actions in Nepal Bhasa, as you can see in this photo. So it's a very dense manuscript with both the illustrations and pages with continuous text. Next to the manuscript from Copenhagen, I accessed other Parasadhana manuscripts belonging to different collections, such as the National Archives in Kathmandu and the Los Angeles County Museum of Art. Some of these manuscripts seem to be related to the Parikrama Vidhi, while others describe and illustrate a Parasadhana of the Ahoratra Puja. In completed Parasadhana manuscripts, such as this example that you can see in this slide from the Los Angeles County Museum of Art, all the figures are accompanied by texts or labels in the frame in which they are depicted. And examples of the subject of these labels and texts is a cardinal direction. So some of the labels mention, for example, south or north or east. And here we presumably have to imagine that the different masters were taking relative positions towards each other in this way, enacting a mandala. And then also mantras, for example, are written with each image, probably because that mantra had to be recited with that particular posture. In the manuscript from Copenhagen, only the first 6 figures go with texts in the frames, and then all the other figures go without text in the frames. As you can see here, it stops on the 3rd page of the manuscript. So probably the manuscript was never finished, and then later ended up in the collection of a foreign library because of its attractive illustrations. And it is not completely clear to me how the manuscript ended up in Europe, but it was probably collected along with various other manuscripts by anthropologist Werner Jacobson, who visited Nepal from 1957 to 1959. Regardless of its presence in a foreign library at the moment, the manuscript is publicly accessible to everyone who is interested, and I was also welcomed warmly by the caretakers of the library in Copenhagen when I spent a couple of days there to conduct my research. So more research on the Parasadhana ritual and the manuscripts is necessary to gain a clearer understanding of the specifics of the ritual, and hence also to understand the manuscripts and the illustrations better. Something we may wonder in this regard is, what are the limits and advantages for people studying these kinds of manuscripts outside of the tradition,
like me, who have no access to a direct experience of the ritual. And through this presentation, I would also like to encourage an open discussion about the public accessibility of such esoteric manuscripts. Traditionally, one wouldn't be studying such a manuscript except under the direct guidance of a practicing ritual master. It would include certain conditions such as gender, your ancestral background, and initiation practices that you would have to go through. And especially in modern Newar society, where there is a lot of effort into preserving traditional practices, I think there is a fertile ground for such questions and an open discussion about them. And I feel very grateful also that I have been warmly welcomed by different Gurujus and that they took their time to listen to my questions and to help me to the best of their abilities, regardless of my background as being a female foreigner. And yes, and also I wanted to share my experience of stumbling upon a manuscript that was taken out of its original context into a Western library, where it became a kind of museum piece, so to say, and where it was became appreciated mostly because of the aesthetic qualities of the illustrations more than because it being a sacred scripture. And such a discussion can also include more generally Newar paintings, sculptures, etc., that are today preserved in foreign institutions such as museums, archives, and libraries. And a limit for me as a scholar from outside of the tradition was, for example, that I didn't manage to gain a full, clear picture of the Parasadhana performance because of its esoteric nature and because of the fact that it's performed only very rarely. But an advantage for me was that I had the opportunity to focus very specifically on the iconography, the use of the iconography, and the connections of this iconography with other Newar artworks, such as Pobas. And in my view, this is the beauty of scholarly research also, to work creatively with your limits and advantages, and to create a meaningful study out of this that can be of benefit both to people inside as well as outside of the tradition. So my wish is also that an interaction of culture, such as the one we are experiencing here in this global conference, will also continue to flourish. And then also just the fact that the Parasadhana manuscripts are so extensively illustrated makes them interesting to me, especially because there has been a trend in Buddhist ritual manuals to only use texts or written instructions to guide and transmit a ritual. But these Parasadhana manuscripts provide us with an intriguing example of the use of illustrations to transmit ritual instructions or to facilitate the practices of the Vajracharyas. It is especially this link between Vajrayana sadhana practice and the use of visual media to support such a practice that has intrigued me for many years now. And I hope that I was able through this presentation to spark your interest in this topic as well. And with this, I would like to end my presentation and hand it over to Amber. And I'm looking forward to hearing your questions and remarks afterwards. Thank you very much, Yeko Sube. Thank you, Anahi. On time, very good. So now I would like to invite Amir Mood Pokhrel. Actually, she is married to Pokhrel, Nepali man. She's a lecturer in Tibetan language at Toronto University currently. She holds MA in Religion and Culture from Wilfrid Laurier University, Canada. Currently, she is pursuing her PhD at Toronto, and her current research actually is on Manisaila Mahabharata, the semi-mythical history of Saku and Mount Manichura, which tells an origin story of the Buddhist goddess Vajrayani and the town of Saku, my native town. Her topic is a new edition of Tri Dalaka Kamala, Chacha, an introduction to the Manisaila Mahabharata of Saku. This research will soon be appear in the European Bulletin of Himalayan Research in January. So you'll be able to read that soon. So now the floor is for Amir. Please go ahead. Thank you very much, Dr. Lapa and Tade Mam.
Thank you so much, Dr. Balgopal Shrestha. I know it's an honor to be on this panel, and your research has been a true inspiration to me. I have your book right here by my side, and I hope that everybody knows it's now available in Nepal Bhasa. Is that true? Is it out now? I think we discussed that when we met last time. Also, I'd like to thank the Canada Newah Guti, who has welcomed my family and I to so many cultural and religious events over the year. There is truly so much to rejoice about in terms of the Newah culture and its preservation in the Greater Toronto area. I've had the pleasure of collaborating with Canada Newah Guti since 2017, and it was my great honor to assist with the invitation of Guruju Narashman Bajracharya to the Royal Ontario Museum for a storytelling event, the Samalasarta Bahu Avadana, to the Royal Museum in 2016, and then to our department at the University of Toronto in 2018. At that time, he gave lectures on the Manjushri Namasangiti, Guru Mandala Puja, and also on Dharani. I also collaborated to invite Naresh Guruju to the Brampton Pashupatinath Temple, and that was in collaboration with Canada Newah Guti as well. And we had a Tara Puja in 2018, and also an Ihi program in 2019, which I participated in with my daughter, and I was just so overcome with gratitude with how the Newah Guti has welcomed me. And even though I didn't have all of the necessary relatives present at the Ihi for my daughter, different members of the community adopted us, and it was a wonderful process. So thank you so much. Also, I wanted to mention that with the help of the Ho Family Foundation of University of Toronto, we're also able to host the late Lakshmi Shrestha for our Nepal Bhasa language lessons. And hopefully in the future, I know Dr. Balgopal Shrestha and his wife Sri Lakshmi have been invited, after it was canceled, I believe, for this past year, but they'll be invited in the coming year. So that's just a little bit of an update on some of the exciting things that have been happening in my area in terms of the preservation and the flourishing of Newar culture and heritage. As a scholar of Newar Vajrayana Buddhism in literature and also Nepal Bhasa literature, it's my hope that my work not only be an academic contribution, but also a respectful and valuable contribution towards preserving the intangible aspects of Newar religion and culture. The collaboration of the University of Toronto with Canada Newah Guti has benefited this flourishing of Newar knowledge and culture all around. I'm pleased to be a part of it, and I look forward to our continued collaboration. Now I'll go on to talk about some of my own research. So before I start to share my slides of the manuscripts and so on, I'll just give a brief introduction. My own research focuses on local avadanas and songs related to religious and cultural sites in and around the Kathmandu Valley. As we know, many Buddhist legends tell of Shakyamuni Buddha, the previous Buddhas, Bodhisattvas, and Buddhist goddesses and yoginis as having lived their lives and performed their amazing deeds right in the Kathmandu Valley. These stories and songs are composed in Nepal Bhasa and Sanskrit. For example, there's the Manichuda Avadana, the story of the generous prince, the Vyagri Jataka, that's the Rajkumar Mahasattva Avadana, the tale of the selfless sacrifice, and the legend of Aisati, the Manishaila Mahavadana, which is of course significant to the cultural heritage of Sanku. The Avadanas teach us about the Buddhist path, the 6 paramitas like generosity, morality, patience, perseverance, and meditation, the wisdom of the Buddha Dharma. But they are also fabulous and entertaining stories that preserve many unique aspects of Newar heritage. These works need to be continually preserved as living traditions by the Vajracharyas and also others who share these stories as Dharma discourses that are open to the public. So this is one aspect of
of Newah Buddhism that can be freely shared and has been freely shared among the public. And unfortunately, as Dr. Shasta and I were discussing previously, this tradition seems to have gone into a bit of decline, especially in Sangku, where the Manishaila Mahavadana would have been told yearly during Gumla and potentially during Kartik. So I'll now share some of my own practical aims. Do the screen sharing. And here you can see some photos of events that we've had at University of Toronto. And just to mention, on a personal level, my 4 goals for practical action in the preservation in the arena of preserving classical Newar texts. So Newar language and scripts can be studied while also learning about Newar religion and culture through Newar Avadanas and Jatakas. I have greatly benefited from this inclusion of classical Newar literature in my own study of Pachalit script and Nepal Bhasa. And I'm just thinking about all of the discussions that occurred earlier on today and also yesterday about the preservation of language and different materials that could be utilized for that. Thank you to Professor Emmerich. This is how I studied Pachalit script. I found it quite exciting, and there are a wealth of materials in this area. The second thing that came to my mind was to encourage storytelling traditions as a form of the preservation of this form of intangible heritage. I would like to work together with global Newar organizations to encourage and emphasize telling traditional stories among youth groups in story circles, for example, and also by hosting events where Newar Avadanas and legends are told by invited specialists or priests as an integral part of public gathering or a special occasion, even as a standalone event. So perhaps Canada Newah Guti and I can talk about that in the future. I would also like to, when I finalize my research on Sangku, I would also like to hold a storytelling session in Sangku and organize it. Third is the translation projects. So as a scholar, I'm involved with several different translation projects, and at the forefront of my mind is always that they are of interest and of value to the community. The organization of translation projects focused on classical Newar texts, like Hatta's Avadanas, will of course raise awareness among the global community and provide data also for Newar scholars, will hopefully be of use to the Newar community itself. And also usable by the community and also accessible to the community itself. So that's also another important aspect. And then in terms of the study of Sanskrit involved in classical Newar Buddhist texts, it's kind of at the forefront of my mind now as well, because of just having made an addition, the preservation of unorthodox Sanskrit language as Newar cultural heritage. I believe that the unconventional nature of the Sanskrit sometimes used to compose Newar Buddhist Charya Gitis, for example, is precisely and exactly what makes them beautiful, unique, and interesting, worthy of preservation. Such texts should not be avoided, as they are by scholars, of course, by scholars of classical Sanskrit, as they are a great treasure of Newar culture. And I personally will continue to keep working on making editions of these important texts. And I have to say thank you to Dr. Libby Mills, because we've just been working on a way to respectfully make these editions without amending them and changing them unnecessarily so that they are unusable by the community. Okay. So now I'll share with you 2 local texts that I've been working on. One relates to the Buddhist traditions at Pashupatinath, interestingly enough, and the other relates to Sangku or Sakwa, the legend of Manishala Avadana. So this Tridala Kamalacharya Giti is significant since it represents one local literary example of
non-classical Sanskrit for ritual usage that refers to the Pashupati Kshetra area and Gureshwari temple, which indicates how this area is also important for the community of Newar Buddhists. You see, of course, this is the Pachali script and probably a manuscript at least 100 years old. And we look here at the edition, again, an edition that's made with minimal emendations, and you can see how the edition does preserve all the different variations of text that I was able to consult. So this is basically how myself as a scholar is able to produce and publish and preserve. So we see here, I'm just giving you a little look at the apparatus that we use for scholarly editions. So you look at the top here, you can see, for example, the title is Tridala Kamala, the three-petaled lotus, and you have all 4 different versions here given. This means that the text is either compiled or utilized or in possession of this individual. So we have, of course, the published version by Ratnakaji Vajracharya, RKV, in possession of Subhan Vajracharya, the version used by Yagimanpati Vajracharya, and the older Bhaktapur version. So we have a way here of showing each word and showing how each lineage and each precious version is presented. Of course, there's no judgment here between versions, but you can see all of the versions in a single place with the use of this apparatus. And personally, I consider all of them equally important. And just to continue on, here is the English translation. And what I've tried to do here is to maintain that 14-meter tala mata. So the tala is mata, it's 14 aksharas. And I've noticed that it's a little bit flexible. So I did a syllable count for all of the text, and I tried to keep it between 12 and 14 or 15 syllables, which is able to fit with this Raga Vibhasa and Talamata. So I would be very interested to learn if this would actually, if anyone would ever be interested, I'm not sure, but we could see how, if it could actually work with the instrumental and voice accompaniment in the ritual arena. Anyhow, I have no expectation of this, but just in keeping with the tradition. And we can see here, interestingly, how the Tridala Kamala, which is Chacha about the Nairatma, talks about Nepala, Mrigastali, Bagmati, and the nearby Tirthas. So it's a local text. Now I want to go on to the Manishaila Mahavadana. So this manuscript here that we're looking at is perhaps the last extant witness of the Sanskrit version of the legend called the Manishaila Mahavadana. And this is found in Sanku with the help of Prabhan Shrestha and also Prakashman Shrestha. And unfortunately, it seems like the only other Tyasafu version was destroyed in 2015. So this is one very, very precious text to preserve. And hopefully, perhaps there is another one out there. This story is a great avadana, a Maha-avadana, that was previously told to the public by Vajracharyas around all quarters of the town of Sanku. It talks about an ancient vihara at Sanku, the lineage of Vajracharyas, and the origin and deeds of a notable figure. And who was this notable figure? She was the Buddhist goddess Sri Ugratara Vajrayogini Devi, Khadga Yogini, and she appeared and lived in Sanku and roamed around the forest upon the Manichud Parvat. She performed all kinds of regular and miraculous deeds and played a role in the creation of the town of Sanku. And the creation of the town of Sanku is in fact described in detail as a part of this avadana. We don't know how old this story is, but its importance for the heritage of Sanku as a historical town may be compared to the Svayambhu Purana for the Kathmandu Valley. So we see here is the Sanskrit version.
And here is our Nepal Bhasa version. So this version is was published by the late Vanavajra Bajracharya, and I found it widely available in Asantol at the little Nepal Bhasa bookshop, but I think it's quite difficult to find nowadays. So maybe we can make it, we can work together with World Newah organization to make it more widely available. However, there were also several other versions in Nepal Bhasa before this compilation and composition came into being. And this does in fact contain the shlokas from the Sanskrit version. It doesn't contain all of it, but it does make reference to it. It is my sincere wish to hear the Manishala Mahavadana recited once again in Sanku, and I would very much like to organize a public reading if there's interest. So Dr. Shrestha has also given an outline of this important text in his detailed monograph on Sanku. And I hope that my work can further the support of the knowledge of how important the town of Sanku is. I know all of the struggles that have occurred in Sanku, and some of my good friends, pujaris and different people have been still staying in the little tin shelters until recently. The rebuilding has been quite difficult, although the temple has been well taken care of. But I know the struggles, and even with all these issues about the renaming of Sakwa Sanku. So this is an absolutely important text when it comes to the preservation of this tangible heritage and intangible heritage of the town of Sanku. So I'm actually translating this story into English. I think some other people have also been working on this. I wanted to just use this opportunity, if I have a few minutes left, to actually read. And if you like, you can follow along in the Nepal Bhasa here. I wanted to read a few of the first lines of our story. Om, homage to Sri Ugratara Vajrayogini. Ugratara, you are the one who perpetually liberates from the ocean of existence. As told in the legend of Padmagiri, you possess compassion for all living beings. Sri Ugratara Vajrayogini Devi, you are the one who liberates every living being who has taken rebirth within the cycle of existence from the ocean of the cycle-like existence. To you, I pay homage in all times and places, bowing down with the crown of my head. Out of compassion for all living beings, I will now tell the story of Mount Padmagiri. And how did this story go? Once upon a time, long ago, in a place which was equal to heaven called Pataliputra, in the city of Patana, there was an emperor who always took great joy in serving the triple gem through performing acts of virtue and generosity. This generous and virtuous person was the king known as Ashoka. One day, King Ashoka had a strong wish to listen to a Dharma story. So together with his retinue and masters, ministers, and noblemen, he traveled to the monastery of the monk Upagupta called the Kubakucharama Vihara. They approached the all-knowing guru, the monk Upagupta, and worshipping him with a puja, they bowed down to his lotus feet. With hands folded in Anjali, they made the following sincere request. O Guru, monk Upagupta, it is with the sincere wish to hear the Dharma story of the emergence of Sri Pragya Paramita Sri Ugratara Vajrayogini Devi that we have traveled here to beseech you, bowing down to your lotus feet. Have compassion for all living beings, including myself. Benefit us in a manner which is extensive and complete by telling us the story. Ashoka requested, when did Sri Ugratara Vajrayogini Devi manifest? Why is she called primordial power or Adi Shakti? Why is she called wrathful Tara or Ugratara? And why is she called Vajrayogini? I desire to hear this story, so we have made this request of you. Please have compassion for us. That was what the great King Ashoka requested. Then the monk called Upagupta, otherwise known as Yogeshvara, having listened to the requests made by King Ashoka, gave the following response. O great King Ashoka, you have expressed your wish to hear the story, the Dharma legend of the emergence of Sri Ugratara Vajrayogini Devi for this reason.
I will teach it to you in the very same way that my own spiritual teacher has taught it to me. Please listen to this story in the same way as I did with single-pointed concentration. So how did this story go? Long, long ago, there was a person known as the Bhagavan Sri Shakyasimha, who was a veritable repository of mercy. In the past, he resided at the monastery called the Padmamala Vihara, located up on the Mount Manichuda, an incredibly beautiful place close to the Himalayan mountain range in the northern facing direction. How is this mountain described? It is charming and excellent, replete with a multitude of good qualities. It is a treasure trove of jewels, such as rubies and so forth. Moreover, there are many varieties of flowers, such as jasmine striped flowers, night flowers, the aparatri svam, magnolia flowers, campas svam, kani flowers, lapa flowers, kule flowers, the kule svam, dam flowers, mango flowers, and so forth. And having blossomed, these flowers emit such a fragrance that one can smell it pervading throughout the entire mountain. There are also many varieties of fruit trees, such as lime, lemon, china berries, citrus. This is jamasi, chakusi, kabsi, pamsi, bayar, and so forth. When they blossom, swarms of bees arrive there to imbibe the fruity nectars, and buzzing everywhere to and fro, they produce the sound of the Sanskrit syllable hum, causing the mountain being Mount Manichuda above Sanku, causing the mountain's glory to increase. Moreover, there are many species of trees there. There are the Bodhi trees, Jumbara trees, Pila trees, Parama trees, mango trees, fig trees, Samokanta trees, and so forth. These many various species of trees, being incredibly beautiful, are pleasing to the mind. From place to place, there are also small ponds brimming with water. And of course, there are the famous 9 ponds of the Manichud Parvat. And this water is endowed with sacred 8 good qualities. And as we know from later on in the story, it tells us about all the qualities of the different herbs on the Manichud Parvat and how some of these herbs can awake people from death and have all kinds of benefits. Anyhow, so it goes on to say there are water lilies, there are white lilies, blue lotuses, and many other kinds of flowers and blossom. When one sees these various flowers, one's eyes will never tire of such a splendid sight. Then there are the wild animals of the forest on Mount Manichuda, such as tigers, antelopes, bears, tiaru fish, foxes, wild cats, deer, of course, harina, and other wild animals that inhabit this forest. These wild animals live in harmony with love and affection for each other, and due to this, they never engage in any hostility, thus further increasing the glory of the mountain. Okay, so I'm just checking on my time here. Okay, the time is already over. I just let it go because this is last. And it does give us, this story gives us such a wonderful vision and such a wonderful love, you know, for this town of Sanku. And that's why I think that it's really important to preserve and to read, and most importantly, to tell this story abroad and hopefully in our communities and in Newah communities. So thank you very much. Okay, thank you to Amir. I am looking at the chat if there is any questions. What I see, one by Punnim Sagar Marhatta to Amir. Is there anyone interested in Nepali, Newah architecture and the planning in University of Toronto? Do you have answer for this? In the architecture, I think that's probably not a good question for me, but maybe if Bimalju or Narajju is here from Canada Newah Guti, maybe they know, because it's a very different department. I'm in the department for the study of religion, but it would be a wonderful area to be researching. I'm not aware.
if there is. There most likely is. Okay. Next, from Daya Sake, in $3 Kamala may have or maybe a missing syllable. Just curiosity. Is that true? Can I make it a little bit more clear? I didn't write too much on that. So what I saw in your book title, $3, and then used to be probably three pada. Three pada is the 3 leaves. So I was wondering that why in this specific text, there may be some another text available which has only 3 padala, maybe that was. But I was wondering, this is the only one you found, or maybe it is possible to find another varieties of the text. Well, I would love to find other varieties of the text. Yeah, that's for sure. So for all of the 4 texts that I was looking at, did start with the Tridala Kamala only. There's, I think the Charya Samgraha has some reference to the Tridala Padma in a different context and a different song. Then how do you translate that? The tree is tree and then dal is like a leaf? The petals or leaves, yeah. Okay, so there's something is missing. I have a feeling that there's something is missing in between the tree and dal also. Well, thank you. I look forward to our ongoing conversations about this. Yeah, please let me know if you find anything, so you can communicate with me. So dayashaki@aol.com. Okay, next question I have from Juhi Jugvani. She's from Canada, I guess. Thank you, Anahi, for Pradasthana, Sadhana presentation. I guess this Royal Library in Copenhagen has many other Newah manuscripts. Could you tell us approximately the volume of the manuscripts? It has approximately how many manuscripts are available in that library? Just curious. Could you tell, Anahi? Yes, I cannot give you a number, unfortunately, but they do have quite an extensive collection of Sanskrit manuscripts. And many of these manuscripts come from, Kathmandu Valley, from Nepal. And what I can do is they have most of them published in a catalog, and I do have the PDF of that somewhere here on my computer, but I can share the title and the references to this catalog. And in that you will find a lot of references to their collection, because it's a really interesting collection. Very beautiful. Many Chacha manuscripts also, Charya manuscripts. Okay, thank you. Next question to you again, by Subhas Prajapati from USA. Are there any musical components associated with Pada Sadhana mentioned in the manuscript or the practice in general? Yes, there is one manuscript, the manuscript that I showed from the Los Angeles County Museum of Art has, according to Professor Gudrun Brünemann, I didn't see that myself, but she mentions that the manuscript does contain very small notes on where you have to start playing a certain musical instrument, at which posture a particular Charya song needs to be started. So there are clues, like brief notes with the images in some of the manuscripts that mention musical components of the practice. But like I said, like where exactly in the practice and how Charya, for example, is included in the practice, that's a little obscure to me because I don't have a clear picture of the ritual performance itself. So, but it's there. And yeah. Okay, thank you. Next to Ambir, Alok Siddhi Tuladar from Kathmandu. A local Newah youth group in Kathmandu has recently launched an initiative to revive tradition storytelling sessions. It's called Bakhan Newah, which translates to "come listen to the stories." He just Thank you so much, Alok. And
perhaps when I finish my dissertation work, we can collaborate to maybe do a telling of the Manishaila Mahavadana. And Prajal Bajracharya says, thanks for using my father's book, Manichura Abadana. Is that true? This is by Varna Bajra, is not it? The translated. Yeah, that's my father. My father also wrote the Manichura Abadana. What he used, that's my father's book, yeah. Really? I knew only lovely. Yeah. Manichura Mahabharana by Varna Bajracharya. Okay. Okay. Yeah. But Pandit Ratnakaji is my father, so. Yes, I know that. Yeah. I have a quick question for Amber. Okay, please go ahead. Hey Amber, is there anything mentioned about cuisine or food in that particular what you're translating into that book? Not that I can remember, not about food in particular, but about all of definitely about all of these herbs and plants and the health qualities, the health benefits, you know, of such a magical kind of place and these things that grow there. So, not the preparation. No, because you mentioned that what I've been doing a lot of research on what kind of stuff in ancient days was growing, because there's a relation, the food history and what was growing that time there. It is very important, and what was brought later on, the plants wise. So that's what I was doing research, and there's a lot of stories. Fig, particularly, it's related with the fig and the yomori. So it has. I've been trying to prove the history, how it's related. So that's why I was fascinated. Is there anything written in there? Well, it would be interesting to make a conclusive list of all of the different plants and animals listed. Yeah. That's fascinating. Thank you. Thank you. Great information. I think there is no more questions. If anyone has any important question, please go ahead. Otherwise, I hand over it to Saipta. Thank you. I have a question for I think so that in the Padasarana, if you learn about the Charya Nite, it's all the Padasarana based on Charya Nite is based on Charya, Padasarana is, Charya Nite is based on Padasarana. So it's all information you can get it from the, if you learn the Charya Nite, that I can say, so. By the way, Anna, I think he's presenting, he has an interview discussion with the EW program coming up. So if you look at the Newah Civilization website, you will get all the schedule regarding Prajwal's presentation coming up soon. Yeah, you should definitely, you know, kind of contact and get in touch with Prajwalji. He has a... Anna and Amir for excellent presentations. Yoko Suba Balgobal Yoko Suba चाहिँ त्यसको बालको थो चाहिँ सेसन न्याकिदिल जिउ चाहिँ निको दिन यो चाहिँ दिपाङ्गो सेसन अले थो दको तमुजिया यो गोसा गए झोलेन दयाजु बालगोल जुना गुली चाहिँ ग्वाली अन्दिर चिकपिन निमा लिसेन्स चुना ज्या धवे जिउलाई चाहिँ त्यसको लयता लस्ता यो खजुल मेहनत याबो संयुक्त रका चाहिँ लामा त्यसको बाजी खाँदै दिएर त्यो छु चाहिँ त्यो कथा सोयबले न दुनिया बोल्दा छ र जे चाहिँ 5% स्कॉलरलाई जे चाहिँ दुनिया छु चाहिँ कथा भन्नुगा जुजी so it was great presentations I think, and really grateful how Balgobalji and Sri Lakshmiji from Netherlands are producing these many new academics in the in the field of Newah research. And we are very proud of you living in Netherlands, how you're giving one after the other, not just your kids, but also other students who are working really hard and giving us new informations and ideas about our own culture and heritage. तर दक्ष चाहिँ लिपा चाहिँ धामा खसेछ छ थो नेवा सम्पदा व नेवा तजिलजी बारे चाहिँ दक्ष चाहिँ ज्याइ अले चाहिँ यान चौधु तर चाहिँ नेवा कला नेवा आर्ट विषय चाहिँ दुनिया वना दुग्यंक चाहिँ
research and शोध कार्य याद यो चाहिँ almost there's nothing, like no one is actually working on Newah art as such, paintings and stuff. So when Anahi mentioned the illustrated manuscript, I almost jumped off my chair, and it is very exciting. Anahi, please, keep up the good work. And no one especially is working on illustrated manuscript at the moment, and for the last many years, especially after the demise of late Minbahadur Shakya before, like some 8-9 years ago. And there's a lot to do, and there are very less people working, and we need more and more people to work and let us learn about our art, culture, music, dance, all these things in much more detail than we know till date. So we have now concluded all the sessions successfully, though taking longer time than we actually intended to. We did have to cover a couple of Vinduna messages in the middle, for which I apologize for all the inconveniences caused because of time delay. Ile चाहिँ झिचाहिँ कोसाक महफुल चाहिँ झि क्षमा फने कोसाक खला यु पाखे उल्दा चाहिँ आ चाहिँ जिउ तमुजिया चाहिँ थाना कोसाला धासना जिला तको सेसन तला सिरा ल अले झिसा इभेन्ट स्केड्युल त यु चाहिँ झि चाहिँ थो ज्याजो यु थलाले गुल्न चाहिँ प्रस्तुति दुख ओतको चाहिँ सिरा ल थुल्दा चाहिँ आ चाहिँ झिसा further discussions you like खाना वाला याद सला याद चाहिँ open forum चाहिँ याद चाहिँ गोसा दुजियो so give me 2 minutes जिन्दु तो चाहिँ open forum चाहिँ जुइ मखला तर चाहिँ चुलाल चाहिँ थन चाहिँ like yesterday we expected we asked a couple of audience to give their feedback. That's exactly what we might do before I end this formally the broadcast on the national television and the Facebook live. Discussion last. Oh, exactly. Open discussion live one feedback new feedback we are really, really interested to listen to all of you people and in much more detail than we have time for. But I always encourage people to write a paper, write an abstract at least, and send us through, so that in future conferences we can actually, learn much more from you. So please do not make it a very long speech, but give us a feedback in very, very brief. What were your learnings from the conference? तो मुझे दुनिया चाहिँ चीजें सुसुसुजें बामला खां चाहिँ सिद्ध ताला वो चाहिँ निंदोसा चाहिँ at least चिकिन चाहिँ feedback कथा चाहिँ प्रतिक्रिया कथा चाहिँ जिसा चाहिँ कायदा यु चाहिँ जुलाई जिता. That is why I would like to invite the Newah, the promising Newah scholar, I can say at least, Mr. Bhavesh Pradhan from India, and he's been researching about Newah people. We are very glad about it, and he's currently in Edinburgh in the UK, fortunately, for I think some next 5 years of study. So over to Bhavesh Pradhanju. If you could make it, keep it very short, not a presentation, but if you could make it for like 2 to 3 minutes of your feedback, please. Bhaveshju? Okay. I couldn't connect to Bhaveshju, so I will move on to Prameshju. Pramesh Rashaju from America. Welcome to Saka Inafia. Thou say Patikria to Tomujai Bare, Tana Nevadita. Prameshju? Azur, Jojola Pai, Taxima de Subala, something to Zuida. It's been overwhelming in the sense, that Masagar you drowned Hansel Galato. You know, say, it's very, very interesting. Magla, you Jana do me regular Jana, Twatana, Tigasunto Dugala, Migana Tona. That's the Atable now is you know it. Very positive vibes, Magla. Atosia Napazai 2016 was 17 Genome presentation is a to WNOU platform, we call Magla. A 16 agency to Baltimore as law.
उके चाहिँ वर्ल्ड नेवा मुभमेन्ट इन प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट गाजी चाहिँ बासो पादे जुन अब मिलेजिया जी प्रेजेन्ट यानो जुल अबले तास चाहिँ अब मिसिसागा चाहिँ ठुचियो WNOU चाहिँ नर्थ अमेरिकन रिजनल कन्फरेन्स चाहिँ सेप्टेम्बर 2017 चाहिँ तो इदबो कनेक्टिङ डट्स अफ नेवा सिभिलाइजेसन का रिप्रेजेन्टेसन जो जुल होला वो कंपैरिजन है या ठाउँ टका आयु बिचे स्वेबले चाहिँ दिस इज रियली नाउ I can feel that we are in the really good shape ला दक्षिण मध्य बांग्ला सुजुल लगा रहा सा कोरोना यो चाहिँ यहाँ वे जो सा नेगेटिव जो सा पॉजिटिव सुखंडल लगा रहा सा चाहिँ तो everything is documented to new यो जो चीज चाहिँ at least Facebook है उन्हें ऐसे documented जो दो मखला okay that's a very positive part का ला यहाँ बले जी सुरुली से हैं जी इधर वो चला यंचनो हिसाब है चाहिँ सुरुली से हैं चीज चाहिँ आठो डिजिटल है उन्हें मां virtually so that it will be documented for the long time that you चाहिँ आवया चाहिँ ठो चाहिँ ताठे ठो न्यू प्रोग्राम चाहिँ I'm really excited मकला सोइबले जी चुक फिका कयार गर आपले virtual जीवले अझ अप चाहिँ effective जुथे छ so that people from all over the parts from convenience from their own home मकला how chune ma ukha nyantaya jilla chuzula makla nacha nasai ulimbachi khajo do I'm really surprised I didn't felt makla nasayo chiu nasayo uli byapak ta raga ji shu tar ji apas ka mashu khani makla that's a very new thing makla I'm really thankful to Bikram by there chi naresh ju makla naresh ju yola chi lakhmari ji neno do na tan Baltimore na ana Canada no makla besides that मगला चीजों से ठुके यो ठो निनु यो चाहिँ दक्षिण मध्य बाला उखा चाहिँ यूरोप में जुला अले अठेना ची कनाडा पाखे जुला मगला ची नॉन नेवाटेड न थन या चाहिँ खलाउ जो चाहिँ सिके बाला तल मगला अटु प्रेजेन्टेसन है उना सोइबले चाहिँ ट्रेडिशनल अप्रोच न दु ओके न modern approach da होला as a youth approach मगला वन खण्डु गाला that's the very positive part मगला ताबले दाजिनो छुले रे जीव जिसया फलाउ पुस्ता हो जीव जिसया मेउ पुस्ता कोही यो पुस्ता यो चाहिँ बिचे चाहिँ ठुके पनि छौ चाहिँ बिजु जान या दुगाला ठन्यु ठो टु डेजो that's why जिन्सले ठो चाहिँ for the long run चाहिँ ठो छौ बालाउ चाहिँ ढका चाहिँ सिद्ध जुइथे छ खण्डुका Amela, everybody, they were the experts who have presented, they have done the extensive research. तर ठो चाहिँ ठो माने छोरा छ भर्चुअल जो हिसाबले चाहिँ फुकसिया चाहिँ ठाउँ कन्भेन्सिभ हिसाबले चना हान उना हान वया त स्वेडो चीज मखला this is very nice. I think we should continue this मखला झेफुक मुना यावला देडो तर छोरा छ virtual. So I have been really advocate for the virtual things makla to either buna way concept e woi chong khala thuke se ji fuk chu ina biar ga dable so to 15 minute thana presentation yan jo cheese time maga fu makla okay elaborate tarika uni lagi chai either is always there la a chik video presentation e to 15 minute la ta khau cheese makho makla तर EWA saying at least we can do the exclusive makla at least 45 minutes I can give for each presenter makla so chisa swapu te la it's a very nice within 10 years away runga so saying shape bistara way so do makla to jisa jising thana world Newah organization USA chapter pahena represent yan no zoli saying la to chapter pahena saying paspini fukayo pahe to executive committee pahena on behalf of them also makla we really appreciate so whenever needed wherever you need it World Newah Organization USA chapter is always there. Thank you so much. Subhai. Yoko subhai promise you tasको बाला का चाहिँ थाउ चाहिँ खतै दिला न्याबले थे EW दादु न्याबले चाहिँ यको ख ची चाहिँ ब्याकेदा त थाथो स्रोत कार्य त चाहिँ त्यसको चाहिँ डिटेलले चाहिँ खलाए त definitely we should always be always very grateful to Promise You and the EW for also providing us a platform when we were kind of trying to promote this event earlier यको सुबा थाना चाहिँ भावेशु मजुले चाहिँ यसको सचेतन तुलादर जो त छक इना बिया भएको चाहिँ बेलायते ख वो नापामा पासो गुठी युगे या चाहिँ नाया जुयादी
सचिन तुलादर जु थन दिशा चाहिँ थाउ छु प्रतिक्रिया थो तमुजाई बारे नेबुया दिशा चाहिँ दिसित छको इनापिया I don't think I see him around. So I'm sure many people are leaving by now, which is fine. I think we just organizers and presenters left almost, but that's almost good. And we will now, I think, open the forum. And before that, I would just like I would just call upon Susan. The open forum do tunga. I open forum is collide. Promise you. So conference is sirala conference gu चाहिँ खाका ख to structure okay दुने दको चाहिँ ख चाहिँ sirala तर जी चाहिँ उकी बारे अपो खला हेर्दा चाहिँ open forum चाहिँ to सिरिन लिपाङ्गु चाहिँ नचुदुङ्का चाहिँ जी चाहिँ हानो to न्याके अले जिके अझ आधा घण्टा दु जी चाहिँ सला या त यो कसो भए प्रोजेक्ट सिजन सी चाहिँ to कोचाके त चाहिँ गरिन्छ त सुवा वाउ कोचाके न्या जे थनो स्क्रिन शेयर या त्यनो स्क्रिन शेयर चाहिँ जे याम अफ द मला टुगेदर केना बिगला स्क्रिन शेयर मुजु छौ चाहिँ एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट यो स्याम्पल जग ख थो चाहिँ लिप मेला छोय हेउजी ठुके छोइटो जे भन केना बि चाहिँ मयासे मोजुपटी जुजुने नेपाल पिने चना न नेवा मसिकाय नीति मदिक वालियन वे चुना दिम वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन पलिस्ता जुइ जुग र क्योंगु लस्ताय जुए चोंगु ग्लोबल नेवा कन्फरेन्स तजिक गोसा गोएट कजिया पालकया दिम वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन या मु दज नप जीएनसी 2020 ये कजी छि पाजु संयुक्त श्रेष्ठ जु या थो हनापौ ल लान चन ल लान गुजला सिगु ठो पाला लिपटकन मटिक या वन चने पाइमा नप झिनिगु देया नि सोमेशा नेवा भाया लिपि तजिलजि निसे नेवा अभियान व थिथि विषय कार्यपत्र न्यवगु ठो भर्चुअल कन्फरेन्स वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन हली नेंकया नेवा छठा मुने त सफल जुगुदु सुबाय पछि त जने मबिसि मजु थ जने से यको मेहनत यन जुदु ओके जने आज ओके शेयर या तिनो शेयर या मखना थन जे स्क्रिने जगे शेयरन बियाखला सर्टिफिकेट थ छिर जने मेल वइ थ यस हल जने जेसा भर्चुअल कन्फरेन्स मजु खास तजिके हने माउका से गुली मेहनत यन दुदु ठुके निचा मरासे जे म्याना मेन्सन यनोका थो छु थो कार्यक्रम सफल या ठन्टले थेंगेद छिओ छु टिम यन दु थो मेहनत यो लागि चने दुनोगलले से यको सुभा देसन छन लिप लिप तगन थो एफएम आथो को चाहिके न्या सुभा न देछा माथे छ खला छिस अनौपचारिक रूपमा लस्कुस नचुलेन सुभा देसन ओका छिस आठुसी सुभा देछायो चले असे नोट अफ थ्याङ्क्स यो लागि डेजिग्नेटेड पर्सन टाइटो मरु जोने छिस चाहिँ थो निनु निंग तक जो परि थो कार्यक्रम यो लागि तक्को ग्वालियन दिपि सकल बाजु मेजु पिण्ड यको सुभा देसन जना डक्ला नपला चाहिँ हाक्न सक संयुक्त जुयु खुम डायनामिक टिम ठुके नायक कामेल छ 1-2 मिनेट अफ क्यामले जितोके संयुक्त जुयो कोर्डिनेसन डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठजु नेदरल्यान्ड अना भाजु दयारत्न साकेजु थनो पोर्टल्यान्ड ओरेगन डाक्टर नारायण राज भण्डारीजु एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना दिपेश साकेजु छि आयरल्यान्ड डब्लिन आयरल्यान्ड अले रश्मिला प्रजापतिजु नेपाल वेक पिछना जने ठो गोसा गोइदिउ का वेक पनि नेतृत्वले ठो कार्यक्रम जुका तो जने तस्का बांग्लादेश जने छाजा ढाके कोचाला यको कमेन्ट्स तन वोडु यको मन्टसन स्वेडर ट्रुङला मन्टसन म्याड पर्सनली फनमा यानाला आफ्टर इभेन्ट तो जने एकदमै वर्ल्ड क्लास यो कार्यक्रम तल छिकपिसा एकदमै बांग्लादेश कार्यक्रम दै चाहिँ ठेजिमा के जने या यको सुझाव त होला द फन कल त होला व उके क्रेडिट दको छिकमे खुमसिद वनि उकेना छि संयुक्त पाजो
जे म्याना मेंशन यानो का चाने 4 बजे तक ना वेके चुना चने जाइन चुना क्यों हर एक चीज थो जा ठन तक हेड ने आज नारायण डॉक्टर नारायण राज भन्दा जुना कमेन्ट होना जे बना ग्रुप पेजेस चाने से 3 बजे संयुक्त डेने मटिनलर के चोइ होना जे उके जने ठुके यो सुबादु संयुक्त जु अलेछु सकल छेज पिण्ड थो छिर जने थो कार्यक्रम गोसागवे जने ई बिया दिउने छु सकल छेज पिण्ड न जे दुनगले से एको सुहा देसन जना अले आठो छे सेसन चले याउले खुम छे तस्का हने बपे भाजु मेजु पिसा थो सेसन चलेन दिला डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ जु अठाठा छे दयारत्न साक्यजु छे कृष्ण चक्कुजु मेडिना साक्यजु अठाठा छे रश्मिला साक्यजु प्रजापतिजु वेकयु ना दजने डाक्टर काकाछु प्रधान जुल उमा प्रधान जु युके न वेक पिगन चलेन दिला वेक पिन न दुनुगने से यको सुभा देछन जना अले आ छोटो जुन विभिन्न टपिक्स ले तो टस्का यको एरिया कभर जु कथा छु तो प्रेजेन्टेसन जुल ठुसी नाभ छु हले नेवा डब्ल्यू सेकेन्ड कन्भेन्सन थर्ड कन्भेन्सन कन्फरेन्स जुले छिन चाउटक छु पेपर प्रेजेन्टेसन जु विटन ट्याके ठुसी जना छिन नि संगु कार्यपत्र प्रेजेन्टेसन जुल तस्का चोसा भजु बांग्ला यको बामा लाउ खट प्याउ होला छिसा सिके खना उके लागि न उके भटिकाइ दिपि कार्यपत्र सकल जने जे नाकै पनि मखरे निसोमदु छखला एक मस्त जे सकल सित जने सुभा देसन जना दुनो गल्ने से अले छु कीनोट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर जेरल्ड टोफन एन्ड छि मुपा अटिका हने बम शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी अले मेगला थन छि छिक्ने सकल थन भटिकाया थो एवसे मचो कुसे 5-6 घण्टा तक न्याउ खु कौटगन कम्प्युटर न्याने चना सोइ रुपि हलि नेंग चना दिपि सकल छि नेवा नेपामी नन नेवा पास्पे नेवाए पास्पे नेपामी पास्पे सकल छि दाजु केपी पास भइ पिन जे यो सुहा देसन चना कार्यक्रम ठौ सिरला तस्का बांगला त मेरो कार्यक्रम मेरो लागि ठो कार्यक्रम गेजुल सुजुल छिपिसा जिम ठुकै प्रतिक्रिया बिया दिसा छु सुझाव त दुसा डब्ल्युएनओ वेबसाइट वना चने उके सुझाव त बिया दिसा छु कमेन्ट त दुसा कमेन्ट यन दिसा अले सु छि तो भाजु मेजु पि प्रेजेन्ट यन दिपि भाजु मेजु पि न स्वाफटै दि मासा संयुक्त जुय द अथवा डब्ल्युएनओ इमेल वेबसाइट थ्रुले जिम त छिकिसा स्वाफटै दि फै तो जने तस्का बांग्ला जला जे इयोको क्यामोक्टर डगोटर पास्पे नवन दिदन पियचन दिउदु अले छु इना यको वन नो जोने हक्न छग तो कार्यक्रम ठन्तग हेड फुफु कथा ग्वालियन दिपि छिकपि सकल सित दुनुगलेसी यको सुभा देसन जन छु लिपा वइगो हलि नेवा डब्ल्यू ज्याजोले छिकपिसा ठुले ठठाय ग्वालियन गिराइ परि जे मन टुन चना भलासा कय चना जे इनापना यन चना अले मेउ छटा ख जने छि तो मेंशन या बहजु जी तो मौका लुइगे जे जन छग सुहाना देखाइ मास्ति व छिसा म्याना नारायण जुन केन दिउख छु छिछि ज्याजो मध्ये सत्यमोहन लोक साहित्य भवनिउ लागि छिसा सौ डब्ल्युएनओ गोसाले छिसा फन कलेक्ट जैनोखा उके तने फन कलेक्ट दिपिनि जग जे छग ना कय वेका पिन जे सुभा देछा थोय मौका लुइगे नेपाल पास पुज अमेरिका मेरीलैंड यूएसए अले नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका मेरीलैंड नेवा अर्गनाइजेशन अफ न्यू इंग्लैंड कैनेडियन नेवा गुठी नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका फ्लोरिडा चैप्टर नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका न्यू इंग्लैंड चैप्टर नेवा अर्गनाइजेशन अफ अमेरिका नॉर्दर्न कैलिफोर्निया चैप्टर यूनाइटेड नेवा यूएसए पासापुजा गुठी यूके वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन यूएसए चैप्टर वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन नेपाल चैप्टर नेवा अमेरिकन डब्ल्यू शिकागो अठाठा छि नेवा गुठी न्यूजीलैंड
पासाफुज बेल्जियम राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल संस्था गर्न जाने वेक पिछा जाने फाइनेन्शियली छिटो सपोर्ट यान ड्यू डु पछि क्याम्पेन यो लागि अले ठन इन्डिभिजुअल ठन जे नाम मकासे मजुपे चे हने बम बेर भक्त जोशीजु क्यालिफोर्निया दीपक मान मिसेस रिटा देवी प्रधानो फ्यामिली सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्निया विटल मानन्दर अले वेके जान कुल डाक्टर कुल विटेल जु वेल्स यु पाख सुमन कुमार सिंह थन बाल्टिमोर मेयरल्यान्ड यु पाख अठाठे कृष्ण हजुर कृष्ण हो मेजु वेके जहान अष्टमाय व्यञ्जनकार वेके क्या सिकागोले वेके पनि नाम जने वेके पनि नेपाल येले ख वेके पनि नाम न ठुके छिटा आर्थिक ग्वाली वडु विजयमान सिंह न्यूयर्क शैलेन्द्र मानन्दर टेक्सास अले दिव्यरत्न हाडजु पाखा छिटा पर्सनल ग्वाली वडु वो टोटल यावले म्या वेकला कना दिउथे 17,000 चान्चुन US डलर कन्भर्ट यावले करिब करिब छु 2 million रुपीज छिसा जाने सत्यमन लोक साहित्य परिषद यु लागि ग्वालियन उडु अले वो बाइक छिसा आठो जुन आर्ट अनलाइन सेन चनौडु अजय देसार यो पाखा ओके लागि न छिरा फाइनान्शियल ग्वाली वइ चौडु वो एनडीपी न सकेसिन जे सुभा देछन जना अले मेमे छु ज्याजले योको ग्वालियन चन दिउडु अले फाइनान्शियल वइ चौडु डबुसु नाके सादे जि मक्त छिपिसा माइनेन दिम त छिप्ने सकेसिन जने हलिनेवा डबु पाखा जो पर्सनल पाखा जने योको सुभा दु नप लिपा वइ यो छु ज्याजले न छिपिनु ग्वाली निरन्तर जुइरहेपट्टि जे भलासकै चने मनन्तुन चने अले मेउ छटा खजने छिसा 2018 यो ग्लोबल कन्फरेन्स नेपाल यानबले छिसा मेन्सन यानो वर्ल्ड नेवा फन्ड देखि विषयले छिसा पाजु कृष्ण चक्कु जुन कार्यपत्र प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत यान दिउका वो कार्यपत्रले वेकल कन्सेप्ट पेपर नाप 2013 ले डेट हुका म्याना छि तन प्रेजेन्टर पाजु मेजु पिसा मेन्सन दिला इन्भेस्टमेन्ट तो डब्ल्युएनओ चाहिँ मेमेउ ज्यासिबेन छु भाषायु खेले मेमेउ छु सांस्कृतिक खेले इन्भेस्टमेन्ट या मार्ग मेन्सन यानो दिउले दिख छग जिना छन मेन्सन या जु चाहे जुका न्याउ चीज न संस्था चलाएर छिरा आर्थिक यो जरुरत दु आर्थिक बमला छ छुना या फै मको छिसा ज्याजोला यो गए यानो वे ढंगु ठीक छ खनाइ चौडु म्यार छिरै भेटे गुली ज्याजोला खय खना तर झुटो फाइनान्शियल मजबुत मतले छिसा जाने इन्भेस्ट या ठाकुइ जुने अलिनेनको थ लाइफ सुन सोइ चुन दिपि सकल छि त लाइक माइन्डेड डब्ल्युएनओ यो वेल विसर पिन जे छौ इना पेन्चना मेम्बर जिया जिल्की चिपिसा जाने छु कठयो आर्थिक ग्वाली बियान जिल्की अथवा गन छु रिसोर्सेस द माला जिल्की थ वर्ल्ड नेवा फन्यु लागि चिपिसा उके छ ग्वालियन जिल्ला छ तस्कल बालै जी छिसा तो पासायु खेले मेमेउ खेले छिसा इन्भेस्ट या द अफिजी खकनाइ इस्यु जे चाहिँ हरेक नेवाटेउ नेपालले यो कोही इस्युज त जुया चौडु आर्थिक यो छिटो चाहिँ रिक्वेस्ट वइ चाहिँ गुबले गन चाहिँ सफु पिडन त गन चाहिँ ल प्रोटेस्ट वन द छु नेवा मुद्दा लागि प्रोटेस्ट वन द ल न्याट अथवा स्न्याक्स न्याट चाहिँ बिबी वन या माउले मरु जुने अयु रिक्वेस्ट वइ चौडु यो कोही छि नेवाटे चाहिँ समस्या जुया हलिन्याङको चाहिँ समस्या जुया चौडु इले चाहिँ ग्वालियो लागि चाहिँ छिटो चाहिँ रिक्वेस्ट वइ चौडु छिसा व या मफने यदि छिसा पोसौ अलग इंगे फटास अवश्य न या फैजी नेवा अर्गनाइजेसन अमेरिका यगेमान जुबिन छौ क्याम्पेन यन्चुन दिउदु अमेरिका नक्तिनी वो छिङिरो दुम मचाइ जन हस्पिटलाइज यन्तो निलासोला डेरुङला छुर लोयर गन पडलगे मजु अय समस्या जने छिथा यको जियो चौडु अयो समयले छिसा ग्वालिया फेगेट छिकपिनि जने चुके जने सहयोग माल चौडु फुफु कथा चिकपिसा सहयोग यन्ति जने जि इना पेन्जना इयोको क्यामक्ट चिकपि सकसिर हाक्न सक दुनोगलले चाहिँ यो भिन्टोना देछान्छुना संयुक्त जु छिटो जे थ टडबी छु संयुक्त जुन हज मेन्सन देन जुठा छु चाहिँ अनौपचारिक सल जुइट्यङदु ओके किन बिल हस चोना दिसा अले चिकिन हाक्न सक इनापु चिकिन ठुके चाहिँ थ रिएक्सन बिया दिसा लिपा ठुके मूल्यांकन ने थ कार्यक्रम
리파जने चिसा अझ ठुलो बालगिट जने छुयामा गयामा वो सुझाव टबल लास जिमसा अवश्य न मेरो कार्यक्रम अझ थोसिमे बालगिट जिमसा कुटाया उले थाया जने जे ठाउँ बिराकाय झुठो अनौपचारिक जो कार्यक्रम ठाने पचाउन बस्न यनबी योको सुभाय यो कुसुवा सिजन जु थो चाहिँ औपचारिक कार्य ज्याजो चाहिँ थनको ज्याला आ थो चाहिँ जी लाइभ चाहिँ अफ या अले जी चाहिँ जिनी ओपनली चाहिँ थन चाहिँ बनादै सुना चाहिँ ताउ चित चाहिँ बाला बामला खछु दुसा चाहिँ तैस जिसा चाहिँ गुलिन चाहिँ कुदा यासन छु चाहिँ बच्चा चाहिँ मगाउ मचाउ सुदा दे उकिलाई छिमा पनि उले जी चाहिँ थो थन stop live